Arabian Gulf Cup, an event which celebrates the spirit of football in the region. He was invited as the guest of honor in the event. भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। Nearly 7 Indian nationals were among those who sustained injuries in the Christmas market car attack which shook Germany. India has also expressed condolences to the victims of the attack. Indian embassy, in fact, in Berlin has also said that it was maintaining close contact with Indians who have been injured in the attack. 5 people, including a minor, were killed and over 60 people were injured when a Saudi doctor drove into a very busy Christmas market in Germany's Magdeburg. In a tragic incident in Punjab's Mohali, several people are feared trapped after a multi-story building collapsed, and the building collapsed during the excavation work that was being carried out in the basement of the adjacent building. Now, as per the officials, the gym was operating on all the 3 floors of the building that was collapsed, and Mohali police have booked the building owners Parvinder Singh and Gagandeep Singh under section 105 of BNS. Several teams of the NDRF and police are also involved in the rescue operations at the site. Medical teams have been kept on standby. Personnel of the Indian Army have also been deployed for rescue and relief operations. Meanwhile, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has expressed his grief and said that action will be taken against all the culprits who are behind the accident. ऐसा है कि यहाँ कोई एक जिम था जिसमें कुछ नौजवान जरूर पर जिसके लिए आते थे। एग्जैक्ट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कितने लोग थे नहीं थे, और परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि किसी की जान ना जाए, और पूरा प्रशासन खुद लगा हुआ, रेस्क्यू टीमें भी लगी हुई हैं, एनडीआरएफ को भी सूचित किया हुआ है। Now, more than 2 weeks after he took office, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis allocated portfolio to his Council of Ministers. Fadnavis has retained the Home Ministry while taking the Energy, Law and Judiciary. General Administration Department has been taken by Fadnavis. Deputy Chief Minister Eknath Shinde has been allocated the Urban Development and Housing as well as the PWD, which is the Public Works Department. On the other hand, NCP Chief and another Deputy Chief Minister, Ajit Pawar, has been given Finance as well as Planning and Excise departments. Telangana Chief Minister Revanth Reddy made some serious allegations against Allu Arjun in Telangana Assembly. The actor, graces legal charges in a stampede case involving the death of a woman during Pushpa 2 premiere at Sandhya Theatre. A minor also is in a critical stage as well. Revanth Reddy held the actor responsible for the death of this woman. He also said that the police did not give any permission to the celebrity to visit Sandhya Theatre due to the space constraints. In his address, Allu Arjun also responded to clarify Revanth Reddy's statements and denied all the allegations. He said that the horrifying incident was nobody's fault and expressed grief to the family that lost a woman. He also said that there has been a lot of misinformation and fake allegations being made against him and circulating on social media. False allegations falling on you, saying this is your character assassination. But I'm here to put my foot down and say, and stand on my feet, grounded, and say, no, I have not done those allegations. I have not said anything like that. It is purely 100% false. In a joint operation involving Assam Rifles, Tripura Police and Customs Department, Yaba tablets worth 78 crore rupees were seized from Ganchera in the Dhalai district. The security forces have dealt a significant blow to the drug trafficking network operating in the region. And as per officials, the joint team acted on specific intelligence inputs to intercept the consignment. The arrested accused are now being interrogated to gather more information from them about the narcotics networks and its operations. A terrorist associate has been arrested by joint team of police as well as the army in Bandipora. The suspect was apprehended after he attempted to flee during a Naka check at Nadihal. Authorities recovered a pistol, hand grenade and 15 rounds of ammunition from his possession. In another significant development, a joint team of security forces apprehended 2 individuals during a Naka checking operations in Yarbug.
Now, the arrested individuals have been identified as Rashid Ahmed Butt and Sajid Ismail. These two individuals were helping terrorists carry out their infiltration as well as attacks. Security officials have also recovered 1 pistol, 5 live rounds, 2 Chinese-made hand grenades, as well as cash amounting to 10,600 rupees from their possession. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate 8 major cooperative projects during his visit to Tripura for the Cooperative Conference. The event aims to boost the state's cooperative sector. He will inaugurate 18 stalls as well as 2 mobile vans and distribute micro ATMs to 50 cooperative societies. Shah will virtually inaugurate these key projects, including petrol pump in Udaipur and a smart training center in Agartala. Tripura Chief Minister Manik Saha will also attend the event. In a tragic accident, viewers, 5 people including 3 women were killed while nearly 30 people sustained injuries when a mini goods vehicle overturned in Chhattisgarh's Bastar district. As per the officials, the accident took place near Chandameta village when the victims were returning from a weekly market. The driver lost control over the wheel, following which it skid off the road and overturned. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को लेके आया जा रहा है, जिसमें कि करीब 27 लोग अभी तक आए थे। अभी फिर से एम्बुलेंस में 3 लोगों को और लेके आया गया है और कंटिन्यूअस में अभी 15-15, 20-20 करके लाया जा रहा है। 81 टोटल संख्या बताई गई है। 4 लोगों की वहीं पर मृत्यु हुई है और यहाँ पर 1 की हुई है। और हम लोग यहाँ पर आपातकाल में अरेंजमेंट के लिए तुरंत जो CMO है, बाकी जो बाहर में थे, सबको बुला लिए हैं और पूरे हॉस्पिटल में हर एक वार्ड में, हर एक डिपार्टमेंट में पेशेंट को शिफ्ट कराया जा रहा है। RJD leader Tejasvi Yadav voiced strong support for students protesting the 70th BPSC exams. He even visited the protest site where he said that the demands of the students are valid. He also emphasized the need for fairness, urging the government to address the concerns of youth and provide answers on this particular issue. Protests continue as students demand action and accountability from the government regarding the controversial examination process. एकाध सेंटर का जो है रद्द भी किया गया है। तो लोगों की जो मांग है उस मांग का समर्थन करते हैं और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री और BPSC चेयरमैन से ये अपील करते हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए। Well, viewers, now let's look at the other top stories from the world of business which matter to you and me. In a significant development at the 55th meeting of the GST Council in Jaisalmer, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a series of key decisions. The Council extended the integrated goods and services tax exemption on surface-to-air missiles, reducing the financial burden on defense imports. Now, Sitharaman also revealed a GST rate cut on fortified rice kernels to 5%, a move designated to combat malnutrition. Further clarifications were also issued regarding GST on construction materials, agricultural goods, and also the other charges as well, while reduction in compensation cess for merchant exporters was approved to boost exports. Now, additionally, the Council exempted payment aggregators handling transactions below 2,000 rupees from GST and addressed the ongoing controversy over the tax treatment of caramelized popcorn. Clarifying the issue, Sitharaman explained that popcorn with added sugar, such as caramelized popcorn, would attract a higher tax rate due to the sugar content, while plain or salted popcorn remains taxed at a lower rate. However, no consensus was reached upon the inclusion of aviation turbine fuel or the ATF under GST, and discussions on health insurance and rate rationalization were also extended. We've had airlines telling us, civil aviation requesting us, that ATF should be brought into the GST. It's not been agreed on. States did not feel comfortable. They didn't want ATF because they saw it as part of the crude, petroleum, diesel basket, and therefore they said that alone cannot be taken out. Investors can expect a busy week on Dalal Street as multiple IPOs are set to launch. 5 mainline IPOs, including offerings from Concord, Enbiro, Sanatan Textiles and Mamta Textiles, will open for subscriptions on December 27th and close on December 23rd. Additionally, Unimech Aerospace's IPO will open on December 23rd and close on 26th with a price range of 745 to 785 rupees per share.
Allotment for IPOs launched on December 20th, such as Carraro India and also Senor's Pharmaceuticals, will be finalized by December 26th, with listings scheduled for December 30th. Finance Minister Nirmala Sitharaman also confirmed that no decision was made regarding the proposal to reduce the goods and service tax on food delivery charges from 18% to 5%. The proposal, which is under discussion for months, was deferred for further deliberation by the group of ministers, and if approved, the reduction would offer significant relief to consumers, lowering food delivery costs for platforms like Zomato and Swiggy and other aggregators. However, the proposed switch to a 5% GST rate could create challenges for e-commerce operators, as businesses would not be able to claim input tax credit, potentially increasing their tax burden, and this change could impact the ongoing disputes, notably the 803 crore rupees GST demand from Zomato in Maharashtra. The decision, if implemented, could ease tax disputes and benefit consumers, but might pose financial challenges for smaller operators in the market. PVR INOX has introduced a new pay for what you watch model called Flexi Show, allowing viewers to pay only for the time they watch a film, with the option to leave the theatre at any given point. The service is currently being piloted in select cinemas across Delhi NCR and Gurugram for specific shows with a 10% premium on the ticket price. This initiative is part of PVR INOX's efforts to offer flexible pricing and enhance the movie-going experience. The company operates 1,747 screens with a focus on premium screens in major cities like Bengaluru, Mumbai and Delhi NCR. Serbian Prime Minister Milos Vucevic has criticized the European Union's decision to impose tariffs of up to 45.3% on Chinese-made electric vehicles set to last for at least 5 years, calling the move unfair and detrimental to all parties involved. In a recent interview, Vucevic warned that tariffs would harm not only Chinese manufacturers but also European automakers, with factories in China creating a paradox for the European Union. He expressed concerns that such trade protectionism would not yield positive outcomes for the EU, especially as the global economic center shifts from Europe to Asia. Now viewers, it's time for us to take a look at what's happening across the globe, because we'll get you a wrap-up of the top stories from across the world. Dozens of workers from London's most recognizable department store, Harrods, went on strike in a dispute over pay and working conditions. Around 176 workers gathered outside the department store demanding Christmas bonus. The workers also demand for an end to forcing part-time cleaners to work 9 consecutive days and a daily meal allowance for restaurant and kitchen workers. This is the second time Harrods workers have voted to strike this year. Another strike has also been called on December 26th. And as per the union, 95% of the staff had voted in favor of the strike. Russia was pounded by a major attack in the city of Kazan as a series of 8 drones targeted the high-rise buildings. The strikes reportedly hit several multi-story buildings across Kazan. The Russian government accused Ukraine of being behind the drone assault following the attack. Authorities in Kazan have launched emergency response efforts and residents were evacuated from the affected buildings. Almost 6 residential buildings were hit during these attacks. As per local authorities, there were no casualties. Flights were temporarily halted at Kazan's airport and all mass gatherings stand cancelled for the next 2 days. The drone attack comes after Russia attacked Kyiv and other cities in Ukraine. Russia reportedly launched a barrage of 60 drones and 5 ballistic missiles on Ukrainian cities as drones and missiles hit residential areas in Kyiv. In order to avoid President-elect Donald Trump's demands for a debt ceiling increase into the new year, the Senate hurriedly passed a bipartisan measure that would temporarily fund federal operations and also disaster aid in the face of a government shutdown deadline. The agreement gives farmers about $10 billion in agricultural support and $100 billion in disaster relief while funding the government at current levels through March 14.
Senator Chuck Schumer, the Senate Majority Leader, announced that there will be no government shutdown right before Christmas. He further stated that this is a good bill and it will keep the government open and will help Americans affected by hurricanes and other natural disasters. Tonight, the Senate delivers good news for America. There will be no government shutdown right before Christmas. This is a good bill. It'll keep the government open and funds and helps Americans affected by hurricanes and natural disasters, helps our farmers and avoid harmful cuts. After the attack on the Christmas market in Germany's Mannenberg, which killed about 5 people and injured over 100, the German police has searched a house in a town in Bernburg. Authorities have also identified the attacker as a 50-year-old doctor who has been identified as Talib, who has been taken into custody for further questioning. After the attack, the German Chancellor Olaf Scholz also visited the attacked market site to express solidarity and promised responding through necessary criminal laws. Further, he also lit candles and flowers were placed by mourners outside a church sympathizing with the victims, because a similar attack took place in Germany 8 years ago when an Islamist terrorist attacked a Christmas market in Berlin, where 13 people were killed and 70 others were seriously injured. A Falcon 9 rocket is launched from California's Vandenberg Space Force Base, embarking upon SpaceX's Bandwagon 2 mission. 30 satellites were put into orbit during the mission, including payloads for various companies like Korea Ad, Aeroscience and Technology, Exo Launch, Hawkeye 360, Maverick Space Systems, Sidus Space, Tomorrow Companies Inc., etc., and also True Anomaly and Think Orbital. SpaceX has earlier launched a Bandwagon 1 mission, launching 11 satellites in April. SpaceX has launched 11 transporter missions till date. The first one, which flew in January 2021, lofted 143 satellites to orbit, a single launch record that still stands. And further, owing to the recent launch, the Falcon 9's first stage returned to Earth about 8 minutes after the launch, landing vertically back at Vandenberg launch site. Following the Israeli strikes in Gaza, Pope Francis started his Christmas address by mentioning the destruction in Gaza owing to the ongoing Israel-Hamas conflict. Pope said that bombing children in Gaza is not war, rather cruelty. He further mentioned that even his patriarch was not able to enter Gaza because of the Israeli bombings. Pope Francis, in his annual Christmas address, further referred to gossiping as an evil amongst his closest collaborators and advised against slandering one another. He further asked everybody to self-introspect their own conscience during Christmas holiday season. Owing to the increase in violent behavior and also bullying amongst children, the Albanian Prime Minister Edi Rama has said that the government will soon shut down the TikTok video service for a year, following the death of a teenager girl by getting stabbed by another teen after a fight broke out on TikTok in November, led the Albanian authorities to hold 1,300 meetings with the teachers and as well as the parents of all these social media content creators. Prime Minister Edi Rama, also speaking at a meeting with teachers and parents, said that TikTok would be fully closed for all. There will be no TikTok in the Republic of Albania. He further said that Albania would see how the company and other countries react to the one-year shutdown before deciding whether to allow the company to resume operations in Albania or not. As huge crowds gathered to pick up food and clothing items given out at yearly Christmas activities, at least 13 people, including 4 children, were killed in 2 separate stampedes in Nigeria. According to authorities, on Saturday, this was confirmed as the nation grapples with the biggest cost of living crisis in a decade. Local organizations, churches, and individuals are increasingly planning charity activities before Christmas. And the 2 accidents occurred days after another stampede of this kind in Africa's most populous nation. Police spokesman Josephine Ade said in a statement that more than 1,000 people had been evacuated from the Holy Trinity Catholic Church in Maitama, an upscale area of the capital Abuja, after the initial stampede in the early hours of the morning killed 10 people. With that, viewers, we'll slip into a short break, but don't go anywhere. We'll be right back with more news and updates that you need to track.
أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة. Welcome back, viewers. Let's now take a look at what's happening in the Middle East as well as West Asia, because tensions continue to rise between Israel and Hamas. A legal notice has been sent to Kohli co-owned pub in Bengaluru, 1-8, for flouting fire safety norms. Now, the notice was issued by Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike, or the BBMP. The Bengaluru civic body has issued a notice to the pub on a complaint alleging fire safety violations. The pub, located near Chinnaswamy Stadium, has been accused of operating without obtaining mandatory clearances, including a no objection certificate from the fire department. Anmolpreet Singh etched his name into the history books as he registered the fastest ever List A 100 by an Indian playing for Punjab. Anmolpreet slammed a 35-ball 100 in the round 1 clash of the tournament against Arunachal Pradesh. New Zealand cricket has sent a delegation to Pakistan to assess the security arrangements for the ODI tri-series between Pakistan and New Zealand and South Africa. New Zealand Players Association representative Brad Rodden is in Karachi and Lahore to see the security arrangements and other preparations for the tri-series. India's pace spearhead Jasprit Bumrah is on the cusp of breaking Kapil Dev's all-time record for the country in Test cricket. Bumrah has 194 scalps to his credit in 43 tests and needs 6 more to become the fastest Indian pacer to reach 200 wickets in the red ball format. The record currently belongs to 1983 World Cup winning skipper Kapil Dev. The legendary all-rounder had bagged his 200th wicket in the 50th test of his career. Now, viewers, moving on from the world of sports, let's track what's happening in the world of entertainment. Actor Blake Lively has filed a complaint against, quote-unquote, It Ends With Us co-star and director Justin Baldoni for sexual harassment and an alleged coordinated effort to destroy her reputation. According to Lively's complaint, things got so bad during filming that an all-hands-on-deck meeting was held to address her claims of hostile work environment. Baldoni's legal team fired back and called her shameful. The legal team said that the claims by Blake Lively are false. Former US President Barack Obama has shared the annual list of his favorite movies, and Payal Kapadia's All We Imagine As Light topped the list. The movie has been garnering appreciation globally, and it made history after its win at the Cannes Film Festival. The movie has also bagged several key nominations in prestigious awards as well. With that, viewers, it's a wrap on this edition of Quick Morning. We'll be right back with more live and breaking news updates. Stay tuned to Republic TV. कौन भारतीय होगा जिसे चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग की खुशी नहीं हुई होगी? मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आज का भारत
एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। बीते 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, उसकी लंबाई वो धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है। Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. A very good morning. We are live this morning. I'm Shivangi Shukla getting you the latest coming in, and we have for you lot of stories lined up this morning to give your Sunday a great start. We'll be speaking about PM Modi, who is in Kuwait. He's on a 2-day visit to Kuwait, and this is the first visit by an Indian premier in over 43 years. So we'll tell you everything that you need to know, all of the top updates and everything when it comes to breaking news, international developments, and everything in between. But as usual, the headlines we're tracking. Let's get started. PM Modi on a 2-day visit to Kuwait addresses Indian diaspora, hails India's achievements. अपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। PM's power-packed Kuwait visit. Day 2 today to attend spectacle to defense deals and hold key bilaterals. There are groups within India
who are aligning with the anti-India groups operating from outside the country. This is known. And then we have countered them politically and successfully. And the Fadnavis's big disclosure, Kiran Rijiju says groups in India are hands in glove with anti-India forces. तो पहले गलती थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस कर दिए, लोग जमा हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ट्रैफिक के लिए भी दिक्कत हो जाएंगे, इसीलिए उनको हम परमिशन देना मना कर दिए, वो नहीं आना। Politics of Allu Arjun arrest. Revant Reddy targets Pushpa 2 star, says organizers ignored the warning signals. False allegations falling on you, saying this is your character assassination. But I'm here to put my foot down and say, and stand on my feet, grounded, and say, no. I have not done those allegations. I have not said anything like that. It is purely 100% false. Meanwhile, Allu Arjun responds to charges, says he feels humiliated and that his character was being assassinated. Rescue operations underway as multi-story building collapses in Punjab's Mohali. Reports of 10 to 15 people being trapped in the basement. A terrorist associate was arrested by a joint team of police and Indian Army in North Kashmir's Bandipora yesterday. The suspect, identified as Shoaib Wasim Ahmed Malik from Gundpura, Rampura, was apprehended after attempting to flee during a Naka check. Now the authorities recovered a pistol and hand grenade and 15 rounds of ammunition from his possession. Further investigation is underway. So that's a big update coming in right now on Republic TV. And pistol grenade, 15 rounds of ammunition has been recovered, viewers. Those are pictures coming in. Those pictures coming in of the terrorist associate who has been arrested. Crackdown on terror continues in Jammu and Kashmir. So this is what we are learning of right now on Republic TV. A terrorist associate was arrested by a joint team of police and Indian Army in North Kashmir's Bandipora yesterday. Suspect identified as Shoaib Wasim Ahmed Malik from the Gundpura, Rampura, after attempting to flee during a Naka check. And I want to go across to my colleague who's joining us live, Aravat, I'm coming across to you right now. If you could take our viewers through the latest details. Now, we have that picture of the terrorist associate who has been arrested by the joint forces. And if you could take our viewers through which organization does this terrorist associate belong to? Do we have any information on that? Go ahead, Aravat. Yeah, Shwangi, as we have seen that the multiple anti-terror operations are taking place in the Kashmir Valley. We have seen big anti-terror operation in South Kashmir's Kulgam just days back. Then after we have seen that the small kind of operations in the various parts of the Kashmir Valley. And same, if we'll talk about this operation which took place in North Kashmir's Bandipora, where we have seen one terrorist associate who was in touch with the Pakistan-based handlers, and a huge cache of arms ammunition have been recovered from the arrested terrorist associates. Same kind of operations are taking place in the other areas of North Kashmir, like we'll talk about the North Kashmir Sopore, where we have seen that the two individuals also detained yesterday evening in the North Kashmir's Yaripur area in the North Kashmir Sopore, where we have seen that the two individuals who belong from the South Kashmir have been arrested by the Joint Security Forces, and the huge cache of arms ammunition have been recovered. It indicates that the House Security Forces are alert in the Kashmir Valley to dismantle the structures of the terrorists, where we will talk about the TRF's individuals have been arrested by the Joint Security Forces. Also, we have seen that the Hizbul Mujahideen terrorists who supported them to provide the logistics and to carry arms ammunition from one location to another location,
Also, we have seen just days before the big anti-terror operation in the South Kashmir, Kulgam, where we have seen the 5 Hizbul Mujahideen commanders were gunned down by the Joint Security Forces. It indicates that the alertness of the forces. Also, we can say that the major tragedy have been averted by these kind of the individuals in the North Kashmir, particularly if we talk about the North Kashmir's Bandipora, or we will talk about the Sopore. Meanwhile, these kind of operations are taking place in the various parts of the Kashmir Valley, where Joint Security Forces receive that the intelligence inputs the presence of the terrorist associates or the presence of the militants from North to South Kashmir. There are small kind of operations which is still going on. Shwangi, if we talk about the affiliation of these individuals, it has not been cleared, but yes, the sources have told that this individual in the Bandipora was affiliated with the TRF. Yes. Okay, thank you for joining us, Arnab. I will be coming back to you as we track the latest update of a major terror crackdown in Jammu and Kashmir. We move ahead right now to some of the other breaking news updates coming in. We have a fresh development where in Punjab's Mohali, a multi-story building has collapsed and many are feared trapped inside. Now, we are also coming to know, viewers, according to the updates, that around one person, I repeat, around one person has unfortunately lost their life. Viewers, district authorities have launched a rescue operation. 2 excavators have been pressed into service as part of the operation. A fire brigade team is also present at the spot. All right, so this is what we're learning of right now. And I just want to go across to my colleague who's on the ground. He is in Mohali getting us the top updates. Building collapse in Mohali. Lalit, I'm coming across to you. If you could take our viewers through and show us more about how is the rescue and relief operation going on right now, the status of it, and also tell us about, do we know what really caused this unfortunate incident where one person has lost their life? Lalit. Well, Shivangi, if we talk about this whole incident, this tragic incident, yesterday around 5 p.m., a multi-story building in Mohali near Sohana, it collapsed. And as per the inputs of the local, a nearby digging was being done by which the foundation was somehow misled. And after that, this whole tragic incident took place in the Mohali area. And the whole building collapsed like the pair of cards. And if you talk about, it's been more than 12 hours. Now the rescue operation is going on war footing. The Indian Army is trying to evacuate the persons who have been somehow trapped under the debris and rubble. And if we talk about in the past 12 hours, a girl of age 20 year who has been a native of Himachal Pradesh, Theog area, she's come to the injuries. So from the past 12 hours, here the rescue operation is going on war footing. And as per the inputs of the local, it has been said that around 4 to 5 people have been trapped inside the debris. So still, from the past 12 hours, the evacuation from the Indian Army is being done. The NDRF teams, the JCB machines, the government machinery and the administration here is completely working here. Let me show you the visuals also from here, where you can see that the work of evacuation is being done from the past 12 hours. But if you talk about under this misery and under this tragic incident which took place, just a girl has been found who's come to her injury. So still the evacuation process is being done here in the Mohali, where the NDRF team and the Indian Army is doing the evacuation. Back to the studio, Shivangi. All right, thank you for joining us, Lalit, with all those details. I will be coming back to you because we will be getting more updates for our viewers as you keep reporting for us from the ground.
All right, let's move ahead and we will tell you a little bit more about what happened. As Lalit is getting us those updates, here's a report where we highlight this story, the top pictures coming in, and also what exactly happened in Mohali when a multi-story building had collapsed. And like our colleague Lalit was telling us, the NDRF and the Indian Army are pressed into action. They are helping with the relief and rescue operations, and the owners of this building have been booked. Let's have a look at this report as we get to the top updates. In a tragic incident in Punjab's Mohali, several people are feared trapped after a multi-story building collapsed. The building collapsed during excavation work being carried out in the basement of the adjacent building. As per the officials, the gym was operating on all 3 floors of the building that was collapsed. Mohali police have booked the building owners Parvinder Singh and Gagandeep Singh under section 105 of BNS at Sohana police station. It is believed that 7 to 8 people might be trapped under the debris. Several teams of NDRF, police and district administration were carrying out rescue and relief operations on the site of the accident, and medical teams are on standby. स्टार्ट किए नियर अबाउट 1.5 से 2 घंटे हो गए, तो एनडीआरएफ की टीम को 7 एनडीआरएफ टीम को एक विक्टिम को हमने रिकवर कर लिया है सर, जो फीमेल गर्ल्स है सर, जिसकी उम्र नियर अबाउट 22 साल सर हमें लगती है अकॉर्डिंग टू सर। ये तो सर डॉक्टर साहब सर इसको कंफर्म करेंगे सर। तो हमने उसको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल सर उनको रेफर कर दिया है सर। ज्यादातर हमें फिजिकल वर्क करना पड़ेगा सर टीम को, एंड इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं सर, अपने हाइड्रोलिक जैक का कर रहे हैं, कटर इक्विपमेंट्स का कर रहे हैं सर। Indian Army personnel too had to join the rescue operations. A fire brigade team also reached the spot. A local resident said that a loud noise was heard when the building collapsed. Meanwhile, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann expressed grief and said that the action will be taken against the culprits behind this incident. ऐसा पता लगा है कि यहाँ कोई एक जिम था जिसमें कुछ नौजवान जरूर पर जिसके लिए आते थे। एग्जैक्ट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कितने लोग थे नहीं थे, और परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि किसी की जान ना जाए। और पूरा प्रशासन खुद लगा हुआ, रेस्क्यू टीमें भी लगी हुई हैं, एनडीआरएफ को भी सूचित किया हुआ है। Operations are underway to rescue people who are trapped under the debris. Let's move ahead right now. The politics over the Sandhya Theatre stampede continues. That is right. We are still seeing a lot of to and fro and a war of words in this case. Now we are seeing a short while back as well, where Allu Arjun has clearly said that there is an attempt to assassinate his character. We also saw Akbaruddin Owaisi saying very clearly that there was some part of callousness from Allu Arjun's side. So a lot of reactions coming in from the Congress as well. Let's have a look at this report as we track the latest developments. Even though actor Allu Arjun is out on bail in the Sandhya Theatre stampede case in which a woman had lost her life, the Congress government targeted the Pushpa 2 star. जो हीरो आया आरटीसी एक्स रोड से गाड़ी के रूफटॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो बना है, तो पहले गलती थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस कर दिए। दूसरे गलती रोड शो करने के लिए कुछ बोला भी नहीं। वो आरटीसी एक्स रोड बहुत हाई डेंसिटी ट्रैफिक है, क्योंकि आरटीसी एक्स रोड में 10 थिएटर है, एक नहीं है। Telangana Chief Minister Revant Reddy has alleged that Telugu actor Allu Arjun attended the screening of his film Pushpa 2 on December 4th, despite the police denying permission. The Congress Chief Minister also claimed that even after a woman died in a stampede during the event, Allu Arjun did not leave the cinema hall until the police were forced to remove him. अरे 2 लाश गिर गए, लोग हजारों लोग बाहर है, हीरो जब तक यहाँ बैठेंगे लोग वापस नहीं जा रहे हैं, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गए। हीरो को निकल जाओ बोल के बोलने के लिए कोशिश करे तो थिएटर मैनेजमेंट दे हैव नॉट अलाउड टू गो एंड टेल हीरो, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके जबरदस्ती से वो हीरो को, हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखकर उनको बाहर लेकर आए।
Revant Reddy's remarks came after AIMIM MLA Akbaruddin Owaisi raised the issue in the State Assembly. Akbaruddin Owaisi claimed that the actor knew that his movie Pushpa 2 was now going to break records at the box office after the stampede. वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। The tragedy occurred at the Sandhya Theatre in Hyderabad when thousands gathered for the premiere of Pushpa 2 to see Allu Arjun. It's a very unfortunate accident that has happened and nobody to be blamed. I genuinely think there's nobody to be blamed. There's a lot of false allegation and there's a lot of, communication gaps and, thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. But the question is, can the state government ignore the lapses on part of the Hyderabad police and pin the blame solely on the actor? And viewers, let's move ahead right now. PM Modi is on a 2-day visit to Kuwait. That is right. And he addressed the Indian community, saying that I'm here to celebrate your achievements. PM Modi is the first premier to visit Kuwait in 43 years. He was invited by the Kuwaiti Emir. Here is a quick report where we highlight the developments and what we can expect next. भारत माता की, भारत माता की नमस्कार। आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। Prime Minister Modi is on a 2-day visit to Kuwait. Because of you, the Indians are so proud. You made us proud. You take India to the high level. He is the first Indian Prime Minister in 43 years to visit Kuwait. While addressing Hala Modi event, he hailed India's achievement overseas. आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का 2रा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। Speaking about the partnership between the two countries, Prime Minister Modi addressed the need for skill, innovation, technology and manpower. He highlighted how India is working towards providing that in partnership with countries like Kuwait as well as other nations like Italy. भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत
अरब सागर के दो किनारों पर बसे। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। Prime Minister Modi spoke about India's digital forward movement. He said that India has become digitally smart and this is only the beginning. आज भारत दुनिया के सबसे डिजिटल कनेक्टेड देशों में से एक है। डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए लोगों के पास डिजी लॉकर है। एयरपोर्ट पर सीमलेस ट्रैवल के लिए लोगों के पास डिजी यात्रा है। टोल बूथ पर समय बचाने के लिए लोगों के पास फास्टैग है। भारत लगातार डिजिटली स्मार्ट हो रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। Ending his speech, he invited the Indian diaspora to attend the Mahakumbh. मैं आप सभी को विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। नए साल का पहला महीना 2025 का जनवरी इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, करीब 1.5 महीना। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। He also met the Indian diaspora in Kuwait, which has immensely contributed to strengthening the bonds of friendship between the two nations. Prime Minister Modi also shared a heartfelt meeting with 101-year-old Mangal Sen Handa, a former Indian Foreign Service officer. Reports say that discussions are underway with Kuwait on a bilateral investment treaty and a defense cooperation pact. On day 2 of his itinerary, Prime Minister is scheduled to meet the Emir, the Crown Prince and the Prime Minister of Kuwait. Getting some big breaking updates coming in right now. The suspense over the allocation of portfolios in Maharashtra newly formed government has been resolved. CM Devendra Fadnavis will handle key departments including home energy, excluding renewable energy, law and judiciary, general administration and information, publicity, along with other departments not assigned to other ministers. Deputy CM Eknath Shinde has been given urban development, housing, public works. Meanwhile, Deputy CM Ajit Pawar will oversee finance and planning and state excise departments. Big update coming in right now, viewers. The Maharashtra portfolio distribution has been announced, where we see what I read out for you is who is holding what when it comes to the CM and the two deputy CMs. According to the update that we have for you, the suspense is over. I'll just once again repeat who has what portfolio. CM Fadnavis will handle home energy, law and judiciary and general administration and information and publicity, along with other departments not assigned to other ministers. Deputy CM Shinde, urban development and others. Ajit Pawar, finance and planning and state excise departments. I'm going to go across to my colleague who's joining us. Satya Prakash will be joining us in just a short while from now. We'll try to connect to Satya Prakash, who will help us understand what is happening in terms of this huge suspense, where for the longest time we were seeing that waiting for the announcement of the portfolio allocation. Remember that there was a lot of delay and a lot of speculation, because there was a huge competition, a huge negotiation, you can say, for the plum portfolios between the allies of the Mahayuti alliance, where everybody wanted a certain portfolio when we talk about the allies. But right now the suspense ends over portfolios in Maharashtra, and now we see that finally there has been a allocation which has been decided among the Mahayuti alliance partners. Maharashtra CM to handle home, energy, law departments. Deputy CM Shinde to handle urban development.
And Deputy CM Ajit Pawar is also getting finance and planning and state exercise departments. So this is what we see right now on Republic. We will try to get back to you and get you more updates. We will take a short break now. We will keep our focus on Maharashtra. In other news coming in, at least 4 people have been killed, unfortunately, including a child, and over 200 injured after a car plowed through a crowded Christmas in the eastern German city. More details, stay tuned. 13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals.
Viewers, a very, very good morning. We are live this morning. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. We'll talk about all the big international stories coming in. And the top story comes from the German city, from East Germany, where we see that there was an attack at a Christmas market. Unfortunately, viewers, 4 people have lost their lives. Over 200 people are injured. We'll tell you more about this after the headlines. So let's get started with the top headlines we're tracking. आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है. PM Modi on a 2-day visit to Kuwait addresses Indian diaspora, hails India's achievements. PM's power-packed Kuwait visit day 2 today to attend spectacle to defense deals and hold key bilaterals. There are groups within India who are aligning with the anti-India groups operating from outside the country. This is known. And then we have countered them politically and successfully. Out of Fadnavis's big disclosure, Kiran Rijiju says groups in India are hands in glove with anti-India forces. थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस कर दिए. लोग जमा हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ट्रैफिक के लिए भी दिक्कत हो जाएंगे, इसीलिए उनको हम परमिशन देना मना कर दिए, वो नहीं आना. Politics of Allu Arjun arrest continues. Revant Reddy targets Pushpa 2 star, says organizers ignored the warning signals. False allegations falling on you, saying this is your character assassination. But I'm here to put my foot down and say, and stand on my feet, grounded, and say, no. I have not done those allegations. I have not said anything like that. It is purely 100% false. Meanwhile, Allu Arjun responds to the charges, says he feels humiliated that his character was assassinated. Rescue operations underway as multi-story building collapses in Punjab's Mohali. Reports of 10 to 15 being trapped in basement. Viewers, at least 4 people have been killed, including a child, and over 200 others have been injured after a car plowed through a crowded Christmas in the eastern German city of Magdeburg. Take a look. At least 4 people have been killed and over 200 others have been injured after a car drove into a crowd at a Christmas market in Germany's Magdeburg city. Wir sind am Zittern, voller Mitgefühl mit den Angehörigen, auch in der Hoffnung, dass von unseren Angehörigen, Bekannten, Verwandten nichts passiert ist. The German police has arrested a 50-year-old Saudi doctor identified as Talib al-Abdul Mohsen as the suspect in the chilling attack. The officers are inspecting the incident as a terror attack, but who is Talib? Talib, a doctor from Saudi Arabia, was given a refugee status in Germany in 2016. Footage from the scene shows the suspect lying near a heavily damaged black car with a police officer pointing a weapon at him while bystanders looked on in shock. Talib intentionally drove a black BMW into the crowd. As per the reports, the suspect had rented the car shortly before the attack and no known Islamist ties have been found. Wir haben den Täter gefasst. Es ist ein aus Saudi-Arabien stammender, hier in Sachsen-Anhalt arbeitender Arzt, der seit 2006 in Deutschland ist. Wir sind gerade dabei, alle weiteren Daten zusammenzutragen und auch das Verhör vorzunehmen. Nach jetzigem Stand ist es ein Einzeltäter, sodass auch für die Stadt nach jetzigem Ermessen keine weitere Gefahr ausgeht, weil wir ihn festnehmen konnten und jetzt alle Untersuchungen laufen. German Chancellor Olaf Scholz and Interior Minister Nancy Faeser visited the site of the attack.
And viewers, let's move ahead. Thousands of Cubans took to the streets outside the US Embassy in Havana. They are demanding an end to decades of sanctions and calling on Washington to remove Cuba from its terrorism sponsor list. As the country reels under inflation, natural disasters, here is more on what's happening in Cuba as we get those top developments. Tens of thousands of Cubans marched in front of the US Embassy in Havana on Friday. The protests were led against the long-standing sanctions in the waning weeks of the Biden administration. Furor erupted amongst Cubans over the US sanctions as they issued a call on Washington to remove the country from its list of nations sponsoring terrorism. Cubans now fear that these sanctions might worsen in the incoming Trump 2.0 era. Prácticamente vivimos al día. Son muchas las quejas del pueblo justas por la demora o fragmentación de la canasta familiar normada, la distribución de la leche, el pan, el gas licuado y los medicamentos, productos básicos e imprescindibles para la vida cotidiana. The demonstration along the seaside drive of Havana, where the American embassy is situated, was led by former Cuban dictator Raul Castro and President Miguel Diaz-Canel, who heads up the ruling Communist Party. Waving the Cuban flag, marchers chanted calls such as "Down with the blockade" and "We will never surrender." Cubans have been lamenting the trade restrictions imposed by the United States as it has been mounting over their underwhelming GDP since 2023. Sí hay bloqueo, sí se ha recrudecido, sí nos enfrentamos a una guerra económica, sí nos desprecian, sí nos intoxican vulgarmente, obscenamente y cargado de odio en las redes sociales. As per a United Nations report, these sanctions have cost Cuba some $5 billion between March 2023 and February 2024. US sanctions against Cuba are not a new phenomenon. Cuba has been belted by American sanctions since 1960s. The confrontation led by Cuba would be the first in over decades. What blusters the legitimacy of the Cubans' voice are the swaths of population who are dealing with power cuts, planned blackouts, and water shortages compounded by consecutive natural disasters. As the world prepares for a potential Trump 2.0, the former president's fiery rhetoric is sending shockwaves through global diplomatic and trade circles. In his latest attack, Trump has turned his focus on the European Union, accusing them of free riding on American resources and warning of a tariff onslaught. While Europe scrambles to react, markets and allies alike are grappling with the uncertainty. Watch a report to know more. As Trump prepares to presume his presidency, his tariff tirade has begun intensifying. Rivals, allies in the East and West are bracing up because no one knows what lies ahead. An American capitalist, Trump's rhetoric of America first is creating tremors in the geopolitical scenario. Donald Trump believes countries and organizations are freeloading of the United States, abusing its tax regime and giving nothing back. The US have decided to go protectionist. The reason for that is that they believe they can grow their economy by themselves. Plus, strategic rivalry which they have with China, and where they believe they have to decrease their trade dependence vis-à-vis China. The EU will not go protectionist for a simple reason is that we need, like China by the way, we need international trade to grow our economy. Without international trade, the EU economy will grow even less than it does today, and we know that it does not grow enough. So, hence our view that decoupling with China is not the way to go. Trump feels that the time is up and countries should now accept his ultimatum of face tariffs up to 100%. Under Trump's radar have been the European Union, NATO countries, China, India, Russia, Brazil, Italy, Canada and France, to name a few.
In the latest, he issued a warning to the European Union on his platform Truth Social. Trump said that the European Union must buy more American gas and oil to resolve the trade gap or be prepared for tariffs all the way. In 2024, the trade deficit between the United States and the European bloc stood at $162.5 billion US. In a swift response, European Union spokesman Olaf Gill stated that the bloc remains open to discussions and collaborations in the energy sector. Trump's comments have rattled the markets across Europe. Earlier, the NATO chief Mark Rutte had issued a call to member nations on increased spending. I've said before, not because of Trump, but I believe strongly, and I know many allies believe strongly, that 2% is simply not enough. It is simply not enough if longer term we want to keep our deterrence at the level it is now. Now it is okay. We can now defend ourselves and nobody should try to attack us. But I want that to stay the same in 4 or 5 years. European Union countries have also assured that they are now committing to more energy imports from the United States by phasing out Russia. And Putin would have never gone in if I was president. If I was president, we wouldn't have had inflation. Our oil prices would have been lower. I had a good relationship with Putin. He would have, despite the Russia hoax, which made it more difficult, if we had that election, if it were an honorable election, we wouldn't have had any of the problems that we're talking about right now. In the tumultuous equation which Trump is seeking to resolve, US has been largest importer of energy from the European Union. It accounts for over a fifth of the entire union's exports. Earlier, Donald Trump accused India of charging higher tariffs on certain American goods. He reiterated his stance that America would reciprocate by imposing 100% tariffs on goods from New Delhi. Despite the charge, India remains to be a top trade partner of the United States, with bilateral exchange amounting to $191.8 billion. India was also poised as a major beneficiary from the trade war that Trump unleashed on China. Now it remains to be seen how these nations will deflect the incoming trade attacks. Here is some big breaking updates coming in right now, viewers. Breaking news coming in with the attack that took place in Germany's Magdeburg. MEA has issued a statement and condemned the attack. The MEA says that we condemn this horrific attack, and this is a horrific and senseless attack at a Christmas market. Several precious lives have been lost and many have been injured. Our thoughts and prayers are with the victims. Our mission is in contact with Indians who are injured as well as their families and rendering all possible assistance. So this is a big update coming in right now, Republic TV. Breaking news coming in over the attack that took place in Germany's Magdeburg. MEA issued a statement and condemned the attack. The MEA says that we condemn the horrific and senseless attack at a Christmas market. And many, I repeat, some very precious lives have been lost and many have been injured. Our thoughts and prayers are with the victims. Our mission is in contact with Indians who are injured as well as their families, rendering all possible assistance. Okay, we're taking a short break, viewers. Much more coming up as we are live this morning. We'll keep a focus on the business stories coming in. The 55th GST Council meeting has been held and has seen a huge host of important decisions, including the tax rate changes and a clarification on several sectors. More details coming right up. Stay tuned. उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
some top business updates coming in. Investors can expect a busy week in the last week as multiple IPOs are set to launch. 5 mainline IPOs, including offerings from Concord, Enviro, Sanathan Textiles, Mamta Textiles, will open for subscription on December 7th, 27th and close on December 23rd. And additionally, Unimac Aerospace's IPO will open on December 23rd and close on December 26th. The price range of rupees 745 to 785 per share. Allotment for IPOs launched on December 30th, such as the Carraro India and others will be finalized by December 26th, with listings scheduled for December 30th. Coming up on the other side, viewers, we put our focus on the big sports stories we are tracking. India's pace spearhead Jasprit Bumrah on the cusp of breaking Kapil Dev's all-time record for the country in Test cricket. More details coming right up. $13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. The deadlock between the BCCI and the PCB has finally come to an end, and the ICC's efforts have finally paid off. The Champions Trophy, as confirmed by the ICC, will be played in the hybrid model. The time was running out for the ICC considering the financial implications of the marquee event. The stakeholders of the Champions Trophy were also not very happy with the ICC considering the fact that they were not being able to tap into the financial gains of such a big event. The Board of Control for Cricket in India has already made it very clear that the Indian team will not be travelling to Pakistan under any circumstances for the Champions Trophy. The Pakistan Cricket Board tried its very best to fight back in the name of national interest, but it had no answers to the issues related to the security concerns in the country. To make matters worse, the Sri Lanka A team also pulled out of its tour midway, citing serious political unrest in the country. The ICC in their latest announcement has made it very clear that the Champions Trophy will be played in the hybrid model. The ICC also said that So coming up, viewers, as we keep getting your top updates, after a short break, we'll talk about one of the biggest sports stories which are coming in right now. India's pace spearhead Jasprit Bumrah is on the cusp of breaking Kapil Dev's all-time record for the country in the Test cricket. More details coming up. उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة.
حصلنا هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردة ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين وللعرب، وأيضا الدعم الكامل الذي يتم تقديمه لهم من حكومة نتنياهو وسموتريش وابن غفير على ليقوموا بهذه الأعمال. The deadlock between the BCCI and the PCB has finally come to an end, and the ICC's efforts have finally paid off. The Champions Trophy, as confirmed by the ICC, will be played in the hybrid model. The time was running out for the ICC considering the financial implications of the marquee event. The stakeholders सिनेमा हमारे वहाँ पर बहुत दिखाते थे, तो मैं वो जब सिनेमा देखता था, मैंने फिल्म देखी थी उपकार मनोज कुमार साहब की, दिल एक मंदिर, दो आँखें 12 हाथ, वो फिल्में देख के मुझे लगता था ये वर्ल्ड बड़ा कमाल का है, नया नया आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान से 8 साल छोटा हूँ और हम दोनों एक साथ बड़े हैं। और आप और अर्नब गोस्वामी की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। हाँ, मैं भी 7 मार्च हूँ, अर्नब गोस्वामी 7 मार्च है, तो महानता हम लेके चले थे।
largest news headquarters. Setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. A very good morning, viewers. It's 8 a.m. and you're watching Republic TV. I'm Deepak Suresh Kumar, and the Prime Minister is currently in Kuwait. A historic visit. First time that an Indian Prime Minister is visiting the nation in 43 years. We'll get you all the latest from Kuwait, but after a quick check on the headlines. Prime Minister Modi on a two-day visit to Kuwait addresses Indian diaspora, hails India's achievements. कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। PM Modi's power-packed Kuwait visit, day 2 today. He's all set to attend the spectacle, to defense deals and hold key bilaterals. There are groups within India who are aligning with the anti-India groups operating from outside the country. This is known. And then we have countered them politically and successfully. After Fadnavis's big disclosure, Kiran Rijiju says some groups in India are hands in glove with anti-India forces. तो पहले गलती थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस कर दिए, लोग जमा हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ट्रैफिक के लिए भी दिक्कत हो जाएंगे, इसीलिए उनको हम परमिशन देना मना कर दिए, वो नहीं आना। Politics over Allu Arjun's arrest. Revant Reddy targets Pushpa 2 star, says organizers ignored the warning signs. False allegations falling on you, saying this is your character assassination. But I'm here to put my foot down and say, and stand on my feet, grounded, and say, no, I have not done those allegations. I have not said anything like that. It is purely 100% false. Meanwhile, Allu Arjun responds to charges, says he feels humiliated and that his character was assassinated. Rescue operations underway as a multi-story building collapses in Punjab's Mohali. Reports of 10 to 15 people being trapped in basement. First up, viewers, our focus remains on the rescue and relief operations currently underway in Mohali, where a multi-story building collapsed after there were works being done in the basement. So far, according to reports, about 10 to 15 people are feared to be trapped in the debris, and the rescue operations are currently underway on a war footing. And according to reports, one woman has also lost her life. The NDRF, Army and the local teams are currently assisting in the rescue and relief operations. As you can see on the visuals on your screens, you can see how locals have also stepped in to assist the Army as well as the NDRF personnel who are currently working at the Mohali site to rescue all those individuals who are currently trapped. Heavy machinery is also being used to dig through the rubble and pull out the survivors.
We also have some reactions also coming in. First, let's play out the statement by the local police, followed by another eyewitness. बेसिकली जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर कर मतलब नहीं बना रहा था, वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई। वी हैव रजिस्टर्ड द FIR 105 BNS के FIR दर्ज। सर FIR किस पे हुई है? जो द ओनर ऑफ द बिल्डिंग ही रेस्क्यू हुई है, बाकी सारा उदों दा सारा क्लीयरेंस चल रही है तो ਜਿਹੜੀ भी कोई गल होगी ਤੁਹਾਨੂੰ फिर दस दिता जाऊगा। मैं जिम का ट्रेनर हूँ और जब मैं जिसको वर्कआउट करा था उसको मैंने बाहर निकाल दिया। आज के दिन ज़्यादा कोई आता नहीं है, लेग डे होता आज, तो लास्ट में जो जिम के बराबर से काम चल रहा था उस साइड को जिम करी थी। उसके बाद पता नहीं बाहर कितने बंदे थे, मुझे उसके बारे में नहीं पता। जो मैं जिसको वर्कआउट करा रहा था उसे मैंने बाहर निकाल दिया। जिम अपनी ग्राउंड बेसमेंट टॉप ते बाकी ऊपर 2 फ्लोर पे कमरे थे, हिल रही थी तभी बाहर निकाला था। कितने मंजिल की है ये बिल्डिंग? ये सर ग्राउंड पे है और बेसमेंट ते 5 फ्लोरों पे। Viewers, the rescue teams are working round the clock to pull out the survivors from under the debris. But here's a report that tells you what exactly happened and what led to the collapse of this multi-story building. And on the other hand, the owners have also been booked under Section 105 of the BNS. Here's a complete story. In a tragic incident in Punjab's Mohali, several people are feared trapped after a multi-story building collapsed. The building collapsed during excavation work being carried out in the basement of the adjacent building. As per the officials, the gym was operating on all 3 floors of the building that was collapsed. Mohali police have booked the building owners Parvinder Singh and Gagandeep Singh under Section 105 of BNS at Sohana police station. It is believed that 7 to 8 people might be trapped under the debris. Several teams of NDRF, police and district administration were carrying out rescue and relief operations on the site of the accident, and medical teams are on standby. स्टार्ट किए नियर अबाउट 1.5 से 2 घंटे हो गए, तो एनडीआरएफ की टीम को 7 एनडीआरएफ टीम को एक विक्टिम को हमने रिकवर कर लिया है सर, जो फीमेल गर्ल्स है सर, जिसकी उम्र नियर अबाउट 22 साल सर हमें लगती है अकॉर्डिंग टू सर। ये तो सर डॉक्टर साहब ही सर इसको कंफर्म करेंगे सर। तो हमने उसको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल सर उनको रेफर कर दिया है सर। ज्यादातर हमें फिजिकल वर्क करना पड़ेगा सर टीम को, एंड इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं सर, अपने हाइड्रोलिक जैक का कर रहे हैं, कटर इक्विपमेंट्स का कर रहे हैं सर। Indian Army personnel too had to join the rescue operations. A fire brigade team also reached the spot. A local resident said that a loud noise was heard when the building collapsed. Meanwhile, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann expressed grief and said that the action will be taken against the culprits behind this incident. ऐसा पता लगा है कि यहाँ कोई एक जिम था जिसमें कुछ नौजवान जरूर वर्जिश के लिए आते थे। एग्जैक्ट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कितने लोग थे नहीं थे, और परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि किसी की जान ना जाए। और पूरा प्रशासन खुद लगा हुआ, रेस्क्यू टीमें भी लगी हुई हैं, एनडीआरएफ को भी सूचित किया हुआ है। Operations are underway to rescue people who are trapped under the debris. Viewers, we have some big breaking news coming in. The Indian Army has now taken to platform X to speak about the rescue operations that are currently underway. The Indian Army said that it reacted swiftly for the rescue in a remarkable display of coordinated efforts. Indian Army columns along with the NDRF and the state rescue teams have been relentlessly working to address the crisis. Engineer task force with debris clearance machine and JCBs are operational at the site, and top debris has been removed and efforts are being done to reach the basement, because it all started in the basement. The works were happening in the basement, and while the construction works were going on, that was when the building collapsed. The building collapsed. It's a multi-story building. 10 to 15 people are currently trapped. The rescue and relief operations are going on right now. SDRF, NDRF, as well as the army, along with the locals, are currently involved in
the rescue operations because a dozen people are trapped under the debris, and now they're working round the clock with heavy machinery and state-of-the-art technology to cut through to the basement and pull out the remaining survivors. So far, only one woman has been reported dead in the entire incident. Viewers, days after Allu Arjun's arrest in the Stampede case, now in the aftermath of the arrest, politics continues to rage on. Chief Minister Revanth Reddy has attacked the Pushpa 2 star, saying that multiple warning signals were ignored by Allu Arjun and his team on the day when a woman's life was snuffed out of her in the Stampede, and one young boy was also injured. And Allu Arjun has hit back at Revanth Reddy, saying that it is nothing but a bid to assassinate his character. Here's the story. Even though actor Allu Arjun is out on bail in the Sandhya Theatre Stampede case in which a woman had lost her life, the Congress government targeted the Pushpa 2 star. जो हीरो आया आरटीसी एक्स रोड से गाड़ी के रूफ टॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो बना है, तो पहले गलती थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस कर दिए। दूसरे गलती रोड शो करने के लिए कुछ बोला भी नहीं। वो आरटीसी एक्स रोड बहुत हाई डेंसिटी ट्रैफिक है, क्योंकि आरटीसी एक्स रोड में 10 थिएटर है, एक नहीं है। Telangana Chief Minister Revanth Reddy has alleged that Telugu actor Allu Arjun attended the screening of his film Pushpa 2 on December 4th, despite the police denying permission. The Congress Chief Minister also claimed that even after a woman died in a stampede during the event, Allu Arjun did not leave the cinema hall until the police were forced to remove him. अरे 2 लाश गिर गए, लोग हजारों लोग बाहर है, हीरो जब तक यहाँ बैठेंगे लोग वापस नहीं जा रहे हैं, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गए। हीरो को निकल जाओ बोल के बोलने के लिए कोशिश करे तो थिएटर मैनेजमेंट दे हैव नॉट अलाउड टू गो एंड टेल हीरो, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। Revanth Reddy's remarks came after AIMIM MLA Akbaruddin Owaisi raised the issue in the State Assembly. Akbaruddin Owaisi claimed that the actor knew that his movie Pushpa 2 was now going to break records at the box office after the stampede. वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। The tragedy occurred at the Sandhya Theatre in Hyderabad when thousands gathered for the premiere of Pushpa 2 to see Allu Arjun. It's a very unfortunate accident that has happened and nobody to be blamed. I genuinely think there's nobody to be blamed. There's a lot of false allegation and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. But the question is, can the state government ignore the lapses on part of the Hyderabad police and pin the blame solely on the actor? Moving on, viewers, the Prime Minister is on a historic 2-day visit to Kuwait, and his visit comes at the invitation of the Emir of Kuwait, and this is the first time that an Indian Prime Minister has visited the nation in the last 43 years. And upon his arrival, the Prime Minister greeted the Indian diaspora. Here's a quick peek at the Hala Modi event. भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।
आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। Prime Minister Modi is on a 2-day visit to Kuwait. Because of you, the Indians are so proud. You made us proud. You take India to the high level. He is the first Indian Prime Minister in 43 years to visit Kuwait. While addressing Hala Modi event, he hailed India's achievement overseas. आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। Speaking about the partnership between the two countries, Prime Minister Modi addressed the need for skill, innovation, technology and manpower. He highlighted how India is working towards providing that in partnership with countries like Kuwait as well as other nations like Italy. भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। Prime Minister Modi spoke about India's digital forward movement. He said that India has become digitally smart and this is only the beginning. आज भारत दुनिया के सबसे डिजिटल कनेक्टेड देशों में से एक है। डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए लोगों के पास डिजी लॉकर है। एयरपोर्ट पर सीमलेस ट्रैवल के लिए लोगों के पास डिजी यात्रा है। टोल बूथ पर समय बचाने के लिए लोगों के पास फास्टैग है। भारत लगातार डिजिटली स्मार्ट हो रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। Ending his speech, he invited the Indian diaspora to attend the Mahakumbh. मैं आप सभी को विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। नए साल का पहला महीना 2025 का जनवरी इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, करीब 1.5 महीना। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। He also met the Indian diaspora in Kuwait, which has immensely contributed to strengthening the bonds of friendship between the two nations.
Prime Minister Modi also shared a heartfelt meeting with 101-year-old Mangal Sen Handa, a former Indian Foreign Service officer. Reports say that discussions are underway with Kuwait on a bilateral investment treaty and a defense cooperation pact. On day 2 of his itinerary, Prime Minister is scheduled to meet the Emir, the Crown Prince and the Prime Minister of Kuwait. Moving on, viewers, we have some big breaking news coming in from Assam. The state government has intensified its fight against child marriage, and so far, a total of 416 arrests have been made in the latest crackdown against this social evil. Taking to social media platform X, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that Assam continues its fight against child marriage in Phase 3 operations launched on the intervening night of December 21st and 22nd. 416 arrests were made and 335 cases have been registered so far. He further added that his government will continue to take bold steps to end this social evil. This is the latest that we are tracking as far as Assam's crackdown against child marriage is concerned. 16 new arrests have been made and 335 cases have been registered in Phase 3 operation that was launched on the intervening night of 21st and 22nd. Viewers, the plight of Hindus in Bangladesh continues to go unnoticed, and the attacks continue to rage on the minority communities. In the latest, more and more temples were attacked in Bangladesh. 3 temples were attacked and 8 idols in those 3 temples were desecrated. Here's a complete report on that. Despite owning up to targeted attacks on minorities in Bangladesh and vying arrests, the interim Yunus regime continues to be in a state of inertia, showing that little has changed on the ground. Despite the tall claim of action, fresh reports of vandalism of Hindu places of worship have come to light from Yunus-ruled Bangladesh. According to reports, 3 temples were targeted by suspected Islamic radicals at Mymensingh and Dinajpur in Bangladesh. Reports claimed 8 idols were desecrated during the vandalism of the 3 temples in 2 days. It was learned that 3 idols were desecrated in Dinajpur, while 5 more were targeted in Mymensingh. Reports also said a 27-year-old man was arrested in connection with incidents of vandalism in Dinajpur. Last week, 4 people were arrested for damaging a Hindu temple, as well as houses and shops belonging to members of the community in the country's north. Earlier, the press secretary to Yunus issued a statement owning up to more than 80 such incidents. As the targeted attacks on Hindu places of worship continues, is the Yunus regime only paying lip service? Moving on, viewers, in a thought-provoking address at the launch of the first World Meditation Day at the United Nations headquarters in New York City, spiritual guru Sri Sri Ravi Shankar urged all member states to acknowledge the power of meditation. Take a look at this report. Sri Sri Ravi Shankar delivered a keynote address at the United Nations headquarters on the eve of World Meditation Day, articulating the power of meditation to address the key challenges of the times. The spiritual guru addressed an event themed on meditation for global peace and harmony. The event was organized by India's permanent mission to the United Nations. Today, meditation is not a luxury as it was thought, but it is a necessity. I would call it as mental hygiene. Like you have dental hygiene, we have mental hygiene, wherein meditation can help us to be more centered and away from aggression and depression. The mental health crisis has taken a big toll on our population. On one side, our young population is undergoing such aggression,
aggressive behavior on the other side, there is depression. Meditation helps us to be more centered. It brings us sensitivity and sensibility at the same time. The two important factors of any civilized society. Through his address, the spiritual guru underlined the power of meditation to address contemporary global challenges, including stress, violence, and societal discord. With that, viewers, it's time for a quick break. On the other side, we'll tell you more about the attack on the Christmas market in Germany, which killed 4 people and 200 plus people have been injured, which includes 7 Indians as well. We'll get you all the latest on that after a quick break. Don't go anywhere. $13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة.
أطلقنا هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردى ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين وللعرب، وأيضا الدعم الكامل الذي يتم تقديمه لهم من حكومة نتنياهو وسموتريتش وابن غفير على ليقوموا بهذه الأعمال. Hello and a very good morning, viewers. It's 8:30 and you're watching live this morning with me, Deepak Suresh Kumar, on Republic TV. Germany has witnessed its worst attack this year in a Christmas market where a car rammed through the public there. 4 people have lost their lives and 200 have been injured, which also includes 7 Indians. We'll get you all the latest from Germany, but after a quick check on the headlines. US Central Command strikes Houthi command and control centers in western Yemen. Four people killed, 200 injured, including 7 Indians after car rams into Christmas market in Germany. MEA issues statement, condemns attack, assures assistance to injured Indians. Trump targets European Union, accuses them of free riding on American resources, warns of tariff onslaught. Floods ravaged parts of Indonesia. Residents advised to take necessary precautions and stay indoors. First up, viewers, at least 4 people have been killed, including a child, and over 200 have been injured after a car plowed through a crowded Christmas market in the eastern German city of Magdeburg. In fact, 7 Indian nationals have also been injured. The MEA has issued a statement. Here's the latest from Germany. At least 4 people have been killed and over 200 others have been injured after a car drove into a crowd at a Christmas market in Germany's Magdeburg city. Wir sind am Zittern, voller Mitgefühl mit den Angehörigen, auch in der Hoffnung, dass von unseren Angehörigen, Bekannten, Verwandten nichts passiert ist. The German police has arrested a 50-year-old Saudi doctor identified as Talib al-Abdul Mohsen as the suspect in the chilling attack. The officers are inspecting the incident as a terror attack, but who is Talib? Talib, a doctor from Saudi Arabia, was given a refugee status in Germany in 2016. Footage from the scene shows the suspect lying near a heavily damaged black car with a police officer pointing a weapon at him while bystanders looked on in shock. Talib intentionally drove a black BMW into the crowd. As per the reports, the suspect had rented the car shortly before the attack and no known Islamist ties have been found. Wir haben den Täter gefasst. Es ist ein aus Saudi-Arabien stammender, hier in Sachsen-Anhalt arbeitender Arzt, der seit 2006 in Deutschland ist. Wir sind gerade dabei, alle weiteren Daten zusammenzutragen und auch das Verhör vorzunehmen. Nach jetzigem Stand ist es ein Einzeltäter, sodass auch für die Stadt nach jetzigem Ermessen keine weitere Gefahr ausgeht, weil wir ihn festnehmen konnten und jetzt alle Untersuchungen laufen. German Chancellor Olaf Scholz and Interior Minister Nancy Faeser visited the site of the attack. Moving on, viewers, thousands of Cubans hit the streets in the nation and they protested outside the US Embassy, demanding that the White House withdraws the decades-long sanctions and also to remove Cuba from its list
of terror sponsors. Here's what's happening in Cuba. Tens of thousands of Cubans marched in front of the US Embassy in Havana on Friday. The protests were led against the long-standing sanctions in the waning weeks of the Biden administration. Furor erupted amongst Cubans over the US sanctions as they issued a call on Washington to remove the country from its list of nations sponsoring terrorism. Cubans now fear that these sanctions might worsen in the incoming Trump 2.0 era. Prácticamente vivimos al día. Son muchas las quejas del pueblo justas por la demora o fragmentación de la canasta familiar normada, la distribución de la leche, el pan, el gas licuado y los medicamentos, productos básicos e imprescindibles para la vida cotidiana. The demonstration along the seaside drive of Havana, where the American embassy is situated, was led by former Cuban dictator Raul Castro and President Miguel Diaz-Canel, who heads up the ruling Communist Party. Waving the Cuban flag, marchers chanted calls such as "Down with the blockade" and "We will never surrender." Cubans have been lamenting the trade restrictions imposed by the United States as it has been mounting over their underwhelming GDP since 2023. Sí hay bloqueo, sí se ha recrudecido, sí nos enfrentamos a una guerra económica, sí nos desprecian, sí nos intoxican vulgarmente, obscenamente y cargado de odio en las redes sociales. As per a United Nations report, these sanctions have cost Cuba some $5 billion between March 2023 and February 2024. US sanctions against Cuba are not a new phenomenon. Cuba has been belted by American sanctions since 1960s. The confrontation led by Cuba would be the first in over decades. What blusters the legitimacy of the Cubans' voice are the swaths of population who are dealing with power cuts, planned blackouts, and water shortages compounded by consecutive natural disasters. Viewers, even as the world prepares for a potential Trump 2.0, the former president's fiery rhetoric is sending shockwaves through global diplomatic and trade circles. In his latest attack, President-elect Donald Trump has turned his focus on the European Union, accusing them of free-riding on American resources and warning them of a tariff onslaught. Now, while Europe scrambles to react, markets and allies alike are grappling with the uncertainty. Watch this report to know more. As Trump prepares to presume his presidency, his tariff tirade has begun intensifying. Rivals, allies in the East and West are bracing up because no one knows what lies ahead. An American capitalist, Trump's rhetoric of America first is creating tremors in the geopolitical scenario. Donald Trump believes countries and organizations are freeloading of the United States, abusing its tax regime and giving nothing back. The US have decided to go protectionist. The reason for that is that they believe they can grow their economy by themselves. Plus, the strategic rivalry which they have with China, and where they believe they have to decrease their trade dependence vis-à-vis China. The EU will not go protectionist for a simple reason is that we need, like China, by the way, we need international trade to grow our economy. Without international trade, the EU economy will grow even less than it does today, and we know that it does not grow enough. So, hence our view that decoupling with China is not the way to go. Trump feels that the time is up and countries should now accept his ultimatum of face tariffs up to 100%. Under Trump's radar have been the European Union, NATO countries, China, India, Russia, Brazil, Italy, Canada and France, to name a few. In the latest, he issued a warning to the European Union on his platform Truth Social. Trump said that the European Union must buy more American gas and oil to resolve the trade gap or be prepared for tariffs all the way.
In 2024, the trade deficit between the United States and the European bloc stood at $162.5 billion US. In a swift response, European Union spokesman Olaf Gill stated that the bloc remains open to discussions and collaborations in the energy sector. Trump's comments have rattled the markets across Europe. Earlier, the NATO chief Mark Rutte had issued a call to member nations on increased spending. I've said before, not because of Trump, but I believe strongly, and I know many allies believe strongly, that 2% is simply not enough. It is simply not enough if longer term we want to keep our deterrence at the level it is now. Now it is okay. We can now defend ourselves and nobody should try to attack us. But I want that to stay the same in 4 or 5 years. European Union countries have also assured that they are now committing to more energy imports from the United States by phasing out Russia. And Putin would have never gone in if I was president. If I was president, we wouldn't have had inflation, our oil prices would have been lower. I had a good relationship with Putin. He would have, despite the Russia hoax, which made it more difficult, if we had that election, if it were an honorable election, we wouldn't have had any of the problems that we're talking about right now. In the tumultuous equation which Trump is seeking to resolve, US has been largest importer of energy from the European Union. It accounts for over a fifth of the entire union's exports. Earlier, Donald Trump accused India of charging higher tariffs on certain American goods. He reiterated his stance that America would reciprocate by imposing 100% tariffs on goods from New Delhi. Despite the charge, India remains to be a top trade partner of the United States, with bilateral exchange amounting to $191.8 billion. India was also poised as a major beneficiary from the trade war that Trump unleashed on China. Now it remains to be seen how these nations will deflect the incoming trade attacks. Well, with that, viewers, it's time for a quick break. On the other side, we'll tell you all the inside details of the GST Council meeting that's currently underway. Stay tuned. उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
Welcome back, viewers. The 55th GST Council meeting held in Jaisalmer saw a host of important decisions, including tax rate changes and clarifications on several sectors from defense to agriculture. The meeting addressed key concerns while some discussions remain unresolved. Watch our report to know the key takeaways from the GST Council meeting. The 55th GST Council meeting held in Jaisalmer brought a series of significant decisions that could impact India's current tax regime. Key sectors impacted by today's discussions include defense, agriculture, construction and exports. Finance Minister Nirmala Sitharaman revealed an extension of the Integrated Goods and Services tax exemption on surface-to-air missiles, reducing financial burden on defense imports. Comfortable, they didn't want ATF because they saw it as part of the crude petroleum diesel basket, and therefore they said that alone cannot be taken out, and therefore that continues to remain where it is today. There was also a suggestion just ATF could be put to a GOM so that they can think whether it is worthy of consideration to be brought into the GST, but they did not want anything done about ATF. So that is the second. Third, the GOM on health insurance. The meeting also clarified tax rates on construction materials and agricultural products. ACC blocks with 50%, fly ash will now attract a 12% GST. Meanwhile, black pepper and raisins sold by farmers will be exempted from GST. A reduction in the compensation cess for merchant exporters was also announced. Health insurance premiums and rate changes are also still under the discussion as the IRDAI's input is awaited. The GOM on health insurance. In fact, I may suggest that I must inform that the chairman of that GOM, Deputy Chief Minister of Bihar, was for almost just before lunch he left. He was there in the morning session. And since he had to leave a bit early, he decided that the council take that issue up first. And he did say that after good work, it's felt that it requires more time, and therefore health insurance related GOM work also requires more time. One of the more unusual discussions centered around the taxation of caramelized popcorn. Sitharaman clarified that popcorn with added sugar falls under a higher tax bracket due to its added sugar content, while plain or salted popcorn remains taxed differently. This resolution comes after certain states had tried to classify caramelized popcorn as a namkeen, a lower tax item. The highly anticipated proposal to reduce GST on food delivery charges from 18% to 5% was a no-go at the 55th GST Council meeting. कॉमर्स के द्वारा या डिलीवरी प्लेटफॉर्म के द्वारा, ई कॉमर्स के द्वारा फूड डिलीवरी जब होता है उसमें फूड का रेट में टैक्स करें, डिलीवरी के लिए अलग टैक्स करें, डिलीवरी के लिए अलग कितना टैक्स करना है, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुआ। पिछले एक सप्ताह से मैं देख रही हूँ न्यूज़पेपर्स में कंपनियों का नाम लेकर के इनके ऊपर 18 होगा, बड़े क्विक कॉमर्स में इतना होगा, क्या खाने के चीज में 5% जब लग रही है घर में पहुंचने में उसका 18% टैक्स होगा क्या? अगेन मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूं जीएसटी काउंसिल के बिहाफ में, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है। Finance Minister Nirmala Sitharaman confirmed that the matter has been deferred for further discussions, leaving consumers awaiting a resolution. On that note, viewers, let's slip into a short break, but on the other side, we'll tell you more about India's pace spearhead, Jasprit Bumrah, who's on the cusp of breaking Kapil Dev's all-time record in Test cricket. Stay tuned.
13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. Welcome back, viewers. India's pace spearhead Jasprit Bumrah is on the cusp of breaking Kapil Dev's all-time record for the country in Test cricket. Bumrah has 194 scalps to his name in 43 tests and needs just 6 more to become the fastest Indian pacer to 200 wickets in the red ball format. The record currently belongs to 1983 World Cup winning captain Kapil Dev. The legendary all-rounder had bagged his 200th wicket in the 50th test of his career. Former Indian cricketer Robin Uthappa has landed in a soup as an arrest warrant has been issued against him in relation to an alleged EPF deposit fraud. Reports have emerged that T20 World Cup 2007 winner has failed to pay 24 lakh rupees in dues.
Former India head coach Ravi Shastri as he praised on Australia's star batter Travis Head for the way he has improved over the past 3 years. Shastri admitted being extremely impressed with Head's compact technique and how he handles the short ball. India star all-rounder Ravindra Jadeja has revealed that he didn't have any prior knowledge of Ravichandran Ashwin's retirement and only got to know about it at the last moment. Jadeja said that he spent the whole day alongside Ashwin, but the latter didn't even give him a hint. Sri Lanka Cricket has approved significant changes to its constitution to reaffirm its commitment to fostering good governance, transparency, inclusivity and efficiency in its management structure. In what appears to be a new injury scare for India heading into the 4th Test match against Australia at the Melbourne Cricket Ground or the MCG, KL Rahul, who is the most successful batter for Rohit Sharma-led side in this series, was spotted receiving some medical attention for his arm in the nets while batting. 3 games into the Boxing Day Test, the series is tied at 1 each. दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। The deadlock between the BCCI and the PCB has finally come to an end, and the ICC's efforts have finally paid off. The Champions Trophy, as confirmed by the ICC, will be played in the hybrid model. The time was running out for the ICC considering the financial implications of the marquee event. The stakeholders of the Champions Trophy were also not very happy with the ICC considering the fact that they were not being able to tap into the financial gains of such a big event. The Board of Control for Cricket in India has already made it very clear that the Indian team will not be travelling to Pakistan under any circumstances for the Champions Trophy. The Pakistan Cricket Board tried its very best to fight back in the name of national interest, but it had no answers to the issues related to the security concerns in the country. To make matters worse, the Sri Lanka A team also pulled out of its tour midway, citing serious political unrest in the country. The ICC in their latest announcement has made it very clear that the Champions Trophy will be played in the hybrid model. The ICC also said that India and Pakistan matches hosted by either country at ICC events during the 2024 to 2027 rights cycle will be played at a neutral venue. India will play all their matches at a neutral venue. Though Sri Lanka and the UAE both are in contention to co-host the marquee ICC event, but it is being believed that the scales are shifting towards the UAE. The Emirates Cricket Board is right now waiting for a final clearance from the PCB and the ICC, and they have grounds in Abu Dhabi and Sharjah to co-host. Viewers, much more coming up. A new controversy erupts after Priyank Kharge, Karnataka minister, says Amit Shah has been bitten by a rabid dog. Stay tuned. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic.
You're watching Republic TV. I'm Shivangi Shukla and we are live and breaking this Sunday. PM Modi is on a 2-day visit to Kuwait and he addressed the Indian diaspora there saying that he is here to celebrate their achievements. All this and much more coming up. But as usual, the headlines. Let's get started. कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। PM Modi is in Kuwait addressing the Indian diaspora. He's on a 2-day visit to Kuwait, the first premier to be there in 43 years. PM's Power Pack Kuwait visit day 2 today to attend spectacle to defense deals and hold key bilaterals. There are groups within India who are aligning with the anti-India groups operating from outside the country. This is known. And then we have countered them politically and successfully. After Fadnavis's big disclosure, Kiran Rijiju says groups in India are hands in glove with anti-India forces. तो पहले गलती थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस कर दिए, लोग जमा हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ट्रैफिक के लिए भी दिक्कत हो जाएंगे, इसीलिए उनको हम परमिशन देना मना कर दे, वो नहीं आना। Politics over Allu Arjun arrest. Revant Reddy targets Pushpa 2 star, says organizers ignored the warning signals. Rescue operations underway as multi-story building collapses in Punjab Mohali. One has been reported dead. 4 people killed, 200 injured, including 7 Indians after car rammed into a Christmas market in Germany. MEA issues statement, condemns attack, assures assistance. All right, getting some big updates coming in right now, viewers. We start off with the political face-off heats up. Showdown over Ambedkar has reached a new low. The Congress has made a distasteful remark. Now we see the Karnataka Minister and Mallikarjun Kharge's son, Priyank Kharge, has made a distasteful remark. And he says, I condemn Amit Shah's statement and he is bitten by a mad dog. This is what we see right now, viewers, as back-to-back updates coming in. We are seeing that this is one more, a fresh low which has been reached by the Congress this time around. This is the Priyank Kharge who has made this remark. And this is coming in as, remember, we have been getting top updates on the Ambedkar Rao. Amit Shah bitten by rabbit dog, says Karnataka Minister Priyank Kharge amid the Ambedkar Rao. And this is coming in, viewers, as we are getting you back-to-back updates. Union Home Minister Kharge says Shah's problem is that Ambedkar and equality are not in his thoughts. These things are missing in his philosophy and ideology. I just want to go ahead and play out those reactions coming in. Then we'll try to get more details on this latest distasteful remark by the Congress. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ತತ್ವ, ಬಸವ ತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ RSS ತತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಾಯಿ ಕಡ್ದಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ತತ್ವ, ಬಸವ ತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ RSS ತತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಾಯಿ ಕಡ್ದಿದೆ. There is some more breaking updates coming in right now. An incident of road rage has come to light in Bengaluru where a man was abused and assaulted on road by a cab driver. The customer Shubham had booked a ride at RK Layout. Cab driver Kantaraj demanded more than
more fare than actual price. Argument heated up between Shubnam and cab driver Kantaraj. Okay, big update coming in. Bengaluru road rage. Cabbie assaults the man, attacks customer for rejecting extra fare. And that is a picture coming in where a road rage accident has been, incident there has been caught on camera. Now what we see on your screens is a man is being abused and assaulted by this cab driver. You can see that cab driver visibly extremely agitated there. The customer Shubnam had booked a ride at RK layout. Cab driver Kantaraj demanded more fare than actual price. Let's listen then to what happened. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಬೇಡ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ OTP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಬೇಡ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ OTP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ OTP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಬೇಡ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ OTP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ All right, we're being joined right now by the customer Shubnam, who had booked a ride at RK layout. And I want to come across to you, Shubnam. You know, we heard that entire sequence where you have recorded the cab driver. A cab driver, what did the cab driver tell you? Why is he getting angry? And from what we understand, he said that he will go by a higher price. Yes, Shubnam, you can talk about what happened. Yeah. So I booked the cab for my aunt, and she boarded the cab, and I provided the OTP. And after that, he started shouting at my aunt, telling that you will have to pay extra because Ola is showing 31 kilometer. However, Google Map is showing more kilometers. So I anyways it gets recalculated. So whatever the bill comes, I'll pay it. So he who will pay for extra kilometer? Your father will pay, which you might hear in Kannada that I told, why will my father pay? Means appa yaake kortare. After that, he started abusing very badly. I'm not sure what went wrong. Where I requested him, if you are not ready to go, please cancel the cab. Which he was not ready, and he gathered his other cabmates and auto drivers nearby, and they all, gathered near me, and they started threatening me, and when they made me delete the video. However, this video was still in my phone on deleted folders. I was able to recover. And, when I told I'm going to call the police, they started snatching my phone. After this video has ended, the cab driver got inside the cab and he tried to, hit me and, twist my hands, which other auto driver asked him to stop. And the abusive language he was using so badly that even his supporters started telling him that don't abuse so bad. And after that, I just told them sorry because there are so many people supporting him. And I moved back. The driver came and banged on my windshield twice. Shubnam, thank you for joining us here. But before I let you go and before
I let you go from the. I want to ask you a very small question now. Just one reminder, viewers: Shubnam Jaiswal is with us. He is the complainant. He is the one who recorded this video. Shubnam, do you think that a lot of techies in Bengaluru, people who come from outside, they keep complaining about this as well? Do you think this situation is getting out of hand, where a lot of people there allege that the cab drivers are using sneaky tactics to get more fare, get more money, not go by the rules? Do you see this happen very often? It is happening, actually. To be frank, recently you might have seen one Delhi girl was, slapped by one auto driver, and then, there was one video also when they have done social trial, where, person talking in Kannada was being, offered the ride. However, the person talking in Hindi was asked more money and denied the ride by multiple auto drivers. So this is often happening. Though Kannada was not a problem, you can see that I was talking in Kannada. I have full respect towards Kannada. Still, this driver has done this, and it is often happening in recent. It wasn't the case in past, but recently it has increased like anything. The auto driver or cab driver harassing non-Kannadigas too much. Right. Okay. Thank you for joining us, Shubnam Jaiswal, passenger and complainant there, where you can see a road rage incident caught on camera, where the cab driver had not only asked for more fare than the actual price, but then also the argument heated up between Shubnam, the passenger who we just spoke to, and the cab driver, Kantaraj. We'll come back to the story as we get more updates. Thank you for joining us, Shubnam, and sharing your side of the story. We move ahead right now to some of the other updates that are coming in right now. And we put a focus to what is happening in the Jammu and Kashmir. As Amit Shah, remember, Union Home Minister has been holding a lot of security review meetings. And the latest that we have learned, viewers, is that days after Home Minister Shah's Jammu and Kashmir security review meetings, 16 Corps commander reiterates support from across line of control behind terrorism in Jammu. White Knight Corps Commander Lieutenant General Naveen Sachdev says terrorism in Jammu existing because of support from across the border. He further says night operations intensify to establish peace in Jammu. This statement comes in backdrop of 17 terror attacks in Jammu region, in which 28 civilians and force personnel have been killed. Big update coming in right now, viewers. 16 Corps commanders, big statement saying support from across LOC is behind terrorism in Jammu. So once again, we see that there is a lot of meetings being held on a security situation in Jammu and Kashmir, and the commander, 16 Corps commander, is saying that what is across the LOC is leading and feeding the terror in the valley. Big update coming in, also saying that night operations intensify to establish peace in Jammu. That means that the operations during the night have intensified, and there is more care being taken during the night to make sure that there is a huge crackdown on terror. So big update coming in right now, Republic TV. Remember that Home Minister Amit Shah has been holding a lot of meetings in the past few weeks now, in fact past few months, when it comes to the security situation in Jammu and Kashmir. Let's go ahead and play out the reactions. इस इलाके में टेररिज्म तकरीबन खत्म कर दिया गया है। यहां पर अमन है। बचा हुआ जो भी टेररिज्म का अंदेशा है वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से जो मदद दी जा रही है उसकी वजह से है। रात में सिक्योरिटी फोर्सेस की हरकत कितनी हद तक बढ़ चुकी है आप लोग खुद देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तरह तरह के सेंसर्स, हर तरीके से पूरा प्रयास जारी है कि यहां पर अमन बना रहे। All right, let's go straight across to my colleague Gursimran joining us. Gursimran, take our viewers through the latest coming in. The 16 Corps commander has made that big statement, very clearly saying that there is terrorism coming from across the LOC. Not a surprise there, though, Gursimran, because we have seen how homegrown Pakistan has always been accused of feeding terror on its soil. So it's not a big surprise there. But go ahead, Gursimran, and take us through the latest updates that we're learning there.
See, Shivangi, without mincing the words, the senior army commander, the 16 Corps commander has made it amply clear that the terrorism whatsoever is left in Jammu region is because it is being supported from across the border. So it comes at a time when we are witnessing that there has been an infiltration of the terrorists, the Pakistani terrorists that are active in the area, and the operations have been intensified to neutralize them. And days ahead of meeting the Union Home Minister Amit Shah on the J&K security review, this statement coming from the White Knight Corps commander that looks after the line of control area in the Jammu region, that has been most happening area this year, because there has been 17 terror initiated incidents in the Jammu region in which 28 civilians and the security force personnel have been killed in action. So this shows that the army is very clear that it is the Pakistan and the Pakistan-backed terror sponsors that are sitting across the border, those who are supporting the terrorism. Otherwise, the terrorism has been wiped out. And those terrorists that are still active in the area, the operations have been intensified, as said by the White Knight Corps commander, Lieutenant General Naveen Sachdeva, that the night operations have also been intensified with the use of helicopters, drones, and also the night vision mechanism that is in place so that these terrorists can also be neutralized. But one thing is very clear, that the Indian army, without mincing the word, has made it amply clear to the Pakistan that the terrorists that are active here in Jammu and Kashmir, which Pakistan accuses India that it is the homegrown terrorism, it is not the homegrown terrorism, but it is the Pakistani supported terrorism that is there in Jammu and Kashmir trying to destabilize the region. But the security forces are trying hard to ensure that these perpetrators are neutralized and the peace is established permanently in Jammu and Kashmir. Okay, hold on, Gursimran, because I'll be coming back to you. We're getting some more updates. I'll come back to you in a moment, because we're going to shift our focus right now to what is happening. The Allahabad High Court will hear the petition of the SP MP Zia-ur-Rahman. Now, this is in connection with the Sambal violence which took place. The hearing is next year, 2nd January. A report telling you what we can expect next. Samajwadi Party MP from Sambhal, Zia-ur-Rahman Barq, has filed a petition in the Allahabad High Court seeking a stay on his arrest. This comes as Barq is accused of instigating the violent clashes that erupted in Sambhal on the 24th of November over the survey of a Mughal-era mosque. The SP MP has also sought quashing of the case against him. Meanwhile, the Allahabad High Court has pushed the date for hearing Barq's petition to the 2nd of January next year. A bench comprising Justice MC Tripathi will hear the SP MP's petition. In fact, the SP MP's side will be presented by senior advocates Imran Ullah and Vineet Vikram. This comes as Zia-ur-Rahman Barq also faces allegations over an electricity graft case in Sambhal. The UP police has imposed a fine worth 1.91 crore rupees on Zia-ur-Rahman Barq. There's some big breaking updates coming in right now. Some more breaking news from the National Investigation Agency. Now, we're coming to know that the NIA has charge-sheeted 2 accused in Jammu and Kashmir arms and explosive seizure case linked with the banned terrorist organization Bull Mujahideen. The charge sheet has been filed before the NIA Special Court Jammu against Wahid ul Zahur, the driver of the vehicle from which explosives, arms, ammunition were recovered, and another accused, Mubashir Makbul Mir. Both the charge-sheeted accused were in contact with their Pakistan-based handlers. Okay, so we're getting this big update coming in. NIA files charge sheet in arms seizure case, and the charge sheet filed before the NIA Special Court in Jammu. Big update coming in. Let's go to Gursimran. Yes, Gursimran, take our viewers through latest details that we are learning of arms seizure case. There has been a charge sheet filed by the NIA. Take us through these top updates coming in. See, the National Investigation Agency has filed the charge sheet in the case that was registered by the NIA police station in Jammu, and this pertains to the Hizbul Mujahideen's conspiracy of pushing weapons into the Indian territory. The case has been, the charge sheet has been filed again. 2 accused, Wahid Zahur, who is the driver, and the other one is Mubashir Mir. They are both operatives of Hizbul Mujahideen and has been active in the North Kashmir. This dates back to a couple of years back when the consignment of the weapons that was called by the top commanders of the Hizbul Mujahideen in the Kashmir Valley from across the border.
first consignment was recovered in the Rafiabad area of Baramulla, and second was recovered by the Srinagar police from the heart of the Kashmir Valley. And based on that, the case was handed over to the National Investigation Agency, the Hizbul Mujahideen, that has now lost its all the cadre with the recent encounter in the Kulgam, in which 5, including its longest surviving commander in the Kashmir Valley, Farooq Nali, was neutralized. Now the Hizbul, at that time, the Hizbul was trying to regain its cadre. They were trying to get in as many as weapons as they can from the line of control. But that modus operandi, that plan of the Hizbul Mujahideen was busted, and 2 recoveries were made, different sets of recoveries, one from the North Kashmir, other from the Central Kashmir. And based on that, the case was handed over to the National Investigation Agency based on the directions of the MHA, and now the charge sheet has been filed against the 2 accused. For more, stay tuned to Republic TV right after this short break. 13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردى ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين وللعرب، وأيضا الدعم الكامل الذي يتم تقديمه لهم من حكومة نتنياهو وسموتريتش وابن غفير على ليقوموا بهذه الأعمال. गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, यहाँ साहित्य संगीत नृत्य का संगम है, यहाँ स्वयं भगवान नटराज नटेश्वरी का संगम है। ऊर्जा वहाँ से आती है कि जब आप अपना अभिमान, अपना गर्व, अपना मद, एरोगेंस उसको शरणागत कर देते हो चरणों में। छाप तिलक सब छीनी, तो ये छीनना शब्द जो है वो एक जबरदस्त शब्द है कि हमने आपको अपने आप में ले लिया और हमने अपने आप को आप में ढाल दिया। क्या बात है, जोरदार तालियां।
उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रूंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रूंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردة ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين. Viewers, eyes are the windows to the world, and good vision is crucial for leading a fulfilling life.
Yet in India, thousands suffer silently due to preventable blindness caused by cataracts. This is especially true in rural areas, where lack of access to affordable healthcare forces many to live in darkness. Cataract surgeries, though simple and effective, remain out of reach for those who can't afford the treatment or travel to urban centers for medical care. However, help is at hand. Here's a story of how one institution is empowering the youth, restoring vision, and also contributing to Viksit Bharat mission. Take a look. In a country where millions live in darkness due to cataract, Akhand Jyoti Eye Hospital is becoming a beacon of hope. Operating in the heart of rural India, Akhand Jyoti is on a mission to achieve over 1 lakh cataract surgeries annually. Former Niti Aayog Chairman Amitabh Kant, recalling his visit to one of the facilities, reckoned that Akhand Jyoti is doing the unimaginable and lauded its efforts in helping millions out of curable blindness. Fortunately, I've seen the performance of Akhand Jyoti in Balia district of UP, where I had gone along with the Health Minister, Mr. Nadda, and some path-breaking and remarkable work has been done by them. They do about 100,000 eye operations. This is mammoth for any organization. Transforming the lives of 100,000 people as far as their eyesight is concerned is really a massive operation. And their target is to take it to 400,000. Now, this would mean that they will transform lives of people who will be able to see better. They will not require assistance and support, and they will therefore increase the production and productivity of India. That is what is required to become an economic superpower, and that can be done if we have thousands of Akhand Jyotis in India. For many, losing their eyesight means losing their livelihood and independence. But for those who step into Akhand Jyoti, it is the beginning of a brighter journey. With state-of-the-art facilities and a compassionate team, the hospital offers free surgeries to the underprivileged, transforming lives with every procedure. So I think it's a very noble cause because you have two, three elements here. One is of course the eye surgery, which is a very basic requirement in rural India, and especially in the state of Bihar where they are majorly located. So that is one aspect which they are serving. But more important is the fact that they are taking young girls who are from unprivileged and marginalized communities, training them, educating them, making them serve as a caregiver in this eye space. So they are creating that education, they are creating that jobs for those girls, and also helping them serve these with these eye surgeries. So I think all three of them together, it's a very, very noble cause and objective which they are fulfilling, and doing it in a very professional, corporate manner. So therefore it is far more efficient than. From farmers who can now tend to their fields, to children who can finally see the blackboard in school, and the elderly, Akhand Jyoti is restoring more than just eyesight. It is restoring dreams and livelihoods of the countless from the downtrodden communities. In face of despair, this hospital stands as a ray of life, providing small act of kindness that can create ripples of change. One surgery at a time, Akhand Jyoti now aims to operate over 3 lakh patients a year. Now that we have told you about the mission, meet the man behind the vision. Republic spoke exclusively to Mrityunjay Tiwari. Hear his story that brought Akhand Jyoti to life. Rarely stepped out of cities, but today runs one of the largest
eye hospital in the country, but at the same time, a hospital with a difference. Joining us is Mrityunjay Kumar Tiwari. He is the founder, project head and executive trustee of Akhand Jyoti. Mr. Tiwari, thank you very much for this special conversation with Republic TV. For those who do not know much about the work that you have essentially done over the last several years put together, would find it extremely intriguing as to how you started all of this, because I was reading somewhere that you said that for you the barometer of success was the Bombay Stock Exchange, and you perhaps did not see a world outside the cities. But today you're not only providing eye healthcare services to rural India, but also at the same time making it affordable for various people. I want to ask you this question first. How did it all start? Well, you've rightly said that the way I grew up in Kolkata and born and brought up, and my studies and everything, you see, I always felt that the Sensex and the foreign exchange reserves were the barometer of success of a nation, which actually I think I was a little bit, I would say, away from the truth. And a few chance events of visiting Bihar, and whereby seeing the poverty, where seeing girls being underage girls being working as maid servants, girls not getting proper education, that was something which prompted me to rethink the entire concept. And I really feel that when I started Akhand Jyoti about 18 years back, I felt that India is two countries actually, and majority of the Indians reside in rural areas, and until rural folks don't come up, until rural India doesn't come up, the double-digit growth aspiration which our country has may not be a reality. And that's what prompted us to actually focus on low-income geographies, especially the rural and tribal areas. Mr. Tiwari, could you help us recount that very moment when you decided that perhaps this is your calling? Yes, I must say that, until it was the call of my soul, which all of this happened. And, interestingly, many a times you are not able to see what really your soul wants, what you really want to do it in life. And in fact, I frequently remember Mark Twain's word that the two most important days in your life are the day you were born and the day you know why. I actually went on to find my why in this village called Mastishak in Bihar by starting Akhand Jyoti. And this is something which also dawned on me that one, of course, is that majority of the Indians lived in rural areas, and that need to be developed. But secondly, when you started understanding what really is the purpose of life, and I would say that it took me about 6 months to discover my journey of life. In Hindi, we call it the Shodh Yatra. And it was then I discovered that ultimately, whether I have a Lamborghini or whether I have an Ambassador or whether I have a Jaguar car, it won't go with me when the time comes to depart this world. Ultimately, we all will become legacies, and therefore one of the best thing is that can we leave a legacy which many people can be impacted. The story of Akhand Jyoti, as I understand, this is because of one such incident that you witnessed up front while one of your visits to Bihar, and particularly seeing that a farmer, a distressed farmer, could not carry on with his life only because a surgery was prevented in one of the district hospitals in Bihar. I want to understand from you, what made you really decide that perhaps the need of the hour is as simple as an eye hospital, because many wouldn't have really thought that as an important issue to address, because our country at that point in time and even today is plagued with several other issues. Yeah, you were correct. In fact, as I said, my life is all about three stories. The first story was in 2005, visiting a remote village in Bihar and witnessing girls being
traded, I would say, or going about as maid servants, underage girls who should have been in school. That pushed me to actually do something for low-income geographies. But as when I came to Mastichak, I wasn't even sure as to what I could do. So I just did everything which could help people. So whether it is distributing medicines, distributing free books, participating in pulse polio campaigns, basically everything under the sun. But that chance event of actually meeting this farmer who was being turned away because there was no surgeon in the district eye hospital at the time, and importantly he had a 10-year-old daughter who was with him, who was in school till 2 years back, but due to the blindness of the farmer, she was pulled out of school to take care of the blind person. Now, when that incident actually spurred me to starting reading up about blindness, visual impairment, and then I could understand that blindness and poverty are both a cause and effect of each other. They are interrelated. Higher pockets of blindness will have higher pockets of poverty, and vice versa. And it was then also I realized that blindness and visual impairment, unlike other interventions, is not merely a healthcare intervention. It is a livelihood restoration exercise. One 5-minute surgery done well and the person is back to work. What can be more beautiful than this? Pardon me saying this, Mr. Tiwari, there is a Cinderella story to all that you have said so far. And as a journalist, perhaps I would also like to know how it all started. And for many who are watching this interview, especially those who would have this at the back of their mind as to how do you really manage to do all of this? Because at the end of the day, running something of this nature and the magnitude at which you're basically running this, how is all of this possible? And if you can actually achieve this, why is it that others could not have done so? So what is it that we are really missing out here? I think the key factor is the will to be able to do it. And in Hindi, there is a word called Nishkam Bhav Seva. So, that's selfless public service. The moment you start such interventions with a particular agenda, it's more likely to fail. So I would say if you do not have an agenda and if the will is there to persevere and to keep on doing it, you will definitely succeed, because the biggest motivating factor is the beneficiary. It's not your size of the institution, it's not your own personal ego, it's not your teammates, it's the beneficiary which matters the most. And if the beneficiary is the driving factor, I can guarantee that you will always stick to the path, even if it means walking alone. When you see that something as simple as this, curing visual impairment, which perhaps with a single surgery could have altered the lives of many, do you believe that there are several such issues, very simple, but yet has now been complicated by various issues? Could be because of lack of political will, it could be because of lack of resources available. What, in your experience that you've had so far, requires an urgent attention and perhaps could actually change the life of many living in rural India? I think just like we talked about blindness and visual impairment and how one quick 5-minute intervention can do the trick, I think most of the complex problems which the country faces, especially the agrarian society or rural India faces, I think it's all about simplicity. You would probably find a very, very simple solution which is out there. You need not overcomplicate it. You need not be very unique in doing that. It's just identifying that what is that one element. If we stick to it, it gets the job done. I think the important aspect is not to overcomplicate. Just look at the simple solutions and importantly do it well. Because one of the things which I've also realized in my life while working at such a magnitude where we are doing 100,000 surgeries annually, 80% of which is free, that can only come up if the scale of execution and the speed of execution is right. Mr. Tiwari, one very interesting thing that I also found was your next initiative about women playing football. And
when you had a chance encounter with one such girl who was actually playing football, and when you asked the question as to how did they learn football, that's a very interesting anecdote which I perhaps would like you to share this with our viewers and talk a little bit about the second initiative that you essentially started and how it all perhaps panned out over the last few years. Actually, the Akhand Jyoti Football to Eyeball Girls Education Program is in itself so unique, but also it binds together the eye care work, I must say. And being a former professional footballer myself, in 1997 I got injured in a match. I fell down, had slip disc, and I had to leave the game physically. But in my wildest imagination, I would have never dreamt that 12-13 years later, football will come back to me in my life in the form of these girls. This small incident where I was meeting the principal of the local girls' school to invite him for a program at the hospital. Till that time, by the way, we didn't have a single women employee at the hospital, and I tried my best to get women and girls to work, but somehow they were more comfortable in the paddy fields or restrained to their houses. And it was that chance event when I saw this 3 girls wearing salwar suit kicking around a roll of paper. I was quite amazed. And upon asking, they said that they're playing football and they would climb up the rooftops of their houses and see their brothers playing in the nearby football pitch. And that's how they learned football. And it was then struck, can we use football as an icebreaker to draw out girls from their houses and give them an alternative career? And so I went to these houses of these 3 girls. It took me almost 6 months to get 2 of them in. But the promise was very clear that from the parent's side, he or she would make sure that the girl is not married before 21 years of age. And Akhand Jyoti will sponsor the cost of her education, especially optometry education, and they call the optometrist junior doctor back in the rural areas. By using football, we've been successful in actually getting over 500 girls at the moment in our system, whereby they not only play football, stay full-time in our hostels, doing a 5-year course, which includes a 4-year degree course in optometry, and then they get a guaranteed job at any of the 47 centers of Akhand Jyoti, which is there, small or big. And importantly, they are also developed and groomed to become leaders of the organization, and ultimately they also become the social change agents or role models for their respective communities. Well, you should be applauded for being able to break the glass ceiling. And this I'm talking with some amount of responsibility, especially given the fact that to be able to achieve this in rural areas and particularly breaking the shackles of patriarchy is a huge achievement in itself. Mr. Tiwari, it's understandable that you may have come across several people who may have thanked you for the kind of work that you've done. But today perhaps it's also opportune to ask you this, that what is that one compliment or one story that has actually touched you the most in your journey over the last almost 2 decades now? Something that perhaps you will never forget, that one compliment or that one story that you believe has altered the way you look at life. This is a young girl called Chavi, who basically Chavi and Chaya are twins. So when they came to the hospital 13 years back, when they were about 13 years old, and after a year, I remember her saying that एक दिन मैं भी hospital चलाना चाहती हूँ. I also want to run a hospital on my own one day. And today she is one of the leading leaders in Akhand Jyoti. I still remember when the girl actually was new and she didn't have enough confidence. The very fact that her aspirations
became such that she was thinking of leading a large-scale impact program. That is something which touched me so much that ultimately I didn't have to change. I thought of the same way for my biological daughters. I thought of the same way, I used to think of the same way for girls as I was before coming to Akhand Jyoti. I didn't have to take the big leap of faith. It is these girls who had to take this big leap of faith. It was they who had to change. It was they who had to come out of their houses. And it was they who had to shatter the glass ceiling, as they say. And so it is, whenever I look at them, I just admire their tenacity to actually do well. That's been something which always resonates in my life. Mr. Tiwari, as I understand, for a man like you, you would be quite unstoppable and perhaps not be satisfied with what you have achieved so far. What is in your mind as what next? What's the next phase of growth, if I may ask you? You see, my dream is absolutely clear that in rural and tribal areas, none of our brothers or sisters or elders should live a life of darkness. They must have access to sight. The right to sight is something which everyone must get. And secondly, every girl in the rural and tribal areas is a potential change agent, is a potential leader, is a potential Draupadi Murmu. And I must say that to bring all of them before the community, to bring all of them to realize their potential, that is the aspiration. And it is not because it's a personal ambition for me. The need is there. The huge unmet need of people who are afflicted with blindness and visual impairment, that in itself mandates institutions like Akhand Jyoti to actually treble, quadruple their output, to exponentially increase their impact. And therefore, Akhand Jyoti has actually embarked on a strategic goal called Vision 2030. Under the Vision 2030 program, by the next 6 to 7 years, we aspire to deliver 2 million eye surgeries, 80% free of charge, and from 100,000 surgeries annually, move on to 400,000 surgeries annually, cover more states, not only restrict to Bihar and Uttar Pradesh, cover more states, also give primary eye care to 1.2 crores individuals in their villages, and the Football to Eyeball Girls Education Program, which currently has 550 girls, should go up to 1,500 girls. That is the aspiration for the next 5-6 years. For many youngsters who are essentially watching you, perhaps who would be a little wary, nervous about taking a giant leap in their life, particularly about starting something different, what would you like to tell them, and how exactly do you think they would be in a position to muster courage to take forward what they have dreamt? Just 3 things I would mention, and that is, I'm talking from experience. First of all, the will has to be there. That's paramount. Without that, it's not going to happen. Second is that ultimately you must remember that everything is in your control. And it all starts with the mind. If you are open in the mind, if you have an open mind that everything is possible, I think you can do anything. It's just that we get bogged down by problems. We should rather focus on solutions. So my advice would be to become more solution oriented rather than, of course you need results, but I would say becoming solution oriented will help you actually think of long-term outcomes. And thirdly, and most important thing is, just run after excellence. You don't have to think about name, fame, money, etc. Just run after excellence. If the cause is correct and you run after excellence, you will definitely do well. And I must say that you can actually get a cue from the USP of Akhand Jyoti, which is to deliver quality at scale in low resource settings. And I'm sure that it is doable. We have shown the way. The will has to be there, the execution has to be there, and the tenacity has to be there.
13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। Alicia, that bite is in Hindi. Do you need a translation? Yes. Okay, let me just quickly do it. It is very important to not treat parents as cliches. It's very important to make them feel important. It's very important to give them happiness. It's very important to give them joy. हम parents को ड्राइंग रूम के एक फर्नीचर के हिस्से की तरह समझने लगते हैं कि ये बूढ़े हो गए, ये रिटायर हो गए, अब ये किसी काम के नहीं रहे। मेरे एक फिल्म में बड़ा अच्छा डायलॉग था कि नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, ज़िंदगी से नहीं। Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. Your
watching Republic. We are live and breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest coming in this Sunday. It's a blockbuster Sunday, viewers, because PM Modi is on a 2-day visit to Kuwait. He is the first premier in 43 years to visit Kuwait, and he also addressed the Indian diaspora there, where he addressed the Indian diaspora saying that he's here to celebrate their achievements. All this and much more coming up, but as usual, the headlines. Let's get started. के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। Prime Minister Modi on a 2-day visit to Kuwait addresses Indian diaspora, hails India's achievements. PM's power-packed Kuwait visit day 2 today to attend spectacle to defense deals and hold key bilaterals. There are groups within India who are aligning with the anti-India groups operating from outside the country. This is known. And then we have countered them politically and successfully. After Fadnavis's big disclosure, Kiran Rijiju says groups in India are hands in glove with anti-India forces. Amid face-off over Baba Saheb Ambedkar, Karnataka Congress Minister targets Home Minister, says Shah is bit by a mad dog. Multi-story building collapses in Mohali, 1 killed, several trapped, rescue operations are underway. Like we told you, PM Modi is in Kuwait. That is right. After 43 years, we see an Indian premier in Kuwait. That means that there has been a big push coming in between relations between India and Kuwait. We see that also PM Modi addressed the Indian diaspora and he got a very warm welcome. PM Modi is there on a 2-day visit. And he has been invited by the Kuwaiti Emir. Here's a report highlighting what's happened so far, what PM Modi told the Indian diaspora, and what can we expect in the next few hours. भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। Prime Minister Modi is on a 2-day visit to Kuwait. Because of you, the Indians are so proud. You made us proud. You take India to the high level. He is the first Indian Prime Minister in 43 years to visit Kuwait. While addressing Hala Modi event, he hailed India's achievement overseas. आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है।
आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। Speaking about the partnership between the two countries, Prime Minister Modi addressed the need for skill, innovation, technology and manpower. He highlighted how India is working towards providing that in partnership with countries like Kuwait as well as other nations like Italy. भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। Prime Minister Modi spoke about India's digital forward movement. He said that India has become digitally smart and this is only the beginning. आज भारत दुनिया के सबसे डिजिटल कनेक्टेड देशों में से एक है। डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए लोगों के पास डिजी लॉकर है। एयरपोर्ट पर सीमलेस ट्रैवल के लिए लोगों के पास डिजी यात्रा है। टोल बूथ पर समय बचाने के लिए लोगों के पास फास्टैग है। भारत लगातार डिजिटली स्मार्ट हो रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। Ending his speech, he invited the Indian diaspora to attend the Mahakumbh. मैं आप सभी को विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। नए साल का पहला महीना 2025 का जनवरी इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, करीब 1.5 महीना। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। He also met the Indian diaspora in Kuwait, which has immensely contributed to strengthening the bonds of friendship between the two nations. Prime Minister Modi also shared a heartfelt meeting with 101-year-old Mangal Sen Handa, a former Indian Foreign Service officer. Reports say that discussions are underway with Kuwait on a bilateral investment treaty and a defense cooperation pact. On day 2 of his itinerary, Prime Minister is scheduled to meet the Emir, the Crown Prince and the Prime Minister of Kuwait. Alright, let's go straight across to our guest joining us live. Geopolitical analyst Pathikrit Pine join us live right now, and I want to go across to you. Thank you for joining us, Pathikrit Pine. Now, I just want to ask you one question. The first question is, and we saw that entire address, a bit of the address that he made to the Indian diaspora, where he says, in the entire address, somewhere he had said that India has the skill for the new Kuwait. And do you think that Kuwait has finally recognized that India has a right skill for Kuwait, given the fact we have seen that there has been a warming up of ties between India and Kuwait, especially when we see PM Modi visiting there, the first premier to do so in 43 years' time?
Good morning, Shivangi. Yes, you are absolutely right. There are few things I wanted to say initially. Number one, Kuwait might be a small but a very influential country in the Middle East. And if you look at the spectrum of India's workforce in Kuwait, which is the Indian population is almost like 21% of the total population of Kuwait, 30% of the total workforce of Kuwait is of Indian origin, and majority of those workforce are not laborers. They are actually skilled professionals who have got opportunities in Kuwait. As you rightly mentioned, if you look at it from this perspective, many countries like Kuwait in the Middle East are trying to diversify their economy beyond their dependence on the fuel economy or the crude oil economy that they have. So in that case, whether you talk about telecommunication, whether you talk about other areas, including artificial intelligence or technology related areas, I think Indian workforce does play a critical role. Also, the fact that the Prime Minister has scheduled to visit the labor camps where the workers actually stay, for mostly who are into construction works, actually also highlights and focus on the fact that India is very much concerned and cares about the Indian diaspora who go there to work in difficult and harsh conditions, and they send back the remittance. We must understand over the last 10 years, Prime Minister Modi has played a critical role in terms of leveraging India's expatriate population as an extended arm of India's foreign policy, as an extended arm of India's foreign office. So they play a very critical role for India, not just in terms of remittance, but also in terms of enhancing India's influence and culture. So Kuwait might be a small country in terms of size and GDP in Middle East, but it's a very influential country in Middle East. Over the last 10 years, if you see whether it is Saudi Arab, whether it is United Arab Emirates, whether it is Bahrain or Kuwait, these countries have fundamentally altered their perspective towards India. They do not look at India merely as a country from which blue-collar workers come. They look at India as a source for technology, as a source for skilled professionals, and as a country which is today recognized as the fifth largest economy of the world, one of the major tech startup hubs of the world, and a country which has shown that it has the capacity to manufacture at a global scale, whether it's vaccines or other things, and give it to the world when they require it desperately. So there is absolutely no doubt that Prime Minister Modi has played a critical role in altering the perspective about India. And also, as you rightly mentioned, countries like Kuwait do recognize today that for the future, it is not just the blue-collar workers. They would require professional workers, high-tech workers, and the only country which has the capacity to embed traditions, technology together is India. And last but not the least, Indians who go there to work, the Indian diaspora, are some of the most, apolitical and, peaceful people. They go and they just do their work. They do not get involved in any kind of unsocial activities, anti-national activities, anti-social activities. So you would see across the world, including in the Middle East, people actually respect the Indian workers who go there. And invariably, Prime Minister Modi also has played his part in terms of enhancing their stature over there. Back to you, Shiva. All right. Thank you for joining us. Patrick Pine joining us, geopolitical analyst, getting us a fresh perspective on the visit of Prime Minister Modi in Kuwait. We'll be tracking the story very closely. We have to move ahead right now because we're getting some more breaking updates coming in. And we're coming to know that, unfortunately, viewers, the death toll in the Punjab Mohali building collapse has now risen to 2. That is the update that is coming in. A very unfortunate incident has happened where a multi-story building had collapsed. Another body has been recovered in the Mohali building collapse, taking the death toll to 2 now. Rescue operations are underway since around 16 hours and counting. Indian Army and NDRF are working on war footing to rescue whoever is still trapped. So there's a lot of people still trapped under the debris. Those pictures are coming in right now, viewers. You can see how much of debris is there. And one body has been pulled out. You can see that picture on the left hand of your screen. Very unfortunate incident which has occurred. I want to go to my colleague joining us, Lalit, who has been on the ground, and he is right outside where
This tragedy has occurred where a building has collapsed, and he has been getting us the ground report. So Lalit, go ahead. Rescue operations are continuing. It's been more than 16, 17 hours now. The death toll has now risen. Lalit. If we talked about from the past 16 hours, the rescue operation is going on in Mohali. Let me show you the visuals also. You can see in the visual that on the war footing, the Indian Army and the NDRF can be seen rescuing all the people who have been struck under these rubble and debris. From the past 16 hours, if we talk about the death number have increased to 2. Just around 15 minutes before, one dead body was being recovered. Now the toll has increased to 2. If we talk about the number of persons who have been struck there, as per the local, around 4 to 5 persons might have been struck here. And other than that, if we talk about the whole building collapsed when near the building the basement digging was being done, which somehow disturbed the basement, and the whole building just collapsed like the spare of cards here in Mohali. So these are the visuals where you can see that the rescue operation is going on. The JCB 4 to 5 machines are doing the rescue work, trying to remove the debris of the building, and you can see that the work can be seen doing on war footing. So 2 dead bodies have been recovered. A girl native from Himachal Pradesh, Theog, she was brought dead yesterday, and around 50 minutes before, one more dead body has been recovered from these debris. Back to the studio. All right, Lalit, I will be coming back to you. Keep tracking those developments from the ground as we keep tracking the story from Mohali, where a multi-story building has collapsed and rescue operations are underway. We're going to move ahead right now. We're getting some more updates coming in. A big breaking update coming in. Rahul Gandhi summoned by UP court over wealth survey remark made during Lok Sabha election campaign. The date is out. The date is 7th of January 2025, next year. A big update coming in. And this goes back to the campaigning that Rahul Gandhi did during the elections. Rahul Gandhi said that the SCs, STs, OBCs and minorities make up nearly 90% of the total population of the country but struggle to find jobs. And we are coming to know that he has been summoned by the Bareilly District Court over a statement he made on the economic survey during the Lok Sabha elections, and he has to appear on January 7th. This is the MP MLA court which has asked him to appear on January 7th. So that is a big update coming in. And while campaigning for his party during the election campaign, Rahul Gandhi claimed that the Congress party would conduct a comprehensive financial and institutional survey if it forms the government in the centre. And over this, he has been now summoned. I want to go ahead, viewers, because we're getting some more breaking updates coming in. Let's go to the 2 more breaking updates coming in. Getting a back-to-back breaking updates. We're getting you a big update. There has been a khatak-khat blowback in Himachal Pradesh. Sukhu government is yet to pay dearness allowance. A total of 8,643 crore arrears of the Himachal Pradesh government employees and pensioners are pending as on July 31st this year, while 3 installments of dearness allowance are yet to be released. And this is coming in as CM Sukhvinder Singh Sukhu told the State Assembly on Saturday, replying to a question of BJP legislators Randhir Sharma and Janak Raj. The Chief Minister said that while the central government gives 53% of DA to its employees, the Himachal government employees gets DA at 42% of their basic salary. He said that this as on July 31st, the payments of rupees 12.83 crore with respect to government employees and 57.92 crore with regards to pensioners on account of reimbursements of medical bills were also pending. So, getting you all these updates coming in. We're taking a short break. Do not go anywhere. We are live and breaking this Sunday. And you can see that the khatak-khat blowback is being seen in Himachal Pradesh. Stay tuned as we keep getting you the biggest updates.
उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। The deadlock between the BCCI and the PCB has finally come to an end, and the ICC's efforts have finally paid off. The Champions Trophy, as confirmed by the ICC, will be played in the hybrid model. The time was running out for the ICC considering the financial implications of the marquee event. The stakeholders of the Champions Trophy were also not very happy with the ICC considering the fact that they were not being able to tap into the financial gains of such a big event. The Board of Control for Cricket in India has already made it very clear that the Indian team will not be travelling to Pakistan under any circumstances for the Champions Trophy. The Pakistan Cricket Board tried its very best to fight back in the name of national interest, but it had no answers to the issues related to the security concerns in the country. To make matters worse, the Sri Lanka A team also pulled out of its tour midway, citing serious political unrest in the country. The ICC Samajwadi Party MP from Sambhal, Zia-ur-Rahman Barq, has filed a petition in the Allahabad High Court seeking a stay on his arrest. This comes as Barq is accused of instigating the violent clashes that erupted in Sambhal on the 24th of November over the survey of a Mughal-era mosque. The SPMP has also sought quashing of the case against him. Meanwhile, the Allahabad High Court has pushed the date for hearing Barq's petition to the 2nd of January next year. A bench comprising Justice MC Tripathi will hear the SPMP's petition. In fact, the SPMP side will be presented by senior advocates Imran Ullah and Vineet Vikram. This comes as Zia-ur-Rahman Barq also faces allegations over an electricity graft case in Sambhal. The UP police has imposed a fine worth 1.91 crore rupees on Zia-ur-Rahman Barq. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردى ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين وللعرب، وأيضا الدعم الكامل الذي يتم تقديمه لهم من حكومة نتنياهو وسموتريتش وابن غفير على ليقوموا بهذه الأعمال.
Hi there, welcome back. This week on Get Me Right, we take a deep dive into India's First Amendment of the Constitution, why it made news this week, and what's its connection with the fundamental right of freedom of speech and expression. Second, a war broke out in and outside of Parliament over who owns the legacy of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, father of India's Constitution. The stalwart leader who's seen by many as dwarfed by the Congress ecosystem to make Pandit Jawaharlal Nehru look great, like it happened with so many other leaders. The Congress, of course, believes that Ambedkar's constitution is under attack from the BJP dispensation. What's the truth? We shall explore. And finally, in our international segment, we look at the rise of a new star on the right-wing firmament of world politics, Argentina's President Javier Milei, and what he has achieved with his chainsaw. Let's get going. This week saw the culmination of the winter session of Parliament with the usual pictures of protests and pandemonium and some limited legislative business getting done. The high point, however, was the discussion that took place on the constitution of the country, the occasion marking completion of 75 years of its working. What caught my attention during the constitution debate was the focus on the First Amendment that happened in 1951 by the government of Pandit Jawaharlal Nehru. Prime Minister Narendra Modi highlighted how the First Amendment was an attack on the idea of freedom of expression. Let's understand why the PM said so. 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था। It's an interesting story of multiple layers of contrasts and ironies. Barely a month after the Constitution was promulgated on January 26, 1950, two cases came up before the Supreme Court of India. One was in connection with the ban on the circulation of a left-leaning magazine called Crossroads. The ban was imposed by the Congress government of the Madras Presidency, fearing a communist takeover in what was effectively the Kerala part of the presidency, as the Crossroads sought to amplify the Marxist narrative. Its editor, Romesh Thapar, who was also the brother of Marxist historian Romila Thapar, approached the Supreme Court against the ban. Similarly, in Delhi, the Union Territory Administration imposed a censorship on the RSS mouthpiece organizer following a series of reports that the magazine carried on the migrants' crisis along India's eastern frontier. Refugees were trickling in following anti-Hindu violence in parts of what was then the East Pakistan and is now Bangladesh. The organizer asked some difficult questions, and the government passed the pre-publication censorship order. The organizer case too reached the top court, roughly the same time as that of the Crossroads. Both invoked freedom of speech and expression enshrined in Article 19 of the Constitution. The Supreme Court ruled with a majority of 5-1, scrapping both the ban and the censorship, holding that the two publications in no way affected national security, a premise that was used by the Congress governments in their orders. Though given separately, the verdicts were a severe indictment of the Nehru government on the issue of liberty of the press and the idea of the freedom of expression as enshrined as a fundamental right under Article 19(1)(a) in the original Constitution. Imagine the hegemony of the Congress under Prime Minister Nehru. The government brought in an ordinance to nullify the effect of the Supreme Court verdicts and followed it up with a proper amendment, which effectively sits as the First Amendment to the Constitution of India. The amendment introduced limitations on the freedom of speech and expression, imposing reasonable restrictions through insertion of Article 19(2) in the Constitution. Look at the irony.
The First Amendment to the United States Constitution makes it impossible for the US Congress or even the President to pass any laws that put any kind of restrictions on the freedom of press, making it absolute in America. While in India, that paragon of liberalism, Pandit Jawaharlal Nehru, under him, the First Amendment brought in limitations on the same press. It does not end there. As I mentioned, the Supreme Court decided both the cases with a majority of 5-1 against the Nehru government. The majority judgment in both the cases was authored by Justice M. Patanjali Shastri, and Justice S. Fazal Ali dissented in both cases. Months after the verdicts, the then Chief Justice of India, Justice Kania, died of a heart attack while in office. Nehru government opposed the appointment of the next senior judge, Justice Shastri, who was next in line as per the seniority principle. Prime Minister Nehru acquiesced only after the entire bench of 5 justices threatened to resign in protest. On the other hand, Justice Ali, who had dissented in favor of Nehru government, was bestowed post-retirement sinecures that continued till his death. His term was first extended by a year in the Supreme Court, following which he was appointed the governor of the state of Orissa. After this, he was made the head of the all-important States Reorganizing Commission, an assignment that came with cabinet minister rank. Hold on, it does not end there. Justice Ali was bestowed the Padma Vibhushan, India's second highest civilian award. Guess, in honor of him having dissented in the freedom of press case and then sent for his second gubernatorial stint to Assam, where he died in office in 1959. Talk of committed judiciary. It started with Nehru himself reaching some levels of brazenness under Indira Gandhi, as we know. Remember, it was a caretaker government. The first general elections were yet to be held in 1952. Pandit Nehru had people's heart and mind, but not the mandate yet. History describes Pandit Nehru as impulsive, impatient, impromptu. He was also imperious, an example of which was given by Finance Minister Nirmala Sitharaman when she asked the Congress benches during the same debate in Parliament as to why Bollywood greats Majrooh Sultanpuri and Balraj Sahni were arrested in 1949. Majrooh Sultanpuri and Balraj Sahni were both jailed in 1949 itself. For what mistakes, sir? During one of the meetings organized for the mill workers in 1949, Majrooh Sultanpuri recited a poem that was written against Jawaharlal Nehru. So that is the level of tolerance, and today we hold our constitution in our hand, go about it and say freedom of speech. There is sense of fear in the country. Majrooh Sultanpuri didn't feel it, Balraj Sahni didn't feel it, but the history repeats when it comes to the Congress party. Both Sultanpuri and Sahni were part of the left-leaning progressive writers movement. Sultanpuri is credited with converting commercial film songs into sheer poetry. Sahni's film Garam Hawa is still a benchmark of partition filmography. During a workers' protest in Mumbai in 1949, Sultanpuri recited a poem highly critical of Nehru's decision to remain part of the British Commonwealth despite independence. It was not liked, obviously, and an arrest warrant was issued against him. For 2 years, he dodged authorities by going underground. Arrested in 1951, Sultanpuri served a full year in jail as he refused to apologize to Nehru. Similarly, Sahni was lodged in jail for 6 months on charges of inciting violence while participating in a Communist Party rally. Imagine the imperiousness of Nehru that he did not heed his own warning. Back in 1937, Pandit Nehru wrote an essay titled Rashtrapati under the pseudonym of Chanakya. The essay was published in a Calcutta, then Calcutta, now Kolkata-based magazine, The Modern Review. In this essay, Nehru described himself as some triumphant Caesar who might turn dictator with a little twist. There's a reason why he might have felt a bit like Caesar. Nehru had been elected Congress president for the 3rd time that year.
The Congress historiography and even hagiography projects that writing of Nehru as a warning to his own people against hero worship. The episodes of the First Amendment and Majrooh Sultanpuri and Balraj Sahni show he forgot his own warning. And you know what? The poem that Sultanpuri had recited had one line which described Nehru as Hitler ka chela. Now imagine the number of times Prime Minister Narendra Modi has been called Hitler, and not just his chela, and yet there are no arrests. Moving on, but staying with the parliament. Principal opposition party, the Congress, kicked some dust on a clip of Union Home Minister Amit Shah, in which he goes after the Ambedkar love of the opposition. What Shah meant was that the use of the name of the father of our constitution as a talisman by the opposition was not taking them anywhere. What it got interpreted as was totally different, and for a bit put the BJP on the back foot. Congress sought Shah's resignation, and the ruling party doubled down. Prime Minister coming out with a tweet storm on the contrast between Congress's treatment of Baba Saheb Ambedkar in his lifetime and the subsequent deification of the stalwart leader we see now. While the war on Ambedkar might not end anytime soon, it's a fact that Ambedkar was not part of the pantheon of the freedom leadership which Congress ecosystem promoted till he was alive. His frequent run-ins with Mahatma Gandhi, the Pune Pact, and the standoff over the London Round Table Conference is well known to the students of freedom struggle. Nehru carried those misgivings and included Ambedkar in his cabinet only on the insistence of the Mahatma. Ambedkar being denied a Congress ticket in 1942 general elections, Ambedkar being denied a memorial post his death, Ambedkar being denied a Bharat Ratna by the Congress are facts of post-independence history. It's also a fact that India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, was bestowed on Ambedkar only in 1990 by the National Front government of Prime Minister VP Singh, which was in alliance with the BJP at that time. While the jousting match between the BJP and the Congress over the legacy of Baba Saheb Ambedkar is understandable, what drew my particular attention during the same debate, however, was the use of slogan Jai Meme by AIMIM leader Asaduddin Owaisi. निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर उठा के चले सर हम जिस्म व जान बचा के चले बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए सर हम जो चंद अहले जुरू तेरे नाम लेवा है इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है संविधान सच्चा है जय भीम आइन जिंदाबाद. The barrister from Hyderabad is an astute politician and very open about his Muslim politics, just like the BJP is about its Hindutva. Let's look at some of the aspects of Ambedkar through his writings, which make one wonder if Owaisi has done even basic due diligence on Baba Saheb. Ambedkar's thoughts on Muslims, Islam, and the idea of Pakistan are encapsulated in his book called Pakistan or the Partition of India. I shall quote extensively from the book to create a profile of Ambedkar for Owaisi's appraisal. In the chapter, Must There Be Pakistan, he says, India's unity is as ancient as nature. Within this geographic unit and covering the whole of it, there has been a cultural unity from time immemorial. In any discussion of Pakistan, the fact cannot be lost sight of, namely, that the starting point, if not the governing factor, is the fundamental unity of India. On Savarkar, Ambedkar, writing in the same chapter, found the Hindutva leader to be one up on Congress on issues of clarity with the Muslim question. Here's the quote. This alternative of Mr. Savarkar to Pakistan has about it a frankness, boldness, and definiteness which distinguishes it from the irregularity, vagueness, and indefiniteness which characterizes the Congress declarations about minority rights. Mr. Savarkar's scheme has at least the merit of telling the Muslims thus far and no further. The Muslims know where they stand with regard to the Hindu Mahasabha
On the other hand, with the Congress, the Muslims find themselves nowhere because the Congress has been treating the Muslims and the minority question as a game in diplomacy, if not duplicity." Unquote. Baba Saheb had strong views on the Muslim sense of separatism and wanted the creation of Pakistan to be incumbent upon a complete transfer of population. He thought that any partition that leaves Muslims in India would not solve the communal question. He panned the social and political aggression of Muslims and worried out loud about the complete absence of social reform from within the Muslim society. According to him, the burqa, and this is important for the hijab activists of the Muslim community in India today, the burqa was the most hideous sight one can witness in India. Let me quote extensively on what Ambedkar thought of the impact of burqa on Muslims or Muslim women. Such seclusion cannot but have its deteriorating effects upon the physical condition of Muslim women. Parda deprives Muslim women of mental and moral nourishment. Being deprived of healthy social life, the process of moral degeneration must and does set in. They lag behind their sisters from other communities, cannot take part in any outdoor activity, and are weighed down by a slavish mentality and an inferiority complex. The physical and intellectual effects of parda are nothing as compared to its effects on morals. Unquote. That's Ambedkar on Islam, Muslims and Pakistan, Mr. Owaisi. Now let's delve a bit on the Jai Bhim part of the Owaisi sign-off in Parliament. When it came to leaving Hinduism because he felt persecuted as a Dalit, Ambedkar made a clear, conscious choice after due deliberation to move to an Indic faith, Buddhism. He toyed with the idea of converting to Sikhism, but gave up on realizing that even the Sikh society had hierarchies which would not easily accept a convert as an equal. Islam, despite its claimed egalitarianism, had developed its own complex class structures in India, and what riled Ambedkar most about Islam was the institutionalized othering of non-Islamic faiths, of treating followers of other religions as inferior to those who followed Islam. Similarly, in the case of Christianity, Baba Saheb thought that like it failed in the case of slavery and Negroes, it would fail to ameliorate the situation of the untouchables of India. In the case of Christianity, he was also particularly concerned about the fact that an increase in Christian faith followers in India through conversions might strengthen the British rule in the country, and hence chose Buddhism. Somewhere at the back of his mind would have been influences like that of the Marathi Brahmin teacher, Krishnaji Keshav Ambedkar, who gave him his Brahmin surname, or Sharda Kabir, his Brahmin wife, who became Savita Ambedkar and provided him companionship, or the Maratha rulers of Baroda state, the Gaikwads, who provided him ample opportunity to curate his career on merits within the framework of the same Hindu society. Make your own readings on Ambedkar now. उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, और घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
Moving on to our last segment. There's a new darling of the global right. No, not Elon Musk. Musk was in November. This month it's Javier Milei, president of Argentina. In a press conference in the capital Buenos Aires this week, Milei announced that for the first time in the last few decades, Argentina was reporting a fiscal surplus. With this, Argentina also came out of recession the country was in for a few years. The milestone marked 1 year since Milei entered office with a promise of shock therapy to the country's ailing economy. A self-declared anarcho-capitalist, Milei's lack of government experience, unkempt hairdo, the Rolling Stones looks, and the free market missionary zeal did not inspire much confidence initially. Redujimos los ministerios de 18 a 8. Eliminamos casi 100 secretarías y subsecretarías. Cerramos más de 200 áreas que tenían funciones duplicadas u obsoletas. Congelamos el salario de funcionarios de alto rango desde enero hasta la fecha. Cerramos Telam, que funcionaba como una agencia de propaganda kirchnerista y solo este año proyectaba una pérdida de 20.000 millones de pesos. Echamos a 34.000 empleados públicos y les estamos tomando examen de idoneidad a los demás. A socialist cocktail of welfare programs, pricing controls, and subsidies had ruined the Argentine economy over decades. Deficits led to huge borrowing. Those borrowings led to defaults. Defaults scared investors. And the deficits also led to printing of more money, resulting in runaway inflation. The road to ruin, as always happens, was paved with good intentions of socialist politics, not unfamiliar to many nations around the world. On day one, after assuming office, Milei reduced the number of ministries from 21 to 9, abolishing the education and women and child ministries, among others. Massive job cuts were implemented as Milei set out to implement his slash and burn campaign promise. Him holding a chainsaw signifying the deep cuts he would inflict on profligate government spending has become an icon of modern right-wing economics these days. For example, he stopped inflation-adjusted university grants, leaving some universities struggling to keep their lights on and elevators running. He downgraded the Culture Ministry, closed the National Theatre Institute, shuttered a state-funded news agency, and defunded scientific research. Public works projects were suspended, leaving cities littered with white elephant structures and an estimated 200,000 construction workers out of jobs. Second, swimming against the global tide of de-dollarization, Milei got the dollar back as the exchange currency for Argentina. The real target of the move was to put a stop to the central bank's propensity to print the home currency peso and thus keep the fire of inflation burning. With that temptation out of sight, inflation figures are down. A year earlier, Argentina was on the verge of economic and social collapse with near 300% annual inflation, collapsing peso and 40% of its population living below the poverty line. The road was obviously not easy. In the immediate aftermath of the expenditure cuts, job losses, and chainsaw on subsidies, inflation actually spiked. Poverty increased. People flocked to food banks and soup kitchens. Costs of public services went up, and protests erupted across the country. But Milei persisted. To be honest, it's too early to call it a mission accomplished. Argentine economy is still anemic. Half the people are still below the poverty line, and it's going to be a test of nerves. For the time being, Milei is soaking in fame under the sun. America's President-elect Donald Trump serenaded him at his Mar-a-Lago residence last fortnight. Milei claims that his slash and burn has actually inspired Trump to set up the Department of Government Efficiency, now headed by Musk, with similar objectives for the United States. Giorgia Meloni granted him with honorary citizenship of Italy last week. What are the lessons for India in the Milei experiment? Let me say this. There's a scope in India to prune government spending while we are still in control of the numbers. The debt to GDP ratio looks reasonably good. The fiscal deficit is in line with the glide path envisaged under the Fiscal Responsibility Act. The Modi government's post-COVID welfarism
on food and housing subsidies seems to be not pinching much. This is the time to perhaps look at some low-hanging fruits. For example, can the three ministries of civil aviation, ports, shipping and waterways, and roads and transport and highways be clubbed together into a jumbo ministry of transportation? Maybe at some stage even railways could be merged. After all, the independent rail budget was merged with the main union budget a decade ago and nobody complained. Can the four ministries of power, renewable and non-renewable energy, coal and mines, and petroleum and natural gas be clubbed for synergies on India's energy security, even as we slim the public expenditure by at least 20 top bureaucrats' salaries and pensions? Can the food processing industry ministry be merged either with agriculture or industries? Can the ministries of forests, environment and climate change be clubbed with that of Jal Shakti? For the Jal Shakti ministry, the argument could be that the project of getting Har Ghar Jal is being done in mission mode. So it's more like a special purpose vehicle. In which case, the government should put a date by which the ministry should cease to exist once the project is over. All pipelines are laid and all taps running with water in each home in the country. Why have separate ministries for industries, micro, small and medium enterprises, chemicals and fertilizers, heavy industries and steel? Just merge the five into one. Another 20 bureaucrats are spared from their onerous responsibilities. Actually, much more. Those are only the top. There is logic to the expansionism of ministries. One, that the mission mode principle, like it applies to the Jal Shakti ministry. And second, the political imperative of accommodating allies and political interests. Like the BJP never tries of underscoring how under the Vajpayee government, India got a ministry dedicated to tribal affairs, or how under the present Modi government, there is a dedicated ministry for Ayurveda and skill development. I guess abolishing the last one would be a good beginning. You don't need the government to upskill society. People would do it on their own. A division in the education ministry can handle whatever the skills ministry is doing in the present. If not the Modi government, I wonder who can achieve minimum government, maximum governance in India. Thanks for watching. उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रूंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रूंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। Asia's largest news headquarters. Setting the agenda for Bharat. You're watching Republic.
viewers, we're now breaking. I'm Shivangi Shukla, getting you the latest coming in. And we keep a focus on what's happening in Punjab's Mohali, where in a very unfortunate incident, 2 people have lost their lives, 2 people have been pulled out, and many are feared trapped as rescue and relief operations continue. We'll tell you exactly what is happening and all the top updates coming in. But as usual, the headlines. Let's get started. अपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। Prime Minister Modi on a 2-day visit to Kuwait addresses Indian diaspora, hails India's achievements. PM's Power Pack Kuwait visit day 2 today to attend spectacle to defense deals and hold key bilaterals. There are groups within India who are aligning with the anti-India groups operating from outside the country. This is known. And then we have countered them politically and successfully. After Fadnavis's big disclosure, Kiran Rijiju says groups in India are hands in glove with anti-India forces. Amid face-off over Baba Sahib Ambedkar, Karnataka Congress Minister targets Home Minister, says Shah bit by a rabid dog. Multi-story building collapses in Mohali. 2 killed, several trapped. Rescue operations are underway. We start off with the big story that we're tracking right now. Congress has stooped to a new low amid the Ambedkar Rao Priyank Kharge. That is right, the Karnataka minister and son of Mallikarjun Kharge has made a new remark which has being seen as very distasteful as political face-off heats up over Ambedkar. Congress stoops to a new low. Karnataka government minister and Mallikarjun Kharge's son Priyank Kharge makes distasteful remark. How much? He says that I condemn Amit Shah's statement and he is bitten by a mad dog. And I just want to go ahead and play out that exact statement of Priyank Kharge. Let's play it out. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ತತ್ವ ಬಸವ ತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ RSS ತತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಕಡ್ದಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ತತ್ವ ಬಸವ ತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ RSS ತತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಕಡ್ದಿದೆ. And viewers, moving on to the other big story we're tracking, where in Punjab's Mohali, a multi-story building has collapsed, and right now we're coming to know the death toll has increased. It is 2 now. Very unfortunate incident. Many people are feared trapped. Rescue and relief operations are continuing. Those are pictures coming in, latest pictures coming in from the ground where the death toll has now mounted, and rescue operations are underway. It's been around 17 hours now, approximately 17 hours plus of non-stop rescue operations. You can see that rescue site, ground zero is completely demolished. The entire building is completely demolished, fallen down, completely unrecognizable now. Many people are still trapped. Effort is on right now to save whoever can be saved. The officials of the Indian Army and NDRF are working on a war footing at the building collapse site as rescue and relief operations are continuing. We will be joined in a short while from now by Lalit, who is our colleague and is on the ground, is getting us all the top updates from the ground and showing us the rescue and relief operations. But before that, we'll go to the reactions coming in and what the authorities have to say as the rescue operations are continuing to pull out the survivors.
Yesterday in Mohali, the building collapsed. What is the position right now? To talk more on this, right now with us is the SSP of Mohali. Mr. Deepak, just want to know what is the position right now? Where is the rescue operation going on? The rescue operations had started immediately after the incident was reported. So at 5:15 the teams had arrived. The local police and administration was here. Within 2 hours, Army and NDRF had also joined. The operation had been going on the entire night. 60 to 65% debris have been cleared. 2 bodies have been recovered till now, and it is hoped that by in some time the rest of the debris should also be cleared. Also wanted to know how many people have been engulfed in this, trapped in this whole debris. We have been trying to gather information from the neighbors, from everyone. So there is no exact figure here, but then since 2 floors have already been cleared, we are hopeful that the remaining 35 to 40% debris, when they are cleared, we'll be able to give you an exact figure. Also wanted to know the person whose building was this. Case has been registered against them. Has those person been arrested? An FIR of culpable homicide has been registered against both the partners of this building, and necessary action during investigation will be taken against anyone else who is found in collusion. अभी ये ऑपरेशन कल शाम लगभग 7 बजे हमारी टीम यहाँ पे आ चुकी थी और उसके बाद से हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारी 4 टीमें यहाँ राउंड द क्लॉक लगी हुई हैं। एक टीम हमारी पिंजौर से यहाँ पे है, एक लुधियाना से है और 2 भटिंडा से आ रखी है। 2 लुधियाना से और 1 भटिंडा से आ रखी है। तो चारों की चारों टीमें राउंड द क्लॉक रोटेशन वाइज अपना काम कर रही है। एंड ऑपरेशन की जहाँ तक कब तक कंप्लीट हो सकता है, देखिए इसमें कहना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है राइट नाउ। बट हमारी तरफ से एनडीआरएफ की जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो पूरी तरह से अडॉप्ट की जा रही हैं और सेफली इस काम को किया जा रहा है ताकि उनको हम रिकवर कर सकें। देखिए जो इनपुट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मिला है उसमें 2 से 4 लोगों का और कह रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। लेकिन हमारे एफर्ट उस एंड को मानते हुए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। And let's go straight across to my colleague joining us, Lalit, who's joining us live. Lalit, I'm coming across to you right now. And if you could take our viewers through the latest, you're on the ground and you're tracking developments. What is the situation like? And is there any likelihood that there could be survivors still stuck under the debris? Well, Shivangi, if we talk about the survivors, it seems that very minute chances as the multi-story building just collapsed like this pair of cards. Let me also show you the visual here where the rescue operation is going on from the past 17 hours. And if you talk about 2 dead bodies have been recovered. One is a native from Himachal Pradesh, Theo, while the other is a male person who is said to be of Haryana. So you can see that the Indian Army, the NDRF teams is working around the clock from the past 17 hours. In the basement, you can see that the sewage water has been gathered and collected. So through the municipal corporation of Mohali, the local administration, the water is being pumped out. Around 4 to 5 JCB machines have been used to clear the debris of the multi-story building which just collapsed. Other than that, you can see that the Indian armies also, the JCB machines could be seen clearing off the debris. So from the past 17 hours, this whole operation is being going on near the Sohana Gurdwara in Mohali. And as per the local inputs and as we talked to the SSP of Mohali, Mr. Parikh, he said that 2 persons have been recovered from these debris and no final figures has been given that how many persons would have been struck under this. But as per the local administration and as per the local people of the society, it is being said that around 4 to 5 people might be struck in the debris. But till now, 2 persons have been recovered dead from these debris. One was recovered in the late evening yesterday, while the other was recovered today in the morning around 10. So 2 persons have been recovered. You can see that on the war footing, this operation of evacuating and clearing. All right, I'll come back to you, Lalit. I'll come back to you, Lalit, because we see that the building collapse site, those are pictures coming in. Lalit is there on the ground getting us top updates. And Lalit is also telling us that the rescue operations are continuing, though the chance of finding survivors is
very, very slim. We will be tracking the story from the ground. Do not go anywhere, because we also have coming up for you all the other stories we're tracking in the next segment, Bharat in 5 minutes. Let's get started. Five people were killed and many were injured when a mini goods vehicle they were traveling in overturned in Chhattisgarh district on Saturday. According to the additional superintendent of police, a truck ferrying around 45 people met with the mishap near village Chanda Mehta under the Darbha police station limits in Jagdalpur. After learning about the mishap, CRPF rushed to the spot and carried out rescue exercises. 27 से 30 मरीज भर्ती कर चुके हैं। संबंधित प्राथमिक उपचार करके संबंधित विभागों में शिफ्ट किया गया है। और सूचना ये भी मिला है कि 4 लोगों का मौत दुर्घटना स्थल पर हो चुका है और एक यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया है, ठीक है, जिसको मृत घोषित कर दिए हैं हम लोग। और अभी आने का सिलसिला अभी जारी है। सूचना ये भी मिला है कि 81 लोग घायल हैं। 7 Indians have been injured in the car ramming attack on a Christmas market in the eastern German city Magdeburg. 3 Indians among the injured have been discharged from the hospital. The Ministry of External Affairs in a statement on Saturday condemned the attack as horrific and senseless and said that the Indian mission in Germany remains in contact with the injured Indians. Sources also say that Indian embassy in Berlin continues to provide all possible assistance to the injured Indian nationals. At least one person died and several others were feared trapped after a 3-story building collapsed in Punjab's Mohali on Saturday. A case has been registered against the building owners. The building collapsed when some excavation work was going on in the basement of the adjacent building. Officials said that a gym was operating on all 3 floors of the building that has collapsed, and many other people were trapped under the debris. Toll in the LPG tanker accident on the Jaipur-Ajmer highway rose up to 14 after 3 more people succumbed on Saturday. Rajasthan High Court issued notices to the central and state government after taking a suo motu cognizance. Issuing the notices, Justice Anup Kumar has listed the matter for further hearing on Jan 10th. A truck collided with an LPG tanker on the Jaipur-Ajmer highway early on Friday, turning the stretch into an inferno that engulfed nearly 40 vehicles. The High Court made some critical observations and said an unfortunate incident had snatched the lives of several people and caused severe life-threatening injuries to others. RJD leader Tejasvi Yadav voiced strong support for students protesting the 70th BPSC exam. He even visited to protest site where he said the demands of the students are valid. The leader also emphasized the need of fairness, urging the government to address the concerns of youth and provide answers to the matter. Protests continued as students demand action and accountability from the government regarding the controversial examination. उसको जो है रद्द किया जाए। हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हमारे जितने छात्र छात्रा मेहनत करके पढ़ाई करके माँ बाप अपना पेट काटते अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं कि पढ़ लिख करके जो है नौकरी मिलेगा। और जब ये अवसर हम लोगों ने छात्र छात्राओं को दिलाया, तब जो है सरकार जो है पूरी तरीके से छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। Supreme Court has dismissed a plea seeking review of an order granting bail to Tamil Nadu Minister V. Senthil Balaji in a money laundering case related to a case for a job scam. Now, the cash for job scam. A bench of Justices Abhay S. Oka and Augustine George Massey also dismissed a prayer for conducting open hearing on the review petition. The bench noted that an application for recall of the same order is pending and is being heard by the court. A review petition was filed by one of the complainants in the case. On Friday, while hearing a petition for the recall of the September 26th order, the bench observed it was terribly wrong to appoint Balaji as a minister in the Tamil Nadu government days after he was granted bail in the case.
पूरे भारत के बच्चे बच्चे का सोच बढ़े, विचार बढ़े, ताकि आगे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर सके, चाहे दुनिया हो चाहे अपने देश के लिए ऐसे ही नाम रोशन करे। जैसे चंद्रमा पे अपने इसरो के लिए भेजा गया था सर, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफल हुआ। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर अपने देश का चंद्रयान का जब सफलता मिली तो आप लोग क्या कर रहे थे? हैं, यहाँ खुशी मना रहे थे? जी सर। हैं सब लोग। और सर हम चाहते हैं कि जैसे अपना कुंभ का मेले की बात करें सर, तो मैं चाहता हूँ कि अपने माता पिता जी को इस कुंभ में शामिल करें हम, क्योंकि ये 12 साल के बाद मौका मिला है और हम तो नहीं जा सकते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने माता पिता जी को शामिल करें ताकि आपको भी दुआ मिल सके सर। यहाँ पे हाईलाइट हम देख रहे होंगे सर, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि आज घर में बता दिया था। जी सर बता दिए हैं। तो आज भी सब घर में टीवी पर बैठे होंगे। जी सर। और सबसे बड़ी बात की सर, राम मंदिर जो कभी जीवन में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो दर्शाएंगे आप, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो सपना पूरा हुआ सर। इसके लिए भी कोटि कोटि नमन सर। 500 साल के बाद पूरे गल्फ स्पीक के तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किती वर्ष झाले इकडे? 9 वर्ष झाली। 9 वर्ष झाले। काय विशेष म्हणा? प्रोग्रेस झालाय. प्रोग्रेस झालाय हो. आणि मुलगीला पडवून एकाचं लग्न केला. 2 कुठे कुठे पडतात? गावी तिकडे गावेचे महाराष्ट्र रत्नागिरी. आणि काय काय तुझी इच्छा काय? पुढे काय करणार? इच्छा काय नाही, मला पुढे पढ़वायचं आहे मुलांना. मैं बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ. बहुत पढ़ाई है, बहुत अच्छा विचार किया आपने. बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ. एक को पढ़ा के मैंने तो उसका तो जिम्मेदारी खत्म कर दिया. मैं शादी कर दिया उसका एक का. और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं. देखिए हर किसी ने जीवन में एक बात पक्की करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा करानी चाहिए. थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन फिर भी बच्चों की अच्छी शिक्षा करानी चाहिए. बच्चों के लिए सर मैं तो इधर आया हूँ. बच्चों के लिए तो आया हूँ, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों का फ्यूचर कुछ हो जाए. चलिए अच्छा सोचते हैं आप. साथियों मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सबको मिलने का अवसर मिला. वैसे मैं करीब 2-2.5 घंटे पहले यहाँ आया हूँ, लेकिन आकर के मेरे मन में, और मैं हमारे एम्बेसडर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पहला कार्यक्रम मेरे श्रमिक परिवार से मिलने का मौका दे दिया. तो 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है? सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है. तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. अब कोई भी पूछेंगे कि 4 घंटे लगते हैं हिंदुस्तान में यहाँ से आने में, लेकिन प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 40 साल लगे. लेकिन आपका प्यार है जो मुझे खींच के ले आया है. आप जो मेहनत करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में भारत के जो लोग वर्कफोर्स है उसकी बहुत प्रतिष्ठा है. दुनिया में हर कोई भारत के लोगों को पसंद करता है, और ये कोई अखबार पढ़ करके तय नहीं करता है, सोशल मीडिया देख करके तय नहीं करता है. आप लोग कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से आपने काम करके जो इज्जत कमाई है, आपने जो प्रतिष्ठा कमाई, लोग आपको प्यार करते हैं, उनको भरोसा है कि ये यानी ईमानदारी से काम करेगा, ये यानी गलत नहीं करेगा. ये आप लोगों ने जो मेहनत की है ना, दुनिया में जिन जिन लोगों ने ऐसे मेहनत की है, उसके कारण पूरी दुनिया में आज भारत के लोगों के प्रति एक प्यार, आदर,
सत्कार का भाव है। अभी दुनिया के देश के जो भी नेता आते हैं, अगर उनको वर्क फोर्स चाहिए तो हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हमें साल में इतने लोग चाहिए, हमें साल में इस प्रकार से काम करने वाले। क्यों? आप लोगों ने ये प्रतिष्ठा खड़ी की है, उसकी खबर पहुंच गई है सब दूर कि भाई ये लोग तो अच्छे लोग होते हैं, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करते, नियमों का पालन करते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं, परिणाम देते हैं। तो आपके परिश्रम के कारण ये प्रतिष्ठा पैदा हुई है और इसलिए आज दुनिया में भारत के युवाओं की जो मांग है ना, वो इज्जत मिली है, उसके मूल में आपकी मेहनत है। तो मैं यहाँ आया हूँ आपको बधाई देने के लिए, मैं यहाँ आया हूँ आप सबका गौरव करने के लिए। भारत में कोई भी अच्छी घटना होती है तो आपकी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। और अब आप तो देखते होंगे दुनिया के जो भी लोग आपको यहाँ पर कोई मिलते होंगे, आप भारत से हैं तो कैसा करते हैं, पहले कैसा करते थे? मुझे लोग बताते हैं कि साहब किसी को मिलते हैं और जब उसको पता चलता है हम भारत से, इंडिया से है, तो बोले हाथ छोड़ता ही नहीं है, पकड़ के रखता है। आपको भी ऐसा अनुभव आता है? हैं? ऐसा लोग प्यार करते हैं, वाह इंडिया हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। मेरा कोई भाषण करने का इरादा नहीं है, बस आप लोगों से मिलना यही मेरा इरादा था, इसलिए मैं आपके बीच आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। All right, viewers, as we saw the PM Modi interacting with Labour camp there, and he had once again inspired. This is an Indian Labour camp. He is showing solidarity with the Indian Labour force employed in Kuwait. And this is as Prime Minister Modi is on a 2-day visit to Kuwait. We are getting some more breaking updates coming in connection with this. Congress MP and senior leader Digvijay Singh has hit out at Prime Minister Modi over his interaction with labourers in Kuwait. Digvijay says that going abroad, especially in Islamic countries, you advocate world brotherhood, but in India, you advocate Hindutva. Savarkar himself had said that Hindutva has nothing to do with Hinduism or Sanatan Dharma. So we're getting these big updates coming in right now where we're seeing that Digvijay Singh, who is a Congress MP and senior leader, has now hit out at PM Modi with a post that he has put on X. I repeat, with a post that he has put on X. We will try to get you more updates on this story, viewers, but as we keep getting you more updates, let's tell you exactly what is happening right now. Digvijay Singh has hit out at PM Modi in this latest tweet, and I read it out. He is saying that you are going to different countries, but in India, he's accusing PM Modi of double speak. He said that I heard your speech in Kuwait, I appreciate it. He has definitely said that he does appreciate it, but he's also going ahead and hitting out at PM Modi after his interaction with the Labour camp in Kuwait. We're getting some more breaking updates coming in right now. We shift our focus to what is happening in the national capital after we remember in the past few weeks there have been so many bomb threats being sent to schools. An investigation by the special cell of Delhi police, it was found that the emails were sent to both schools by two different students of the same school in context with the hoax bomb threats being sent to Delhi schools. Now we are coming to know that the students had sent this email to stop the exam because they were not prepared for the exam paper. Since both of them were students, they were counseled and then let off. So this is a big update coming in right now. It was the students behind the hoax bomb threat. Students behind the Delhi hoax bomb threat, and these students are behind it because they were not prepared to give an exam, to take an exam. I'm going to go straight across to Piyush Shori, who's joining us.
Piyush, these students were not prepared to take the exam, and that is why it looks like that the special cell of Delhi police, after an investigation, has found out that it was the students after all. What do we know about this latest update coming in? This is coming to be a big breakthrough in the investigation behind the hoax bomb threats. Police that has been investigating of these hoax messages that have been received by certain education institutions have found out that how it has been students who have been studying within these education institutions who have been sending these hoax messages and thereby creating panic. Now, first, I would like to mention about the hoax messages trail, which has been investigating by the Delhi police, and they have been able to get hold of the two students who reportedly sent these bomb hoax messages in order to create panic and in order to make sure that the exams that was to be taking place in these education institutions should not take place. Now, after the interrogation, it seems that certain legal proceedings might take place in which most possibly after being reprimanded, they might be let off. But also the another part is that not only in Delhi, but even in Gurugram, it has been found out that how some of the hoax messages that were sent to educational institution in the past few days was linked to one of the students who was studying within that school, sending these bomb hoax messages. So thereby, some very interesting revelation have now come forward with both the police, the law enforcement officials of the National Capital Region that involved. After a multi-story building collapsed in Punjab's Mohali district, the rescue teams of the Army and the NDRF scrambled through the night to look for people trapped under the debris. We're tracking this and a lot more with me at 11:30 a.m. only on Republic TV. Stay tuned. उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रूंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रूंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
Prime Minister Modi on a two-day visit to Kuwait addresses Indian diaspora, hails India's achievements. Prime Minister's power-packed Kuwait visits day 2 today to attend spectacle to defence deals and hold key bilaterals. There are groups within India who are aligning with the anti-India groups operating from outside the country. This is known. And then we have countered them politically and successfully. After Fadnavis's big disclosure, Kiran Rijiju says groups in India are hands in glove with anti-India forces. Amid face-off over Baba Saheb Ambedkar, Karnataka Congress Minister targets Home Minister, says Shah bit by a mad dog. Multi-story building collapses in Mohali. At least 2 killed, several trapped. Rescue operations underway. Hello and a very warm welcome. You're watching Republic TV. I'm Gesu Bharadwaj and bringing you some news from Mohali's building collapse. The death toll has mounted to 2 as another body has been recovered in the Mohali building collapse. Rescue operations are underway since the last 16 hours. The officials of the Indian Army and NDRF are working on a war footing at the building collapse site. Viewers, these are the visuals of the debris of the fallen building in Punjab's Mohali district. The death toll has climbed to 2 and rescue operations are underway. We're also being joined by my colleague Lalit to get us more on the story. Lalit, where have the operations reached, the rescue operations? They've been going on for 16 hours now. Both the teams of the Indian Army as well as the teams of the NDRF are scrambling. They've scrambled overnight, in fact, to look for bodies under the debris. Any more information on survivors or injured people? If you talk about this whole operation, it has been more than 16 hours that the Indian Army and the NDRF is working round the clock from the past 16 hours. If you talk about the number of deaths till now, 2 deaths have been reported. One is a 20-year-old girl, a native of Himachal Pradesh from Theug area, and the other is a youth from Haryana. So basically, what the local administration and the local people are saying that around 2 to 3 more people might have been trapped under these debris. Let me also show you the evacuation which is being done here in the area where this whole building just collapsed like the spade of cards within no time yesterday evening. You can see that the multi-story building has been collapsed. Round the clock, the Indian Army, the NDRF, all are working. And if we talk about when we had a word with the Mohali SSP, he said that there is no official information that how many people might have trapped under these debris. But yes, if we talk about till now, 2 deaths have been reported. And if we talk about the debris which have been cleared, around 70% of the debris of this multi-story building have been cleared. Just 30 to 35% is being left, and the water which had gathered in the basement, that water has been pumped through the local administration, that is the municipal corporation of Mohali. The whole water has been pumped out of the sewerage which has got gathered in the basement. So the whole evacuation process is being done. There are very minute chances of survival as a multi-story building of debris and rubble just have collapsed here. So you can see that the NDRF and the army is still evacuating the whole debris. The big
JCB machines of the local administration and the Indian army are clearing the debris. So till now, 2 deaths have been reported and the evacuation process is being done from the past more than 16 hours here in Mohali. Back to the studio. Right, Lalit, thank you so much for getting us those updates. In fact, you are on ground zero and we will continue tapping into this story. But for now, we will also look at the reactions that have come in after this tragedy took place. Take a look. Yesterday in Mohali, the building collapsed. What is the position right now? To talk more on this, right now with us is the SSP of Mohali. Mr. Deepak, just want to know what is the position right now? Where is the rescue operation going on? The rescue operations had started immediately after the incident was reported. So at 5:15 the teams had arrived. The local police administration was here. Within 2 hours, Army and NDRF had also joined. The operation had been going on the entire night. 60 to 65% debris have been cleared. 2 bodies have been recovered till now, and it is hoped that by in some time the rest of the debris should also be cleared. Also wanted to know how many people have been engulfed in this, trapped in this whole debris. We have been trying to gather information from the neighbors, from everyone. So there is no exact figure here. But then since 2 floors have already been cleared, we are hopeful that the remaining 35 to 40% debris, when they are cleared, we'll be able to give you an exact figure. Also wanted to know the person whose building was this. Case has been registered against them. Has those person been arrested? An FIR of culpable homicide has been registered against both the partners of this building, and necessary action during investigation will be taken against anyone else who is found in collusion. अभी ये ऑपरेशन कल शाम लगभग 7 बजे हमारी टीम यहाँ पे आ चुकी थी और उसके बाद से हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारी 4 टीमें यहाँ राउंड द क्लॉक लगी हुई हैं। एक टीम हमारी पिंजौर से यहाँ पे है, एक लुधियाना से है और 2 भटिंडा से आ रखी है। 2 लुधियाना से और 1 भटिंडा से आ रखी है। तो चारों की चारों टीमें राउंड द क्लॉक रोटेशन वाइज अपना काम कर रही हैं। एंड ऑपरेशन की जहाँ तक कब तक कंप्लीट हो सकता है, देखिए इसमें कहना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक बहुत डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है राइट नाउ। बट हमारी तरफ से एनडीआरएफ की जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो पूरी तरह से अडॉप्ट की जा रही हैं और सेफली इस काम को किया जा रहा है ताकि उनको हम रिकवर कर सकें। देखिए जो इनपुट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मिला है उसमें 2 से 4 लोगों का और कह रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। लेकिन हमारे एफर्ट उस एंड को मानते हुए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। Viewers, another big breaking news coming in. The face-off escalates over Ambedkar. Congress MP KC Venugopal has said the Congress cadres will conduct the Ambedkar Samman March on the 24th of December. The order has been issued to all district collectorates and they have been given notice over the demand of the resignation of the Union Home Minister Amit Shah. Congress has upped the ante against BJP, alleging that Union Home Minister Amit Shah insulted Dr. B.R. Ambedkar during his address in the Rajya Sabha amid the constitution debate. Party is launching a national level campaign today onwards. All over India, party CWC members and senior leaders is holding a press conference on the issue of Amit Shah's speech against Ambedkar ji. In the Congress MPs will also do same press conference in the respective parliamentary constituencies on 22nd and 23rd. 24th, party is planning to have a march towards the collectorate and will hand over the memorandum to the district collector seeking resignation from Amit Shah, Home Minister of India. Basically, this is an attack on Constitution, attack on founding fathers of the Constitution. The way in which Amit Shah ji narrated against Ambedkar ji is totally unacceptable, is against the spirit of the Constitution, against the spirit of Indian democracy. So we are taking Parliament, we raise it. When we raise this issue, they took case against our leader. We are not afraid of any such cases.
Now we are going to take it to the masses. We are going to take it to the rural villages, to the cities. देना नहीं है, इसलिए आज बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं आग्रह करने आया हूं दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों से, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और इन लोगों को करारा जवाब देने का समय आ गया। 10 साल 12 साल से दिल्ली में सरकार बनाकर कोई काम दिल्ली की जनता के लिए इन लोगों ने नहीं किया है, इसलिए मैं विशेष तौर पर सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि पूर्वांचल के लोग 2025 के चुनाव में पूर्ण रूप से दिल्ली में बैठी सरकार को जवाब देने का काम करें। और साथ ही साथ आप देखे होंगे कि अपने आप को एक पढ़ा लिखा वर्ग मानने वाले लोग किस तरह महिलाओं का अपमान करके 2 बड़ी घोषणा हुई दिल्ली में, दोनों वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं किया, दिल्ली के उनके पार्टी के नेता ने किया। ये अपने आप में महिलाओं का अपमान है। महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का काम जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये सारी पार्टियां एक तरह से अपमानित करने का काम कर रही है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो पहले इस पर कोई सवाल हो तो The deadlock between the BCCI and the PCB has finally come to an end, and the ICC's efforts have finally paid off. The Champions Trophy, as confirmed by the ICC, will be played in the hybrid model. The time was running out for the ICC considering the financial implications of the marquee event. The stakeholders of the Champions Trophy were also not very happy with the ICC considering the fact that they were not being able to tap into the financial gains of such a big event. The Board of Control for Cricket in India has already made it very clear that the Indian team will not be travelling to Pakistan under any circumstances for the Champions Trophy. The Pakistan Cricket Board tried its very best to fight back in the name of national interest, but it had no answers to the issues related to the security concerns in the country. To make matters worse, the Sri Lanka A team also pulled out of its tour midway, citing serious political unrest in the country. The ICC in their latest announcement has made it very clear that the Champions Trophy will be played in the hybrid model. The ICC also said that India and Pakistan matches hosted by either country at ICC events during the 2024 to 2027 rights cycle will be played at a neutral venue. India will play all their matches at a neutral venue. Though Sri Lanka and the UAE both are in contention to co-host the marquee ICC event, but it is being believed that the scales are shifting towards the UAE. The Emirates Cricket Board is right now waiting for a final clearance from the PCB and the ICC, and they have grounds in Abu Dhabi and Sharjah to co-host the event. The ICC has awarded the hosting rights of the ICC Women's T20 World Cup 2028 to the Pakistan Cricket Board. This also means that the arrangements surrounding the neutral venue will also apply on women's cricket.
Welcome back, viewers. You're watching Republic TV. And now on to some news. The Allahabad High Court will hear the petition of Sambhal SP MP Zia-ur-Rahman Barq on the 2nd of January next year. This comes in connection with the 24th November violence in Sambhal. Take a look at this report that gets you all the details. Samajwadi Party MP from Sambhal, Zia-ur-Rahman Barq, has filed a petition in the Allahabad High Court seeking a stay on his arrest. This comes as Barq is accused of instigating the violent clashes that erupted in Sambhal on the 24th of November over the survey of a Mughal-era mosque. The SP MP has also sought quashing of the case against him. Meanwhile, the Allahabad High Court has pushed the date for hearing Barq's petition to the 2nd of January next year. A bench comprising Justice MC Tripathi will hear the SP MP's petition. In fact, the SP MP's side will be presented by senior advocates Imran Ullah and Vineet Vikram. This comes as Zia-ur-Rahman Barq also faces allegations over an electricity graft case in Sambhal. The UP police has imposed a fine worth 1.91 crore rupees on Zia-ur-Rahman Barq. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردى ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين وللعرب، وأيضا الدعم الكامل الذي يتم تقديمه لهم من حكومة نتنياهو وسموتريش وابن غفير على ليقوموا بهذه الأعمال.
Viewers, much more coming up. A new controversy erupts after Priyank Kharge, Karnataka minister, says Amit Shah has been bitten by a rabid dog. Stay tuned. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردة ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين وللعرب، وأيضا الدعم الكامل الذي يتم تقديمه لهم من حكومة نتنياهو وسموتريش وابن غفير على ليقوموا بهذه الأعمال.
जोरदार तालियों से हम अनुपम खेर जी का स्वागत करेंगे और मैं मंच पे उन्हें बुलाना चाहूंगा। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे। अनुपम जी अब सिर्फ एक्टर डायरेक्टर नहीं है सर, मैं देखता हूँ आजकल आप इंस्पिरेशनल कोट भी डालते हैं काफ़ी। अब आप लाइफ कोच भी हो गए, मोटिवेटर भी हो गए सर। मेरा सवाल आपसे ये कि सर ये जैसे अभी मृदुल ने कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी क्या है? मतलब अब आप वाकई लाइफ कोच हो गए, आप मोटिवेटर भी हो गए? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, उससे पहले बताना चाहता हूँ कि इस भव्यता को, रिपब्लिक की इस भव्यता को देखकर, इस कॉम्प्लेक्स को देखकर मुझे बहुत अच्छा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी टीम है, अर्नब गोस्वामी उनकी टीम, यहाँ बैठे हैं उनके सब लोग। आप लोगों ने वाकई एक बहुत कमाल की रचना की है। अर्नब, आपने बहुत अच्छा ये बनाया है रिपब्लिक का, इतना बड़ा इंस्पिरेशनल जिसे कहते हैं, आपने ये तरक्की की है। और ये तरक्की मैंने आपकी मुंबई से देखी है। मुंबई में जब रिपब्लिक का ऑफिस था तो उसकी जब ईंट लग रही थी, एक हर हफ्ते में चला जाता था इनको मिलने। मैंने एक शो किया था, तो वहाँ से गुज़रते गुज़रते और फिर कहाँ से गुज़रते गुज़रते कुछ भी हो सकते होते होते आप यहाँ पहुँचे हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जीत की सत्य की हमेशा जीत होती है। सबसे बड़ी बात ये है। अब आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। ज़िंदगी सब कुछ सिखाती है, और ख़ासकर अगर आप ऐसी ज़िंदगी जियो जहाँ पर आप नाटक ना करो लाइफ को जीने का, बल्कि असली में जियो, तो फिर आपके पास बहुत सारी कोटेशंस हो सकती हैं। बिकॉज़ आप वो कोटेशंस बोल रहे हो जो आपने महसूस की है। और मैं बहुत लकी था कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, क्योंकि गरीब घर में पैदा होने से परिवार वाले सब लोग साथ में रहते हैं। और उन दिनों दादा दादी जो थे वो कहानियाँ सुनाते थे, महाभारत की, रामायण की, गीता की, पढ़ाई की, या किसी भी चीज़ की। तो और छोटे शहर में पैदा हुआ तो सपने देखने का भी बहुत ज़्यादा अवसर मिलता था। छोटे शहर में बहुत ज़्यादा सपने इंसान देखता है। और मैं अपनी लाइफ को हमेशा अपनी ऑटोबायोग्राफी के हिसाब से देखता हूँ। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बात आज से 1 साल बाद में इसका जिक्र करूँगा। सो आई लुक एट माई लाइफ फ्रॉम ए सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज़ नॉट ओनली व्हेन आई केम इनटू मूवीज़, दिस इज़ ऑल्सो जब मैं शिमला में रहता था, जब मैं कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ही पुअर स्टूडेंट था पढ़ाई में, कुछ खेल कूद में भी नहीं अच्छा था, पर पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि मुझे कुछ बनना है और मैं कुछ बनूंगा। और मेरे को प्रभावित करती थी किताबें। मैंने पहली किताब पढ़ी थी मैक्सिम गोर्की की माँ। मेरे चाचा जी हैं, अभी भी हैं, प्यारेलाल जी, उन्होंने मुझे वो किताब दी थी। उन दिनों रशियन लिटरेचर की किताबें हिंदी में ट्रांसलेट होती थी। जब मैंने मैक्सिम गोर्की की माँ किताब पढ़ी, मदर, उसका ट्रांसलेशन पढ़ा, तो मुझे लगा कि किताबों में जो खजाना है वो कहीं भी नहीं है। और आप यकीन नहीं करेंगे, 2006 से पहले जो अनफॉर्चुनेट वो जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसमें मुंबई में बाढ़ आई थी, उससे पहले मेरे पास 14,000 किताबों की अपनी एक कलेक्शन थी। फिर वो हमारे ऑफिस में पानी बह गया तो काफ़ी सारी किताबें उसमें बह गई। तो किताबों से इतना कुछ मिलता है सीखने के लिए। सर आपने किताबों का जिक्र किया, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि आपके किताबों को पढ़ने से मार्क्स बहुत कम थे, 38% मार्क्स थे आपके। बिल्कुल। और आप 37 रुपीज़ लेकर मुंबई आए थे। तो मेरा सवाल आपसे ये कि ये जैसे बहुत से लोग मुंबई, क्योंकि हर रोज़ हज़ारों लड़के पहुंचते हैं एक्टर बनने के लिए, आप उनके पास बहुत से एक्सक्यूजेस होते हैं जब वो नहीं कर पाते हैं कुछ। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, एक्सक्यूज आप दे भी सकते थे, लेकिन कौन सी वो चीज़ थी जो आपको बहुत मोटिवेट कर रही थी कि यार मार्क्स भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है? भूख, कुछ बनने की भूख। देखिए मेरे मार्क्स उस पढ़ाई में अच्छे नहीं थे जो मैं करना नहीं चाहता था। मेरे 38% मार्क्स आए ग्रेजुएशन तक, और पर मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे पढ़ना आता ही नहीं था। मतलब मैं
आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। पर मैं एक गेम करता हूँ, मैं आज इनके साथ, आपके दर्शकों के साथ एक गेम करना चाहता हूँ, बिकॉज आपने 38% की बात कही। यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप में से 60% से कितने ज़्यादा लोगों के मार्क्स आए हैं? अरे हाथ खड़े करिए। माय गॉड, पूरे ऑडिटोरियम के हैं। अच्छा, 70% से ज़्यादा कितने लोगों के आए हैं? ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए हो? 80% से कितने लोगों के आए हैं? फिर भी आप ऑडियंस में बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ मंच पर। सर लेकिन नहीं, मैं आपकी उपलब्धियों को छोटा नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ऐसे बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाह रहा हूँ, मगर एक भूख होती है, एक भूख जो होती है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। लेकिन वो दौर कैसा था, आप एहसास कर पा रहे थे कि मेरे को तो पता ही नहीं लगता था मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। मुझे पता है ना, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे इस बात का एहसास कराया कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। बिकॉज मेरे फादर जो थे वो क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनकी पूरी ज़िंदगी बेचारों की इसी में निकल गई थी। वो 8 बजे निकलते थे और 8 बजे वापस आते थे कि 14 लोगों के घर, लोग परिवार को उनको बड़ा करना है। सो दे नेवर हैड द टाइम टू आस्क कि तू क्या बनेगा, क्या करना चाहता है। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता था। अभी विक्रांत थोड़ी देर पहले यहाँ बैठे थे, मैं 100 क्वेश्चन आए थे जिसमें टिक करने, मैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस को टिक मार्क कर पाया था, वो भी मैंने बिकॉज अब कुछ तो करना था तो मैंने ऐसे कर दिया था। बट आई थिंक आई हैड, सिनेमा हमारे वहाँ पर बहुत दिखाते थे, जैसे गणपति के दिनों में मुंबई में दिखाते हैं, तो मैं वो जब सिनेमा देखता था, मैंने फिल्म देखी थी उपकार, मनोज कुमार साहब की, दिल एक मंदिर, 2 आँखें 12 हाथ, वो फिल्में देख के मुझे लगता था ये वर्ल्ड बड़ा कमाल का है। नया नया आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान से 8 साल छोटा हूँ और हम दोनों एक साथ बड़े हैं। और आप और अर्नब गोस्वामी की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। हाँ, मैं भी 7 मार्च हूँ, अर्नब गोस्वामी 7 मार्च है, तो महानता हम लेके चले थे। तो आई थिंक बिकॉज जब आप प्लान नहीं करते हैं चीज़ें, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। मेरे फादर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। तो जब फादर ने 14 साल के बच्चे से ये डर निकाल दिया था कि भैया फेल हो जाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स ऑल राइट टू फेल। और 37 रुपये की जहाँ तक आप बात लेके गए थे, देखिए इसीलिए मुझे सब चीज़ें याद है। मैं 3 जून 1981 को लखनऊ से मुंबई पहुँचा था अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और 37 रुपये थे मेरे पास। और इन पिछले 43 ईयर्स में मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, मुझे कभी गरीबी का एहसास हो ही नहीं सकता। मेरे बुरे दिन में लगते हैं, मुझे लगता है कि 37 रुपये तो ज़्यादा कमाया है मैंने। सो आई डोंट फील पुअर इन एनी सेंस। मैं 2004 में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था, क्योंकि मैं टीवी टाइकून बनना चाहता था, मैं कुछ करना चाहता था, मैंने उधार लेना शुरू कर दिया। मैं पूरे 100 साल के खेर खानदान में अकेला ऐसा इंसान था जिसने 10,000 रुपये साथ में देखे थे। सो जब आप, मैंने इसे सच्चाई, नॉट नेसेसरली सच्चाई बोलने वाली सच्चाई, सच्चाई की ज़िंदगी जीते हैं ना, तो आपको किसी बात का डर नहीं रहता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन सर आप बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड तक भी पहुंच गए, और आप साथ साथ ये भी कहते हैं मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं। यार आपने बड़ा अच्छा रिसर्च किया, मैं आपको मैं वेरी हैप्पी। आपका केवल हेयर स्टाइल ही साफ सुथरा नहीं है, आपकी सोच भी साफ सुथरी है। हाँ, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से आया हूँ। वो विक्रांत ने भी एक डायलॉग बोला था कि पढ़ाई में तो पास हो जाते हैं, ये सच है। मेरे साथ तो बहुत हमारे साथ होता था। हिंदी मीडियम स्कूल वालों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़कियां बिल्कुल नहीं देखती हैं, बिल्कुल भाव नहीं देती हैं। और मेरे DAV स्कूल के आसपास सिर्फ लड़कियां, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल की ही लड़कियां होती थी। बट अगेन बिकॉज फेलियर का डर नहीं था, आई डिसाइडेड दैट आई कैन डू इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म्स। मेहनत ही करनी है ना, तो सिर्फ अगर मेहनत ही करनी है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं उठता था, मैंने बेंड इट लाइक बेकम मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मैंने जब कोविड से पहले मैंने न्यू एम्स्टर्डम करके एक सीरीज़ किया था अमेरिका में। आई वॉज प्लेइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट। मैं न्यूरोलॉजिस्ट बोलने में भी मैंने कुछ 10 बार रिहर्सल की है। आपके सामने अभी आने से पहले मुझे लगा आप पूछ लेंगे तो बताना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, इस तरह जब आप काम करते हैं तो हम कई बार हिंदी में सोचते हैं और फिर उसके बाद हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये परेशानी होती है उसको। हाँ, मैं तो अभी भी, आपको क्या लग रहा है मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ?
लेकिन सर हाँ, हर हिंदी मीडियम स्कूल का, और खासकर मैं मेरे 5th स्टैंडर्ड में हमको ABCD सिखाई गई थी, 5th स्टैंडर्ड में। तो जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स करके बॉम्बे पहुंचा, तो मुझे लगता था हर इंसान जो है मुझसे ज़्यादा कम जानता है, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ी में बोल रहा है लोग उसकी बात सुन रहे हैं और मैं नहीं सुन रहा हूँ। फिर मैंने उन्हीं चाचा जी को, आज वो बड़े खुश होंगे कि मैंने उनका 2 बार नाम लिया है, उनको मैंने कहा चाचा जी मुझे अंग्रेज़ी बोलनी कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा बेटा कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसके लैंग्वेज में बोलना ज़रूरी है। तो मैंने मुंबई में डिसाइड कर लिया कि मैं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करूँगा। तो मेरे सारे दोस्त भाग जाते थे और बोलते थे आ गया अभी अंग्रेज़ी में बात करेगा। सो अगेन फेलियर का डर नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर आप ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं अपने आप को बहुत सीरियसली लेता नहीं हूँ। लोग वो फूक के कदम रखते हैं जो अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं। दैट्स वाई दे रिमेन मीडियोकर। मुझे अपने आप को सीरियस लेने का दिल ही नहीं करता है। मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं अपनी खासियतें नहीं गिना रहा। अब मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पर मुझे लगता है मैं अभी भी वो शिमला का बिट्टू हूँ जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। सो दैट मैं अपना बोझा अपने कंधे पर लेकर नहीं चलता। यही वजह है कि मैंने आपकी रील्स देखे, आप आम लोगों से भी बात करते हैं, किसी ठेले वाले से बात कर रहे हैं, एक कंघी वाला मिल गया आप उससे भी बात कर रहे हैं, और फल वाला मिल गया उससे भी बात कर रहे हैं। ये कनेक्ट है, मैंने ये बाकी एक्टर्स में नहीं देखा। ये आपका कनेक्ट इसलिए है क्योंकि आपको थोड़ा अपने यहाँ बुलाया है, सिर्फ मुझे बुलाया है और नहीं, मेरे ख्याल से आप फिल्मों में रहने से कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सीरियस लेता हूँ। हम पूरी ज़िंदगी कोशिश करते हैं कि लोग हमें पहचानें। मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि लोगों से फ़ोटो ना खिंचाऊँ और फ़ोन ना बजे, ये ना हो। पर और फिर जब हम मशहूर हो जाते हैं तो हम डार्क ग्लासेस पहन लेते हैं ताकि हमें कोई ना पहचाने। बेवकूफ़ इंसान, तू पहचानने के लिए एक्टर बना है और फिर डार्क ग्लासेस पहने और इधर भागे। मुझे तो अच्छा लगता है कि मुझे लोग पहचानते हैं। मैं फ़्लाइट में बैठा होता हूँ और मुझे सोचता है कि साथ वाला बैठा इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा है, ये अपने आप को कितना सीरियसली ले रहा है? और मैंने डोसा मंगाया और ये सब खाना मंगाया, इसने कहा ब्लैक कॉफ़ी और एन ऑरेंज जूस फॉर मी प्लीज़, थैंक यू वेरी मच, यस आई विल नॉट हैव। एंड ही इज़ इग्नोरिंग दिस सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर बिकॉज ही डज नॉट सी हिंदी मूवीज़। और फिर उसको लगता है कि अभी दिल्ली आने में सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं तो अभी मुझे इनसे कुछ बात करनी चाहिए। और फिर इतना बेवकूफ़ाना सवाल पूछते हैं, गोइंग टू दिल्ली? सो person who takes himself seriously is the funniest person, is the most comical person. That is the truth. सर लेकिन आपको देखिए इतना सीरियसली लिया, मैंने भी वो खबर चलाई कि आपकी तस्वीर लोगों ने नोट पर छाप दी। हाँ, देखिए मेरे साथ ही हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। अब भैया उन चोरों को और कोई फोटो नहीं मिली, बहुत सारे गंजे हैं, मैं ही रह गया था क्या? पर चूंकि मेरी ऑटोबायोग्राफी में रिपब्लिक के शो में आपका ये सवाल आना ज़रूरी था, इसलिए मेरी किस्मत में लिखा था कि ऐसा होगा। मैंने तो इंसिडेंट्स बनाए हैं, ये अपने आप बने हैं। तो मुझे काफ़ी मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि कहीं तूने तो नहीं करवाया ये? तो क्या बात कर रही हूँ माँ, मैं ऐसा क्यों करवाऊँगा? बट है ये सच बात है। और मतलब वरना मेरी तस्वीर क्यों होगी 500 रुपये के नोट पे गांधी जी की जगह? गांधी जी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर। सर आपने देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? बड़ा खुश हुआ मैं। मैंने एक और किस्सा मिल गया बताने के लिए। लाइफ इज अ सम टोटल ऑफ योर लाइफ स्टोरीज। मुझे लगता है कि लाइफ में जो बुरा भी होता है वो आगे जाकर आपकी कहानी बन जाता है। अर्नब गोस्वामी की सबसे बड़ी कहानी ये होगी, ये जो इन्होंने अपनी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर लगाई हुई है अपने कमरे में, जब पुलिस खड़ी है आप उधर निकले हैं। दीज आर द स्टोरीज। ये नहीं होता तो आप बाकियों से कैसे अलग होते? इट्स अ ट्रूथ। आई ऑलवेज बिलीव व्हेन थिंग्स डोंट हैपन इन योर लाइफ, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग फैंटास्टिक। जब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में मुझे सदमे नहीं लगे, बहुत लगे हैं, पर मुझे लगता है ये तो काम नहीं हुआ, अच्छा हो गया, ये काम नहीं हुआ, आगे जाकर ये कहानी बन जाएगी मेरी।
ये सच है, ये सच है। आप हमेशा नोट करिए। आप मेरी अभी इसी ऑफिस में मुझे कम से कम 20 लोग मिले जिन्होंने मुझसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई किस्सा मुझे ही सुनाया। मैं हैरान हूं। दैट्स बिकॉज आई लिव माई लाइफ एज नॉर्मली एज आई कैन। मुझे एक साहब मिले जिन्होंने कहा कि आपने अर्नब की जब रिपब्लिक की पार्टी मैरियट में हुई थी, आपने इन मोहतरमा को कहा था कि आप कुछ परेशान दिख रही हैं, आपकी बिटिया ठीक है कि नहीं है? तो मुझे याद ही नहीं है, बट ये हुआ था। दैट्स बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल। मेरे साथ मेरा दत्तू काम कर रहा है 39 साल से। मेरा स्टाफ जो है मेरा 30 साल से है। बिकॉज आई थिंक आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल। आपने कहा कि मैं कंघी वाले से क्यों बात करता हूँ, मुझे उसको देख के लगा कि इसकी लाइफ में ऑल्सो यू नीड टू गिव स्टोरीज टू पीपल। जब मैं पहली बार एक एक्टर को मिला था, उनका नाम था विनोद खन्ना। विनोद खन्ना साहब ने मेरे शिमला में मेरे साथ, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे साथ हाथ मिलाया था और बोला था कैसे है? मैंने कहा अच्छा हूँ। गोरे हो? मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। सो अब मैं मिलता हूँ किसी को तो मुझे लगता है ओनली माई फादर यूज्ड टू से द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी। I just do that. The easiest thing actually is to make somebody happy. इसी तरह जब आपने आपके पिताजी की बात की है तो एक किस्सा वो है कि आप जो है आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, आपके फादर आपको जो है उसके बाद पार्टी के लिए ले गए थे। उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन आप देखते हैं? My father was a strange man. He was an ordinary person but an extraordinary father. बिकॉज उन्होंने अनजाने में, माँ बाप क्या करते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट हम माँ बाप बन के माँ बाप का रोल करने लगते हैं। हाँ, रोल, मेरे बेटे को अब मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए। मेरे फादर ने कभी वो रोल किया ही नहीं। तो मेरा वो किस्सा जो आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हमारे शिमला में दो कहानी है इस पहलू के। एक रेस्टोरेंट है अल्फ़ा रेस्टोरेंट। वो अल्फ़ा रेस्टोरेंट थोड़ा पॉश रेस्टोरेंट था, जिसमें मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरा छोटा भाई 6 महीने में एक बार जाते थे। और बाकी क्योंकि हमारा 14 लोगों का परिवार साथ रहता था, तो हमारे लिए वो एक दिन दिवाली से बड़ा होता था, होली से बड़ा होता था, न्यू ईयर से बड़ा होता था, क्योंकि हम 4 सदस्य अपने इमीडिएट परिवार के साथ में बैठते थे। और हमारा फिक्स्ड होता था, पिताजी मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगवाते थे। और फिर जब बिल आता था तो 50 पैसे टिप दे देते थे। ये एक कहानी का है। दूसरा कहानी का ये पहलू था कि जब शिमला में 10th स्टैंडर्ड में आप एग्ज़ाम देते थे तो आपको 11th में प्रमोट कर दिया जाता था और 2 महीने बाद रिजल्ट आता था। अगर आप फेल हो गए 2 महीने बाद तो फिर आपको वापस 10th में आना पड़ता था। वो बेइज्जती का सबसे बड़ी पराकाष्ठा थी, मतलब हाइट थी। तो ये अभी हम अल्फ़ा रेस्टोरेंट में 2 महीने पहले जा चुके थे। अब मुझे पता था कि अब 4 महीने बाद जाना है। तो एक दिन पिताजी आए 3 बजे के करीब स्कूल में और बोले छुट्टी करते हैं तेरे लिए। मैंने कहा पिताजी छुट्टी करवा रहे हैं? मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो जब रिज पे आए, हम रिज मैदान पे, तो बोले कहाँ चलेगा? मुझे लगा अभी अल्फ़ा जाने में तो 4 महीने बाकी हैं। तो मैंने कहा नथू स्वीट्स चलते हैं। कहते नहीं अल्फ़ा चलेगा? मैंने कहा हाँ चलेंगे। अच्छा। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो मुझे लगा अब ये यहाँ पर उन 3 चीज़ों में से एक ही चीज़ मंगवाएंगे। मगर उन्होंने अपने लिए भी और मेरे लिए भी मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगाई। तो मैंने कहा क्या हो गया, आप इतना सब कुछ कैसे मंगा रहे हैं? आपकी लॉटरी निकली है, आपकी ये प्रमोशन हो गई है। बोले नहीं खाओ। जब बिल आया तो 50 पैसे की जगह उन्होंने 1 रुपया रखा टिप। मैंने कहा पापा क्या हो गया है? कहते मैं एजुकेशन बोर्ड गया था तेरा रिजल्ट पता करने, तू फेल हो गया है। तो मैंने कहा फेल हो गया हूँ तो आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहते नहीं मैं तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूँ ताकि ज़िंदगी में कोई कभी भी फेल हो जाए तो हमेशा मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगा सकता है। So he was not a very intellectual kind of a person, but this basic thing made me feel so liberated, so amazed that I just did not ever have this fear of failure. अब कोई डर नहीं है। आपका पिता के साथ रिश्ता कैसा था? मैंने ये भी सुना कि हम बस बेस्ट फ्रेंड थे। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड लिटरली एक दिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। 2 बातें बताऊंगा मैं उनके बारे में। 2012 में उनकी डेथ हुई थी।
10th of February 2012। और उससे 2011 में मैं उनके साथ महाबलेश्वर जा रहा था, मेरी किसी फिल्म की शूटिंग थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि खिड़की से बाहर देख रहे थे, मुझे अभी भी याद है गाड़ी में। तो उन्होंने कहा कि तुमने फिल्में कम कर दी हैं, फिल्मों में काम करना कम कर दिया, तुझे ज़्यादा फिल्में नज़र नहीं आता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं उनको बड़ा स्मार्ट आंसर दूंगा। मैंने कहा पापा आई एम नॉट इन द रैट रेस। तो उन्होंने एक पॉज लिया, उन्होंने कहा ओह यू हैव लेफ्ट द रेस फॉर द रैट्स। दैट वाज सच एन अमेजिंग थिंग टू सी, अगेन एम्पावरिंग थिंग। एंड देन ही फेल सिक, और वो बहुत बीमार हो गए थे। उनको एक अजीब बीमारी हुई थी कि उनको भूख नहीं लगती थी और प्यास नहीं लगती थी। उनके लिए खाना जो था वो सैंड लगता था उनको, कि रेत है, और पानी जो है वो तेज़ाब लगता था कि एसिड है, तो वो खाते नहीं थे। तो बस डॉक्टर्स टोल्ड हिम कि हम इनको घर ले जाइए। तो मैंने अपने भाई को बोला था कि अगर कुछ होगा, इमरजेंसी होगी तो मुझे बुला लेना। तो मैं डेविड धवन साहब के बड़े बेटे रोहित धवन की शादी पे गोवा एयरपोर्ट पहुंचा बॉम्बे से। तो मेरे भाई के मैसेजेस आए, ही वांट्स टू कॉल यू। तो मैंने सीधा फ्लाइट पकड़ी और मैं वापस पहुंचा। तो ही वॉज वेरी फ्रेल, ही हैड नो एनर्जी, बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं थी। तो उनके यहाँ पर एक कागज़ पड़ा हुआ था और एक पेन पड़ा हुआ था, और उन्होंने, मेरे भाई राजू ने कहा कि तुम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तो उन्होंने ऐसे कागज़ लेके मुझसे छुपा के लिखने लगे। उनकी आंखों में एक चमक थी और वो लिखते रहे, बहुत देर तक लिखते रहे, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनर्जी टू राइट। और लिखते रहे, और फिर वो कागज़ उनकी छाती पे उन्होंने गिर गया, और उन्होंने कहा उठाओ, मतलब इशारा किया। तो मैंने उठाया। अब वो उन्होंने क्या लिखा है उसके जवाब में मेरे को देख रहे हैं कि जवाब दे इस बात का। एंड ही हैड ए ग्लिंट इन हिज आइज। तो मैं देखा पेपर, तो उस पेपर पे सिवाय लाइनों के और कुछ नहीं था, क्योंकि ही डिड नॉट हैव द एनर्जी टू फॉर्म सेंटेंसेस। अब ये सिर्फ लाइनें लगी हैं, लिखी हैं, और वो मेरे को देख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं शब्द तो पढ़ ही नहीं रहा, तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उनको एक बड़ा राउंड मैसेज जवाब दिया। मैंने कहा हाँ पापा बिल्कुल, डोंट वरी, एब्सोल्युटली यू आर फाइन। तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड। फिर उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया और मेरे कान के पास अपना मुंह रख के 2 शब्द कहे। एंड फॉर ए मैन हु वॉज गोइंग टू डाई इन द नेक्स्ट 20 minutes, हिज लास्ट 2 words वर लिव लाइफ। सो दिस वॉज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैड। एंड जाते समय भी उन्होंने इतना बड़ा मुझे ज्ञान दिया। मरने से 20 मिनट पहले उनका शब्द 2 शब्द थे, लिव लाइफ। सो मुझे कोई ताकत कैसे डरा सकती है? इसलिए आपने रॉक बैंड उसके बाद मंगाया? फिर हाँ, जब फिर उनके जब प्रेयर सेरेमनी थी, तो मैंने सोचा कि आई विल नॉट वांट टू मैं उनकी ज़िंदगी सेलिब्रेट करूँगा, उनकी डेथ को मॉर्न नहीं करूँगा। तो मैंने अपने भाई को कहा यार हम इनकी लाइफ सेलिब्रेट करते हैं इंस्टेड ऑफ। तो क्योंकि चौथे में क्या होता है, जो लोग करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आमतौर पे लोग सफ़ेद कपड़े पहन के आते हैं, पूजा होती है, जो होना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता था कि अगर मेरे फादर ऊपर से देख रहे हों तो ही शुड सेलिब्रेट, ही शुड से वाह मेरे बेटों ने अच्छा किया। तो वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हिज लाइफ। सो आई डिसाइडेड टू कॉल ए रॉक बैंड। तो हमने एक रॉक बैंड मंगवाया और सब लोगों को बोला सफ़ेद कपड़े कोई नहीं पहनेगा, सब कलर्ड कपड़े पहनेंगे और हंसेंगे जितना भी हंस सकते हैं। हंसते हुए आइए, मुझे ऐसे करते मत आइए, बिकॉज माई फादर लिव्ड ए फैंटास्टिक लाइफ। पर मैंने अपनी मदर को कहा कि मम्मा मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं पूजा वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो मैं करूँ? तो उन्होंने कहा जो तुमको ठीक लगे। तो आप सब लोग आए और सब लोग बैठे थे, और मैंने अपने फादर के सारे जितने भी फनीएस्ट किस्से थे वो सुनाए। बाय द एंड ऑफ दैट प्रेयर सेरेमनी एंड द रॉक बैंड प्लेड ऑल हिज सॉन्ग एंड नॉट इन ए सैड। उनका एक फेवरेट गाना था दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। तो मैंने गाने वालों को कहा इसको खुशी से गाना, तो उसका कोई मॉडर्न वर्जन बनाना। रात को मेरी माँ ने मुझे कहा तूने बड़ा अच्छा किया है बिट्टू, अच्छा किया। आई थिंक आई वॉज मैरिड टू ए ग्रेट मैन। सो दैट वॉज सच एन अमेजिंग थिंग। सर जब आपने माता जी की बात कर दी है, आजकल वो भी बहुत आपके इंस्टा के ज़रिए आपके इमोशंस हम समझ सकते हैं सर।
माता जी को भी लोग देख रहे हैं और बहुत से लोग जो शायद अपने माँ बाप की डांट से परेशान रहते होंगे, माता जी की डांट सुन के उन्हें लगता है जब खेर साहब डांट खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते? I think it is very important to not treat parents as cliches. हम पेरेंट्स को ड्राइंग रूम के एक फर्नीचर के हिस्से की तरह समझने लगते हैं कि ये बूढ़े हो गए, ये रिटायर हो गए, अब ये किसी काम के नहीं रहे। मेरे एक फिल्म में बड़ा अच्छा डायलॉग था कि नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, ज़िंदगी से नहीं। तो मेरे फादर जब रिटायर हुए थे तो उनको 3 साल का रिटायरमेंट डिप्रेशन हुआ था। सो माई मदर आफ्टर शी बिकॉज व्हेन यू लूज ए हस्बैंड you just who you're married to 59 years my parents were married for, you don't lose only a husband, you lose a partner, you lose a friend, you lose a habit, and it's very difficult to live without that person. जीना तो पड़ेगा because जीना जो है वो मजबूरी है और जीना है, but how do I make my mother feel it's all right? So what if your mother has my dad has got, we are there for you. It's very important to make them feel important. It's very important to give them happiness. It's very important to give them joy. And मुझे नहीं पता था कि मेरी ये रील्स जो हैं ये वायरल होती चली जाएंगी. And it has made a difference, even if the difference is to 2% people. But it has made a difference. People now start looking at their parents a little more. I remember I went to Arnab's father was not well. Namaskar. And I went and I understand this emotion. सब लोगों को ऐसा करना चाहिए. I think मेरे फादर एक बकवास गंदा सा स्टूपिड सा जोक रोज सुनाते थे मेरे सारे दोस्तों को. मैं बाहर उनको कहता था सारे दोस्तों को, अंदर जाके ऐसे हंसना जैसे पहली बार सुन रहे हो. मेरा हम एम्बैरस होते हैं. मॉम डोंट टॉक लाइक दैट, डैड डोंट टॉक लाइक दैट. रबिश, इडियट्स. इन लोगों ने तुमको पैदा किया और ये जो बंदा तुम्हारा दोस्त बना है ये 6 महीने पहले बना है. यू वॉन्ट टू मेक योर पेरेंट्स लुक स्मॉलर इन फ्रंट ऑफ दिस समबडी और सम फ्रेंड ऑफ योर्स हु हैज कम फॉर बिकम योर फ्रेंड फॉर 6 months. मेरे फादर एक स्टूपिड जोक, मैं सुनाता हूँ क्या जोक सुनाते थे. लेट मी डेडिकेट दिस जोक. जोक ये था कि एक आदमी साइकिल से नीचे आ रहा था और पुलिस वाला खड़ा था, शाम का वक्त था, और पुलिस वाले ने उसको रोका कि अरे तुम्हारी साइकिल पे लाइट नहीं है. तो आदमी चिल्लाया, आगे से हट जाओ, इसमें ब्रेक भी नहीं है. अब एक बार तो ये जोक पे हंस सकता है इंसान, 25 बार थोड़ा हंस सकता है, पर मेरे दोस्त को इंस्ट्रक्शन थी हर बार हंसना है. और फिर मुझे एक दिन बोलते हैं, तेरे दोस्त बड़े स्टूपिड हैं, सेम जोक पे बार बार हंसते हैं. So I think, I think it's important. You have to fight the cliches of life. समाज जो है आपको महसूस कराना चाहता है कि आप भीड़ का हिस्सा हों, बिकॉज उससे वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी इनके जैसा हूँ, मैं भी उसके जैसा हूँ. बट अगर आप भीड़ से हटोगे तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे, ऐसा मुझे लगता है. सर लेकिन अभी कोई रोल ऐसा बचा है जो रोल आप करना चाहते हैं? इसका जवाब तो मैं 30 साल बाद दूंगा. 30 साल बाद देंगे? अभी तो बहुत जल्दी पूछ लिया है सवाल. ये तो बहुत टाइम है, अभी तो शुरुआत हुई है. सर लेकिन शिमला के लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. हाँ, एक हमारे पार्लियामेंट पहुंच गई हैं. आपका कोई? हिमाचल की है कंगना. यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, वेरी प्राउड ऑफ हर. उसकी लाइफ स्टोरी इज़ फैंटास्टिक. इफ देयर इज अ बायोपिक मेड ऑन कंगना, इट विल बी द मोस्ट अमेजिंग बायोपिक फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर एंड टू द पार्लियामेंट नाउ. व्हाट एन अमेजिंग जर्नी. क्या सर हम आपको भी देखेंगे? नहीं, मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे फिल्मों का काम बहुत अच्छा लगता है. मैं पहले कभी एक बार सोचता था, हर एक को लगता था कि मैं सोचता हूँ. आज मेरे साथ एक फ़्लाइट में आज बड़ा अच्छा किस्सा हुआ. मेरे फ्लाइट में मेरे साथ एक बंदे साहब बैठे थे जिनका सेंट कोलंबस, मे बी ही विल हियर, सेंट कोलंबस में कुछ 50 ईयर्स का यूनियन हो रहा था. तो मुझे बोला, सर दिल्ली का पोल्यूशन देख रहे हैं आप, और चाइना में जो है शंघाई में या पता नहीं कहाँ, शंघाई में पोल्यूशन की रेट कुछ 28 है, यहाँ ये हाल है. मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? ओ आई लिव इन मायामी एंड आई लिव इन न्यूयॉर्क. तो मैंने कहा आपको तो कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं बनता है.
मैंने कहा क्यों? कहता आप तो देश छोड़ के चले गए। मैंने कहा आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू, बट वी आर जस्ट 76-77 ईयर ओल्ड कंट्री। अभी तो हमने शुरुआत की है। 1000 साल तो हमारे ऊपर दूसरे लोगों ने राज किया था। हम 77, 74, 75, 78 साल की टाइम में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3 लार्जेस्ट होने वाले। तो मुझे पर उनका जवाब क्या आया? आई थिंक यू शुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों बोला उन्होंने, मुझे ऐसा समझ में नहीं आया। बट आई थिंक पता नहीं कि आपका सवाल था। मैंने पूछा आप क्या, हम आपको क्या संसद में नहीं, नॉट दैट। आई थिंक किरण वाज इन द पार्लियामेंट एंड शी हैड अ गुड टाइम देयर एंड शी वर्कड वेरी हार्ड। बट मेरा पॉलिटिक्स में आई थिंक व्हेन यू इंडिविजुअली स्पीक अबाउट द कंट्री इट्स इक्वली पावरफुल। इट मेक्स यू फील लोनली, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट योर कंट्री। तो उसके लिए हर इंसान को पॉलिटिक्स थोड़ा ज्वाइन करने की ज़रूरत है। पर प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन यू स्पीक अबाउट द कंट्री पीपल एफिलिएट यू विद द पॉलिटिक्स। नेसेसरी नहीं है। अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? तो बिना काम के एक्टर होता। बनता तो मैं एक्टर ही, मुझे और तो कुछ करना आता नहीं है। मतलब बहुत कुछ आता है, मैंने ट्राई किया, मैंने अच्छी 2-3 किताबें लिखी हैं, ऑल ऑफ देम आर बेस्ट सेलर्स। आई produced films, I run an acting school successfully. I'm a success story of my failures, if I put it like that. सर लेकिन आजकल आपकी फिटनेस की बहुत बात हो रही है। अनिल कपूर साहब आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सर आजकल लोग आपकी फिटनेस की बात कर रहे हैं कि आप रिवर्स गियर में जा रहे हैं। जी हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप मेहनत नहीं कर, देखिए बिना मेहनत करे इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, वरना आप बोलते हैं कि आप वेट लूज कब कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। अपने आप को री इन्वेंट करते रहना चाहिए। आप अपने साथ रहते हैं ना, तो अपने आप को हाउ डू यू मेक योर सेल्फ एंटरटेनिंग। तो मैं जब 60 साल का हुआ था कुछ साल पहले, तो मुझे लगा कि आप मुझे नए तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए, नए तरीके से ज़िंदगी, नए किस्म से रोल करने चाहिए, लीड रोल करने चाहिए। तो जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, फिर मैंने कहा वर्कआउट का डिस्प्ले करता हूँ मैं अपने सोशल मीडिया पे, ताकि मैं टेंशन में रहूँ हमेशा कि ये अभी मुझे बहुत कुछ खाना ना पड़ जाए, बहुत कुछ करना ना पड़ जाए। बट देन इट वाज एवरीथिंग पेज ऑफ। वर्कआउट आप पहले भी करते थे 60? नहीं, मैंने कभी जिम के ऐसे देखा भी नहीं था जाके, अभी शुरू मुझे लगता था मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, वर्कआउट की ज़रूरत नहीं। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज। इट्स ग्रेट एक्सरसाइज। आपको गुस्सा आता है? मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा नहीं आता। इनफैक्ट आप मेरी किसी भी फिल्म में देख लीजिए, मैं गुस्सा इज़ द ओनली इमोशन जो मैं बहुत प्योरली नहीं कर पाता हूँ एज एन एक्टर। दिस इज़ माई वीकनेस एज एन एक्टर, बिकॉज गुस्सा अकॉर्डिंग टू मी इज़ ए वेस्ट ऑफ इमोशन। गुस्सा ऑल्सो गिव्स यू अ फॉल्स सेल्फ ऑफ इम्पोर्टेंस, कि मुझे गुस्सा आया, मैं परेशान हुआ, मुझे लगता है कि गुस्से में आदमी बहुत फनी लगता है। ये हिंदी फिल्म का डायलॉग बकवास है जिसमें बोलते हैं कि गुस्से में तुम बहुत हसीन लगती हो। नहीं लगती है, क्योंकि नथने फूले होते हैं, सांस चल जाता है, तुम समझते क्या हो। इनफैक्ट गुस्से में इंसान अगली लगता है, मुझे ऐसा लगता है। 100% गुस्से में इंसान अगली लगता है। आप लाइफ कोच भी हैं, अगर बता सकें कि गुस्सा जब आए तो क्या करें? सांस लो, बहुत ताकत है सांस लेने में। सांस में बड़ी ताकत है। अभी सुधांशु जी कितना अच्छा बोलते हैं, सुधांशु जी तो कमाल का सुधांशु जी के सुन को ऐसा लगता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे इतनी नॉलेज तो है ही नहीं। सीरियसली कितना अच्छा बोलते हैं वो, कमाल का बोलते हैं। कितनी नॉलेज है एक इंसान के कंप्यूटर में कितनी नॉलेज हो सकती है। कंप्यूटर को भी थोड़ा सा मेल फंक्शन हो जाता है। आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज। ऑल्सो आई हैव चोजन टू बी हैप्पी। You have to make a decision that I will be happy. मैंने डिसीजन लिया था कुछ साल पहले कि मैं खुश रहूँगा, और उसको मैंने 3 महीने प्रैक्टिस किया। 3 महीने मैंने क्या प्रैक्टिस किया, आप भी करके देखिए, कि मेरे को कोई भी कुछ कहे मैं मुस्कुराता रहूँगा। अच्छा ठीक, ओके, तुम बेवकूफ़ नंबर 1। और 3 महीने के बाद प्रैक्टिस तब्दील हो जाती है इन हैबिट। I'm not saying this is not something so difficult. This is a very easy thing to do. बस। आपने एक शो में कहा था कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में वो कौन सा मोमेंट है
अरे अभी तो बोला 500 रुपये का नोट छप गया। मैं मेरी फोटो, मेरे तो हमेशा मेरी हर चीज़ में कुछ भी हो सकता है। मैं थोड़ा आई नेवर थॉट कि लुक एट दिस इज आई एम स्पीकिंग टू पीपल हु आर मोर देन 80% मार्क्स, 38% मार्क्स वाला बंदा। आई एम स्पीकिंग टू पर्सन विद अ ग्रेट हेयर स्टाइल एंड अ ग्रेट माइंड। कुछ भी हो सकता है। दिस गाय इज एन एपिटोम ऑफ मिस्टर गोस्वामी ऑफ कुछ भी हो सकता है। आज जब ये मुझे दिखा रहे थे, इनके अंदर एक फक्र की भावना थी, उसको ये अंडर प्ले कर रहे थे कि यहाँ मैंने बनाया है। मैंने कहा अंडर प्ले क्यों कर रहे हो भाई? व्हाट ए ब्रिलियंट, व्हाट ए स्टोरी। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब विक्रांत मैसी ने कहा मैं इनका रोल करूँगा, जस्ट बिकॉज ही हैज़ हेयर, नो ही हैज़ टैलेंट ऑल्सो। बट आई कैन प्ले योर फादर, I can start from there. I have to be part of your autobiography whenever somebody makes it. I think life is a great inspiration. सर लेकिन अभी विक्रांत यहाँ बैठे हुए थे, पिछले कुछ वक्त में हमने बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स देखे, जो नए एक्टर भी आ रहे हैं। विक्रांत हैं, राजकुमार राव हैं। इन नए एक्टर्स को जब आप देखते हैं तो आपको क्या एहसास होता है? कंपटीशन फील होता है, इनसे सीखने को मिलता है, या आपको लगता है ये तो बच्चे? सीखने को मिलता है, हमेशा सीखने को मिलता है। बिकॉज इफ़ यू लुक एट देम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अलग तरीका है, उनका अलग इंटरप्रिटेशन है। मेरे एक्टिंग स्कूल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ है खोलने का, बिकॉज आई सी दिस यंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस परफॉर्मिंग द सीन इन अ डिफरेंट मैनर। आई थिंक टुडेज जनरेशन ऑफ एक्टर्स इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एंड उनको अनफॉर्चुनेटली विद एवरी फिल्म दे हैव टू कीप प्रूविंग देमसेल्व्स। अभी तो बिकॉज देर इज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन एंड देर इज सो मेनी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट इन द वर्ल्ड दैट आपको हर फिल्म में अच्छा होना पड़ेगा। सो देर आर सो मेनी, रणबीर कपूर जो आपने जिनके नाम लिए, विक्रांत, व्हाट एन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ही गेव। सो आई गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय देम। तो बॉलीवुड में पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है न्यू कमर्स के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दादाजी कहते थे बहते हुए दरिया को कोई नहीं रोक सकता। You just don't have to give up. Because if you are talented, if you are honest, and if you are hardworking, no power can stop you. अब तो मैं जब एक्टर बनने गया था तो मेरे को अपनी फोटोग्राफ लेके जाना पड़ता था। अब तो देर आर कास्टिंग एजेंसीज, देर आर कास्टिंग डायरेक्टर्स, देर आर शोज दैट आर देयर, रियलिटी शोज आर देयर, सिंगिंग के शोज आर देयर, कुछ एक्टिंग के शोज हैं। अब अपने आपका खुद का इंस्टाग्राम पेज या आपका खुद का एक्स जो है, इट्स बेसिकली योर ओन शो रील। But how long can you sustain? Will you be able to survive for 40 years? That has to be seen. जो एक्टर्स अभी मुंबई पहुंच रहे हैं, जो बात मैंने कही, आप वहीं रहते हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हज़ारों युवा पहुंच रहे हैं एक सपने के साथ कि एक्टर बनना है। उसमें से कितनों के पूरे होते हैं ये भी आप जानते हैं, लेकिन क्या करने की ज़रूरत है? जो लोग मुंबई पहुंच रहे हैं, क्या कमी रह जाती है जो कामयाब नहीं होते? हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क। आज मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ जो मेरे एक्टिंग स्कूल के हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू आर ऑनेस्ट, यू विल गेट योर पॉसिबिलिटी। एक ज़माने में तो आपको एक खास किस्म का दिखना पड़ता था टू बी एन एक्टर। आज आप जैसे दिखते हो वो आपकी स्पेशलिटी है, क्योंकि आपको कोई ना कोई रोल मिल सकता है। मैं जब बॉम्बे में गया तो दिस इज़ ए वेरी डिग्निफाइड बॉल्ड लुक, पर जब आप शुरू में बाल झड़ते हैं तो आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं। और मैं जाके हर ऑफिस में बोलता था कि मुझे आप एक्टर बनना, तो कहते एक्टर बाल नहीं है आपके, कैसे एक्टर बन जाएंगे आप? आई वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल। सो मैंने भी सोचा कि मैं कभी ज़िंदगी में बिना बाल के एक्टर बन के दिखाऊंगा, नेवर वेयर ए विग। सो इंडिविजुअलिटी रखने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट नाउ इफ़ यू लुक इन अ सर्टन मैनर, वॉट एवर मैनर, you have a chance of getting that role. But give up is not the possibility. अभी सर पुष्पा 2 आई है, हम ये पिछले कुछ वक्त में देख रहे हैं सर कि साउथ की मूवीज जो हैं वो बॉलीवुड मूवीज के मुकाबले काफ़ी अच्छा कर रही हैं। Of course, because the stories are original. और धरती से ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है with all my love for Hindi cinema, I am a product of that and I'm proud of being part of that. I think हम
कूल बनने की कोशिश में कहानी को भूल गए हैं शायद. टू बी कूल. No, I think the success of Kantara, success of Pushpa is a real example of the earthiness is required. The stories from India is required. सर वक्त खत्म हो रहा है. मैं चाहूँगा आपके साथ कि आप एक शब्द या एक लाइन में जवाब दें. कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी. One of the best prime minister of the country. Sincere, unbelievably sincere towards the country. उनको सिर्फ देश का ख्याल है. अमिताभ बच्चन. The tallest personality in the Indian film industry. When I say tallest, not physically only, the tallest. फिल्म या थिएटर? फिल्म या थिएटर? दो बच्चों में से एक को चुनने को बोल रहे हैं आप मुझे. थिएटर. किरण खेर जी. Theater has a magic of live audience. आप बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, इसका मैजिकल है. थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता है. किरण खेर जी. डायनामिक, ब्यूटिफुल, निडर, अमेजिंग. अर्नब गोस्वामी. my hero. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइव टीवी है ना ये जी. I was constantly thinking, अभी बात करते करते, कि अपने आप को टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है एज एन एक्टर. तो मेरा एक सारांश का एक सीन है जो बड़ा आइकॉनिक सीन था कि वो बीवी प्रधान जाते हैं कस्टम ऑफिस में और कस्टम ऑफिसर को कहते हैं कि मुझे, या तो वो कहता भैया यहाँ सब लेने आते हैं. वो सीन बहुत बार दिखाते हैं. अगर वो 10 हिंदुस्तान के बेस्ट सीन लिखे जाएं सिनेमा में से, इनमें से एक था. तो मुझे बहुत सारी बार लोग पूछते हैं कि आप 28 साल के थे, आपकी शादी नहीं थी, आपका बच्चा नहीं था, तो आपने वो सीन कैसे किया. तो आई वुड लाइक टू ट्राई दैट सीन राइट नाउ in front of the live TV to see whether I still have that in me or not. Unless you put yourself out there, how will you prove that you are not rusted as an actor? बड़ा difficult मैंने पंगा लिया है, मगर लेता हूँ. तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि तो मैंने कैसे किया सीन, क्योंकि मेरे तो ऐसे कोई सिचुएशन थी नहीं. मैं 65 साल के बुजुर्ग का रोल कर रहा था. तो उस सीन को करने से पहले मैंने भट्ट साहब को ये कहा कि भट्ट साहब एक काम करते हैं, आप कैमरा तैयार रखना, मैं अपनी पीठ इस तरफ करूँगा और जब मैं तैयार होऊंगा तो मैं ऐसे हाथ से इशारा करूँगा और आप जो हैं इसका मतलब कैमरा रोल कर देना, एंड देन आई विल डिलीवर माई लाइन्स. So what I did was that I stood like this and I thought that यार मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर बढ़ा के एक्टर बना के भेजा है और मेरा कुछ हो नहीं रहा है. मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता हूँ यार, और अगर इस फिल्म में मेरा कुछ नहीं हुआ तो मेरा कुछ भी नहीं होगा. मेरे लिए फिल्म का ये सीन बड़ा इम्पोर्टेंट है यार. टीवी लेने नहीं आया हूं मैं, अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूं. एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए भी मुझे ऊपर रिश्वत देने पड़ेगी? आपके पास इतना वक्त होगा कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए प्लीज. बस जिंदा है, जिंदा है, एक्टर जिंदा है. This was a wrong chance to take, but
13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals.
जब यह सृष्टि उत्पन्न होगी तो एक अव्यक्त ब्रह्म है जो सदैव अस्तित्व में रहता है, जिसे वेदों में प्रकृति और पुरुष कहा गया है। तो अव्यक्त ब्रह्म तो सदैव रहेगा, चाहे सृष्टि रहे अथवा न रहे। परंतु जैसे ही दूसरा प्रकृति अस्तित्व में आती है तो वो एक दूसरा तत्व एग्जिस्टेंस में आ जाता है। हमारे यहाँ हर चीज कैसे लिखी जाती है कि ये अमुक ग्रह यहाँ पर था, अमुक ग्रह यहाँ पर था, अमुक नक्षत्र था, तो 5000 साल नहीं 50,000 साल बाद भी, 1 लाख साल बाद भी अगर उसको कोई पढ़ेगा तो वो देख के बता सकता है कि ये टाइम ड्यूरेशन इस समय हुआ होगा। मैं समझता हूं मुझे जो भी बनाया है ठोकरों ने बनाया, लुढ़कता हुआ आ रहा हूं मैं। और आप लुढ़कते लुढ़कते किसी दिन किसी के हाथ पड़ जाते हैं, आप जैसे श्रोता मिल जाते हैं और कहते हैं यार बड़ा अच्छा लगा आप, लेकिन वो अच्छा आपको क्यों लगा? क्योंकि वो ठोकरों ने उसे तराश दिया। मैं आंगन में उगा हुआ वृक्ष हूँ, पॉटेड प्लांट हूँ नहीं, तो कहीं भी नहीं लगा सकते आप मुझे। लगाएंगे तो अपनी जड़ों में जुड़ा हुआ महसूस करेंगे उसको। ये सिर्फ एक डायलॉग था, मोनोलॉग था। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट चीज़ वर्ड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट दिस एक्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ पूछ दूँ। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की खुशियाँ। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद आपने आर्टिकल 370 की। बहुत से लोगों ने पूछा कि यामी गौतम नरेंद्र मोदी फैन है। वी फील वेरी सिक्योर्ड एंड वेरी सेफ टू बी लेड बाय हिम। मैंने भी जब पहली बार जब उरी की अगर बात की जाए, आदित्य से जब बात की कि क्या सच में ऐसा हुआ था, इसे एब्सोल्युटली ऐसे ही हुआ था। सो यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू कैरी आउट समथिंग लाइक दैट फॉर योर कंट्री। मैं तो रिपब्लिक टीवी बहुत प्यार कर दिया। पहाड़ी में भी बोल देते हैं कि तुम्हारा जो बहुत 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 ज़्यादा, तुम्हारा जो प्यार, तुम्हारा जो सम्मान, तुम्हारी रिस्पेक्ट। उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. The deadlock between the BCCI and the PCB has finally come to an end, and the ICC's efforts have finally paid off. The Champions Trophy, as confirmed by the ICC, will be played in the hybrid model. The time was running out for the ICC considering the financial implications of the marquee event. The stakeholders of the Champions Trophy were also not very happy with the ICC considering the fact that they were not being able to tap into the financial gains of such a big event. The Board of Control for Cricket in India, from Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Viewers, a very good afternoon. We're live and breaking this Sunday. It's a blockbuster weekend as usual, viewers, where a lot of news updates are coming in. Latest controversies erupted. Congress has stooped to a new low after the Karnataka Minister Priyank Kharge has said that the Union Home Minister Amit Shah has been bitten by a rabid or a mad dog. That is right. That is the top story coming in. We'll tell you more about this, but as usual, the headlines. Let's get started. कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है. Prime Minister Modi on a two-day visit to Kuwait addresses Indian diaspora, hails India's achievements. PM's power pack Kuwait visit day 2 today to attend spectacle to defense deals and hold key bilaterals. There are groups within India who are aligning with the anti-India groups operating from outside the country. This is known. And then we have countered them politically and successfully. After Fadnavis's big disclosure, Kiran Rijiju says groups in India are hands in glove with the anti-India forces. Amid face-off over Baba Sahib Ambedkar, Karnataka Congress Minister targets Home Minister, says Shah is bit by a mad dog. Multi-story building collapses in Mohali, 2 killed, several trapped, rescue operations are underway. Let's start with the big story coming in. Political face-off is heating up. That is right. Over Ambedkar Rao, the latest coming in, the Congress has made a distasteful remark. And we're coming to know that Congress has stooped to a new low. Karnataka Government Minister Mallikarjun Kharge's son Priyank Kharge made a distasteful remark. And he says, I condemn Amit Shah's statement and he's bitten by a mad dog. And I want to go ahead and play out that exact statement of Priyank Kharge, where he has made this distasteful remark. Baba Sahib Tattva, Baswa Tattva, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ RSS ತತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಕಡ್ದಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ತತ್ವ, ಬಸವ ತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ RSS ತತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಕಡ್ದಿದೆ.
what happened to their leader when they insulted Ambedkar, when they defeated Ambedkar, when they denied Bharat Ratna to Ambedkar, and they opposed his cremation in Delhi, and also a memorial in his name where his last rites had taken place, all such things. At that time, what had happened, Mr. Kharge should reply. And I only tell Mr. Priyanka Kharge, whatever our political differences, so far as I have seen, they are always talking against the mandate of the people. प्रियंक खड़गे ने एक बयान दिया है अमित शाह पे. उन्होंने ये कहा है कि उनको किसी कुत्ते ने काट लिया है. ऑल दिस बिकॉज जो अम्बेडकर राव चल रहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और उनको लगता है कि कितना चमचाई कर ले. उनके पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा है. वो सब जानते हैं कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वहाँ तो माता जी, भाई जी, बहन जी 3 नेता हैं, तब ना चौथे नंबर पर खड़गे जी हैं. लेकिन आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि हम ही देश को चलाने वाले लोग हैं, दूसरा कोई नहीं चलाएगा. देश के आज़ादी के 75 वर्षों में 55 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश को लूटने का काम किया. ये लूटने की तैयारी कर रहे हैं. All right, let's go ahead right now to our guest who's joining us, G.S. Prashant, BJP spokesperson joining us. And thank you for joining us here on Republic TV this Sunday. Mr. G.S. Prashant, I want to first ask you, what do you really think about this statement which has been made with absolutely no taste, distasteful statement? And it's very obvious that this is a statement which goes by, if you talk about what happened in the parliament in the past few days, the last days of winter session, where we saw assault, physical fight, scuffle. We saw Rahul Gandhi has a police complaint against him for assaulting members. Not a big surprise given the fact that we have seen this, that Priyank Kharge, Mallikarjun Kharge's son, and the Karnataka minister has said this about the Union Home Minister, called him a mad or a rabid dog. Go ahead. See, this depicts the mindset of the Congress. The Congress leader probably is mentally ill. He is not able to digest the fact that BJP has come back to power for a historic third term, and whatever little chances that Congress is hoping that they return to power in many states, whatever, it's not happened. So therefore, out of sheer frustration, they are making these distasteful comments and forgetting that it was Congress who has time and again insulted Ambedkar by denying him a ticket, by ensuring he loses elections, by not giving him a proper tribute after he passed away. They did not give him space for conducting his final rites. So therefore, and if you look at Ambedkar's own interviews by 1948 and 1952, it's very clear as to how divisive Congress is and why people should not be with Congress. So therefore, the mindset of the Congress is exposed, and more so coming from a dynasty politician, Priyank Kharge, son of Mallikarjun Kharge. First, he has to check with the Gandhi family what they have done to his father. Even when Priyanka Gandhi had to file the nomination, the Congress president had to step outside and peep through the door. That is the respect that Congress gives to a senior Dalit leader. Therefore, Congress has always been anti-Dalits, and they're only doing lip service by bringing Ambedkar, but they never believe in the philosophy of Ambedkar, or nor do they believe in social justice. They only want to please one family, the Gandhi family, and they are willing to be servants of that family for lifelong, but governance will take a backseat, and nation would come last for Congress, and the first family of Congress is everything for them. And you cannot expect better statements from them because they're leading from the front. Sonia Gandhi had called PM names. Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi, and their extended family members, everybody have resorted to name calling of BJP leaders only to stay in limelight because people have rejected them everywhere. So therefore, out of sheer frustration, they're making these comments. And Priyank Kharge, I would suggest that he goes see a good doctor and get his illness cured. What more can we say? We only hope that he recovers soon and becomes a sane person.
Right. And, and like you very clearly explained to our viewers that the Ambedkar Rao has really been blown out of proportion to a level that we see where distasteful comments are being made. We're also seeing again and again that no decorum is being maintained by these leaders. But then again, Kuwait viewers, we have to move to Kuwait viewers because we're getting these pictures coming in right now. PM Modi is on a 2-day visit to Kuwait and he has a very, very tight schedule ahead. And those are the live pictures we're getting for you. First on Republic. Right. Okay, so viewers, PM Modi meeting the Emir of Kuwait and those are pictures coming in because PM Modi is in the last leg of his Kuwait visit. Prime Minister Modi is expected to sign MoUs to boost further bilateral relations between India and the Gulf nation. And it's going to be very important because we will be seeing back-to-back developments coming in this regard. The first day of the Prime Minister was also quite fantastic, especially when he addressed the Indian diaspora in Kuwait. All right, joining us live is Major General A.K. Sivach, defense expert, joining us live as we look at these pictures. What do you really make out of these, warming up of ties between India and Kuwait, which did see a little bit of cold relations in the past, but PM Modi becoming the first premier in 43 years to visit the country? Swangi, no doubt. See, last time Prime Minister Indira Gandhi visited in 1981. Now, after 23 years, Prime Minister Modi visiting Kuwait, and the Kuwait is very important to India. You see, it is the 6th largest crude oil supplier, 4th largest LNG supplier. It has a trade with India almost about more than $10 billion. There are about 10 lakhs Indians which are working there in Kuwait itself, and the population of 20% of the complete Kuwait. In fact, the working force is almost 30%. And there is a chance of a free trade agreement also taking between Kuwait and India. See, as far as India is concerned, Kuwait is a very important strategic partner. In between, possibly we have not paid so much attention to Kuwait, but realizing it that today it is holding a presidentship of GCC, that is Gulf Council Cooperation, and in which there are 7 countries which are also oil-rich countries. So overall, one can say Der aaye, durust aaye, but a very important visit as far as Prime Minister Modi is concerned. There are a number of issues which are going to be resolved. Prime Minister Modi is meeting basically the Amir, also the Crown Prince, as well as the Prime Minister. The discussion will build on energy, trade, also on the defense, science and technology, and also that trying to now increase this trade, which is there only about $11 billion. India has huge market. India wants
Kuwait to sign this free trade agreement, which he can make use of India's economic development. Investment can be done. I suppose overall this visit is going to be very, very fruitful. It's going to be historic, and there are a number of positive which are going to come out of this visit. Yes. Yes, and as we keep showing these pictures, we saw that PM Modi has received a guard of honor there just a short while back as we were showing our viewers those pictures. But also, one of the key agendas would also be that there should be free trade agreement between India and the Gulf Cooperation Council, which is chaired by Kuwait. So this is going to be very important, given the fact, and you can speak a little bit more on this, about strategic partnership, which benefits both the nations. Absolutely. See, no doubt about it. As I told you that the presidentship of GCC is today with Kuwait. And Kuwait is very important to India. And in case there is a free trade agreement between the GCC and India, it will be a win-win situation. Remember that if a free trade agreement take place, you will find that the Indian goods going to Gulf much easier, and reciprocally you find that the number of items coming from Gulf to India. So free trade agreement is going to benefit both this Gulf also as well India, and India is very keen we should sign this free trade agreement, and I suppose that we will find some positive development during Prime Minister Modi visit. The another issue is the defense. You know, we want a defense cooperation in with the Gulf countries, also with Kuwait. I think some concrete step you will find it wherein that the Kuwaitis coming to India and also doing training in our academies, whether it is National Defense Academy or Indian Military Academy. I suppose that will also come through. And the third very important thing is, see, it is India's not only Act East policy. India is also looking toward the West. The way we are looking toward the West Asia, we have the best of the relationship with almost all the countries, be it Israel, be it the Muslim world of Saudi Arabia, UAE. Now we see the Kuwait also. So overall, India is very keen to find a good market in Gulf countries, also to ensure that there is a energy security, because 65% of our total oil comes from that region. Of course, 3% only come from Kuwait. So the point today is coming out is that this region is very important to us. U2, I2 is also that side. India, Middle East, Europe Economic Corridor will also pass through the Gulf country. So overall, one can say with a lot of conviction that India Prime Minister visit to Kuwait is going to be historic. It's going to be a game changer. It is going to be a force multiplier, and you'll find it a lot of new issues which are going to become, and it will be positive for both the countries. Right, Major General A.K. Sivach is joining us. And as we keep looking at those pictures, Major General, we can also talk a little bit more about PM Modi's interaction that he had with the labor camp there, where he inspired them with his words. And very interesting statement that he made. India has a skill for the new Kuwait. And this really shows that, in a way, if we could talk more on this, that Kuwait has recognized that Indians are extremely important to the new framework it wants to put in place. And that's a reason we see so much of the ties being revived, you can say, almost between India and Kuwait after a very long time. Would you agree on this? Absolutely. See, as far as India is concerned, it's a soft power which is available with India. You know, the Indians are the most sought after in Gulf countries because they find it that not only they are technically qualified, they are also peace-loving, and they only believe in doing a hard work. Compare it with other Muslim countries, you know, being all these countries Muslim, they are not very keen to have, people coming from Pakistan, Bangladesh and other South Asian countries. They prefer Indians coming because Indians are one, that they are part of a soft power, they are technically qualified, and they do extremely good job. And that's why you find maximum, about 1 crore Indians are working in the Gulf today, and they are giving us the remittance more than almost about $40 to $50 billion. The question comes is that now you've seen the Prime Minister visiting
the basically living accommodation of these blue workers which has come from India, and he has interacted with them because they are the bridge between India and the Gulf country, and especially in the Kuwait, where the 20% of the population and 30% of the working force are Indians there. So therefore, it is very important that we have the best of the relation, and very rightfully he has gone and met them, because remember the unfortunate incident took place last year where 45 laborers were killed. So therefore, it was very important for him to go and see by himself what are the living conditions for these blue collar workers. But overall, one could see it, he is an inspiring force. Wherever Prime Minister Modi goes, you find that a lot of positive energies being exuberated there. As it is after Prime Minister Modi has taken over in last about 11 years, you find the Indian image has gone up anywhere and everywhere in the world. So Indians are seen with a lot of respect. And same way it is taking place in Kuwait. One can say with a lot of conviction that the relationship between India and the Gulf countries are on the upswing, be it Saudi, be it UAE, be it Oman, be it Bahrain, be it now Kuwait. You will find it now the trade, which is approximately $100 billion out of this country, will increase tremendously. And if we sign a free trade agreement, I suppose it will be a game changer, and it will be a win-win situation for India as well as for these countries. All right, thank you for joining us, Major General A.K. Savach. As we see those pictures coming in, PM meeting Emir of Kuwait, he'll meet the Crown Prince later. And also we can expect a lot of MoUs to be signed. We will be getting you all the top updates right here on Republic TV. And we move ahead right now because we're getting a big breaking update coming in. There is a statement which has been made by the CPIM, that is right. And this is on the seat which was won by Priyanka Gandhi from Wayanad. Communist Party of India Marxist Politburo member A. Vijay Raghavan alleged that a communal Muslim alliance was behind the victory of Congress leaders Rahul Gandhi and his sister Priyanka Gandhi from the Wayanad Lok Sabha seat. Congress versus CPIM. Communal Muslim alliance helped Congress win. So this is the big breaking update we're getting for you right now, viewers on Republic TV. And remember that Priyanka Gandhi has just become an MP in this winter session, and from the Wayanad seat. After that, we are seeing that there are a couple of reactions which have come in. CPIM leader says that Communal Muslim Alliance is behind Rahul and Priyanka Gandhi's poll victory in Wayanad. So these are back-to-back updates coming in right now on Republic TV. We will be tracking these updates. And what we see right now, viewers, is that the CPIM Politburo leader A. Vijay Raghavan says that the reason behind the poll victory of Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi from the Wayanad Lok Sabha seat was because of Communal Muslim Alliance. And he has said two people have gone from Wayanad, meaning Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, with whose support he's asking. With the strong support of the Communal Muslim Alliance, without their support, was it possible for Rahul Gandhi to reach Delhi? So this is one of the top updates we're tracking here on Republic TV. All right, let's move on right now to some of the other stories we're tracking, viewers. The Lok Sabha Secretary has now appointed a JPC chairperson. That is right. Now, this is for the One Nation, One Election. PP Chaudhary emphasized that the importance of JPC's role in analyzing the feasibility and mechanics of simultaneous elections. Take a look at this report as we get you the biggest updates. The Lok Sabha Secretary has appointed BJP MP PP Chaudhary to lead the Joint Parliamentary Committee. PP Chaudhary will examine the simultaneous polls bill. Addressing the media, PP Chaudhary emphasized JPC's role in One Nation, One Election bill. ये महसूस किया गया लंबे समय तक कि इससे खर्चा भी जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बढ़ता है, पब्लिक के उसके सीधा भार पड़ता है। और दूसरी बार
बात जो है वो है कि अलग अलग चुनाव होने से मशीनरी जो है पूरी की पूरी टाइम टू टाइम वो लगी रहती हैं, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो बिल पेश हुआ लोकसभा में, उसको लोकसभा ने पूरा बिल जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है उसको दिया है। उसमें 27 मेंबर जो हैं वो लोकसभा के हैं और 12 जो हैं वो राज्यसभा के हैं। तो पूरी जेबीसी जो है वो समय समय पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसमें जो रखते हैं वजूद रखते हैं, उनको सुना जाएगा। उसके अनुसार जो है बाद में सरकार को निर्णय लेना है। The newly formed committee for One Nation, One Election will now have 27 members from the Lok Sabha and 12 from the Rajya Sabha, making it a total of 39 members. The panel, which was initially set for 31 members, has now expanded after smaller parties urged Lok Sabha Speaker Om Birla to include them in the crucial committee. The committee will also have Congress MP Priyanka Gandhi, BJP MPs Anurag Thakur, Sambit Patra and Bansuri Swaraj among others. Meanwhile, the Lok Sabha adopted a resolution referring the bills on unified elections to a joint parliamentary commission amid the winter session uproar. Sending you back-to-back updates, viewers. Here, Republic TV. Prime Minister Modi receives Guard of Honor in Kuwait. Also meets Emir of Kuwait, and he will be signing MoUs later on. Stay tuned. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردى ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين وللعرب، وأيضا الدعم الكامل الذي يتم تقديمه لهم من حكومة نتنياهو وسموتريش وابن غفير على ليقوموا بهذه الأعمال.
यहाँ रिपब्लिक परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, अर्णब गोस्वामी जी और उनके श्रीमती जी, माता जी, मदर इन लॉ और हमारे ऐश्वर्य जी जिन्होंने बड़ा प्रबल आग्रह किया। देखिए, आज जो आपने विषय रखा है साहित्य, सुर, शक्ति और संगम, अभी अभी मालिनी जी की जो प्रस्तुति आपने देखी, दुनिया में कहीं आपको किसी संस्कृति में ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि उन्होंने शमशान की होली बताई, अर्थात मृत्यु भी एक उत्सव की तरह लिया जाता हो, उसमें भी एक आनंद का अनुभव किया जाता हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय संस्कृति में मिलेगा। हमारे यहाँ कहा गया है कि मृत्यु कोई समाप्ति नहीं है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर धारण करता है वह तब नव काया रूपी वस्त्र बहाकर। यानी वो एक पड़ाव है, वो एक मंजिल नहीं है। और यूँ दूसरे शब्दों में कहें, जो लोग स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं उनको लगता है कि एक लाइन कहीं से शुरू होगी और कहीं पे एंड हो जाएगी, पर हम तो सृष्टि के चक्रीय क्रम में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ सर्किल है और सर्किल निरंतर चलता रहता है। वहाँ के ऊपर कोई एंड पॉइंट आपको सर्किल के सर्कमफ्रेंस में नहीं दिखाई पड़ता। अब देखिए, जो साहित्य और सुर की बात कही गई, भारत में साहित्य और सुर इन दो चीज़ों का ऐसा संगम है। आपने कभी मार्क किया इस बात को कि वेस्ट में जो मूवीज़ होती हैं उनमें गाने नहीं होते उतने जितने भारतीय मूवीज़ में होते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी रचनाएं हैं सब लय में हैं। हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं वो छंदों में लिखे गए हैं। मतलब आप वेदों के मंत्रों से ले लीजिए, पुराणों के श्लोक से ले लीजिए और रामचरितमानस की चौपाइयों तक ले लीजिए, सब एक मीटर में है। अगर चौपाई में 16-16 की 4 मात्राएं होती हैं, दोहा में 13 और 11, 13-11 होता है, तो ये सारे के सारे एक रिदमिक मीटर्स में हैं। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज लय और छंद के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए आपने शायद कभी इस विषय के ऊपर ध्यान दिया हो अथवा न ध्यान दिया हो कि हमारे यहाँ जो डूम्स वर्ड है, जो चूंकि अभी आपने शमशान की बात कही, डूम को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रलय। प्रलय का अर्थ क्या हुआ कि जहां पर लय समाप्त हो जाए वहां पे प्रलय है, और संपूर्ण जगत जो है वो एक विशेष प्रकार की लय में रहता है, यानी एक संगीत की रिदम में रहता है। अर्णब जी आ गए हैं। जी, अनुपम खेर जी, विक्रांत जी, सभी का स्वागत है। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि देखिए हमारे यहाँ क्या बात है, आप एक छोटे छोटे शब्दों को अगर आप समझें तो आपको समझ में आ सकता है। हमारे यहाँ जीवन लय है, और अगर संपूर्ण सृष्टि की लय समाप्त हो गई तो वो प्रलय है। अब आप कहेंगे, अभी तक जो साइंस में जिन लोगों को थोड़ा थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, उन्होंने अगर देखा हो तो आज से 100 साल पहले माना जाता था, 125 साल पहले, कि एटम अनडिविजिबल पार्टिकल है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए इंडिविजिबल पार्टिकल, अब 2012 में हिग्स बोसॉन खोजा गया, अब आ रही है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि देयर इज नथिंग लाइक पार्टिकल, इट्स ओनली वेव्स ऑफ एनर्जी। और वेव्स ऑफ एनर्जी जहां पर सुपर इम्पोज करती हैं वहां पे एक एनर्जी का पैकेट बन जाता है और वो हमें पार्टिकल का फील देने लगता है। पार्टिकल इज नथिंग बट कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ जो एनर्जी हुई है वहां से आता है, अर्थात संपूर्ण प्रकृति तरंगों में या लय में ही विद्यमान है। और जब लय एक विशेष अवस्था में होती है तो सृष्टि का अस्तित्व है, जब लय विशेष अवस्था से अलग हो जाती है तो सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आप देखिए हमारे यहाँ सारे मंत्र लय में हैं, और मंत्र, इसीलिए आप एक बात और मार्क करिए, जब लैंग्वेजेस की बात की जाती है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसका अर्थ ये, उसका अर्थ वो, बहुत से लोग वेदों का अर्थ क्यों नहीं समझ पाते। संस्कृत भाषा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शब्द हैं ही नहीं, दैट इज नथिंग बट एन वाइब्रेशन। उसमें अर्थ की जैसी चीज नहीं है, वो अनुभूति करने की चीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप सबने भी अपने जीवन में कभी न कभी जरूर सुना होगा, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो कुछ चीजें क्या बोली जाती है देवी की स्तुति, ओम ऐं हीं क्रीम। ये शब्द नहीं है, इसमें अर्थ की जानने की आवश्यकता भी नहीं है, ये अनुभूति की चीज है, ये एक वाइब्रेशन है, ये एक लय है, ये एक पल्स है जिसे फील करना। और ये बात कोई ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ कहा गया है, न शक्यते वर्ण युतुम गिरायत
स्वयं तदंतःकरणेन ग्रह्यते। इसका अर्थ हुआ न शक्यते, नहीं कर सकते, वर्णितुम, जिसका वर्णन, गिरा अर्थात वाणी से, वो चीज है जो स्वयं तदंतःकरणेन ग्रह्यते, वो अपने अंतःकरण से ग्रहण की जाती है। इसीलिए अगर आप कहें, हम सबको पढ़ाया जाता है कि हम लोग सबने स्कूल में पढ़ा होगा व्हाट इज मैन, मैन इज अ सोशल एनिमल, वो एनिमल पे ही पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि व्हाट यू आर फंडामेंटली, हमारे यहाँ कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंसीडरिंग योरसेल्फ एज एन एनिमल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरिंग योरसेल्फ एज अ डिवाइन ऑब्जेक्ट। बट वो एनिमल से डिविनिटी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, उसमें साहित्य और सुर दोनों आते हैं। हमारे क्या कहा गया है, पशु और मनुष्य में अंतर कहाँ पे आता है, साहित्य संगीत कला विहीना। अगर साहित्य संगीत और कला ये तीन चीजें नहीं है तो वो क्या है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। समझिए एक ऐसा पशु है बस जिसके सींग और पूंछ नहीं है। तड़म न खाद्यान न पि जीवमान तदभाग देयम परमम पशुराम। बस ये समझिए कि वो घास फूस नहीं खा रहा है, एक पशु की तरह ही जीवन जी रहा। अर्थात निचले स्तर की चेतना से उच्च स्तर की चेतना आपको साहित्य और संगीत और कला तीन चीजें लेके जाती है। और बहुत से लोगों ने शायद इस पे ध्यान भी ना दिया हो, साहित्य की जो परिभाषा है वो भी क्या है, सहितस्य भावा इति साहित्य। सबके हित का भाव जो है वो साहित्य है। और इसीलिए हमारे यहाँ हर चीज का जितना स्ट्रक्चर्ड सेटअप आपको मिलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और भी कहना चाहूँगा। हमारे संगीत के राग हैं, तो आपको अब यहाँ इतने जानकार लोग बैठे हैं, मालिनी जी जैसे, उनके सामने बोलना उचित तो नहीं लगता है। अलग अलग समय का अलग अलग राग है। कौन सा राग मॉर्निंग में गाना है, कौन सा राग इवनिंग का है, कौन सा राग वर्षा ऋतु का है, कौन सा शरद ऋतु का है। ऐसा डिवीजन आपने कभी किसी दूसरी जगह म्यूजिक में देखा है? एंड नाउ फॉरगेट अबाउट रागाज। जो भोजन है वो भी हमारे यहाँ अलग अलग है। हमारे यहाँ ये है कौन सा भोजन मॉर्निंग में खाना है, कौन सा इवनिंग में खाना है और कौन सा नाइट में। जैसे दही मॉर्निंग में खाने की चीज है तो दूध रात में पीने की चीज है। कौन सा भोजन वर्षा ऋतु में खाना है, कौन सा जाड़े में खाना है, कौन सा गर्मी में खाना है। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा, इस सृष्टि की जो लय है उसके अनुसार जीवन कैसे जिया जा सकता है, उस पूरी एक व्यवस्था को भारतीय दर्शन, हिंदू दर्शन या सनातन दर्शन ने अपने में स्थापित किया। एक प्योरली साइंटिफिक तरीके से कैसे जीवन जिया जा सकता है। और वो साइंटिफिक जीवन जीने के लिए सिर्फ साइकिल दिन की नहीं है, साइकिल सिर्फ मौसम की नहीं है कि कुछ महीने के बाद क्या होगा। साइकिल ईयर्स और जनरेशंस की भी है। जैसे कुंभ का मेला आने वाला है, ये कितने साल में एक बार आता है? 12 साल में। 12 साल में एक बार क्यों आता है? अब यहां हम सेलेस्टियल साइकिल पे चले गए। ये देखिए, हम जब लय की बात कर रहे हैं तो सांसों की लय से लेके और सृष्टि की लय तक। अब वो जुपिटर 12 साल में एक बार अपनी राशि पे आता है, तो प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में कुंभ होता है। जैसे अभी जो अगले महीने कुंभ होने वाला है, तो जब जब बृहस्पति वृष राशि पे होगा और चंद्रमा भी वृष राशि पे होगा और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो प्रयाग में महाकुंभ होगा। तो आप सोचिए फिर हम वहां से कहां तक जाते हैं। जो अभी मालिनी जी ने अपने नृत्य में दिखाया, तो जो आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी जो तांडव नृत्य करते हैं, तो यानी जब सृष्टि समाप्त होगी तो भी वो एक रिदम के साथ होगी। और आप लोगों ने शायद कभी ध्यान दिया हो, जब भी आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी तांडव करते हुए, उसमें तो कौन सा पैर उठा हुआ देखते हैं? एक पैर स्थिर रहता है, एक पैर उठा हुआ, तो हमेशा आप लेफ्ट पैर उठा हुआ देखेंगे। उसका रीजन क्या है? और ईश्वर ने आपको 2 ही पैर दिए हैं, जो हम सबसे विकसित क्रीचर ऑफ द यूनिवर्स हैं। जब यह सृष्टि उत्पन्न होगी तो एक अव्यक्त ब्रह्म है जो सदैव अस्तित्व में रहता है, जिसे वेदों में प्रकृति और पुरुष कहा गया है। तो अव्यक्त ब्रह्म तो सदैव रहेगा, चाहे सृष्टि रहे अथवा न रहे। परंतु जैसे ही दूसरा प्रकृति अस्तित्व में आती है तो वो एक दूसरा तत्व एग्जिस्टेंस में आ जाता है। When the duality comes, then the universe comes. और जब यूनिवर्स का लय होना है, समाप्त होना है, प्रलय होना है, तो क्या होगा? फिर प्रकृति समाप्त हो जाएगी और पुरुष जो है वो यथावत रहेगा।
इसलिए एक पैर हमेशा जमीन पे रहेगा, दूसरा पैर उठ जाएगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे माइंड में इस ढंग से हमने कभी इसको एनालाइज नहीं किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी पर्व होते हैं, सब सेलेस्टियल क्लॉक से होते हैं। आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि वेस्ट वाले लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि वो हिस्ट्री में जाके उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं मिल रही। वो डेट इसलिए नहीं मिल रही है कि तुम्हारी हिस्ट्री 2000-3000 साल पुरानी है और हमारा तो 50,000 1,00,000 साल पुराना भी है। अब मैं इमेजिन करूं, जैसे मैं आज आपसे कहूं कि कोई कहे कि टुडे इज 20 दिसंबर 2024, आप 20/12/2024 रख दीजिए, ये सभ्यता समाप्त हो जाए। 5,000-7,000 साल के बाद जब इस सभ्यता से कोई कनेक्ट ना हो, किसी प्लेट पे या किसी पत्थर पे 20/12/24 लिखा हो, तो वो जनरेशन समझ ही नहीं पाएगी व्हाट डज दिस फिगर मीन्स। 2012-24 हमारे यहाँ हर चीज कैसे लिखी जाती है कि ये अमुक ग्रह यहाँ पर था, अमुक ग्रह यहाँ पर था, अमुक नक्षत्र था। तो 5,000 साल नहीं, 50,000 साल बाद भी, 1,00,000 साल बाद भी अगर उसको कोई पढ़ेगा तो वो देख के बता सकता है कि ये टाइम ड्यूरेशन इस समय हुआ होगा। इसीलिए व्हाट यू कॉल मुहूर्त and how it connects with the modern science, I would just like to say again, अब एक बार आप छोड़ दीजिए उसको जो हमने कहा सृष्टि की लय है और संपूर्ण संसार और ब्रह्मांड कैसे घूम रहा है और हमारे मुहूर्त। अब आ जाइए एकदम मॉडर्न साइंस पे। 20वीं सेंचुरी की जो सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट माना जाता है वो आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो वो कहती है यूनिवर्स में अगर किसी चीज़ को डिटरमाइन करना है तो सिर्फ एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखें ना कमरे में, यू एक्स वाई एंड जेड, वो कहता है एक्स वाई जेड नहीं है, टाइम भी होना चाहिए, दैट इज 4th डायमेंशन। क्योंकि अगर आपने यहाँ पोजीशन बताई तो आपने तो धरती को स्थिर मान लिया, पर धरती तो स्थिर नहीं थी ना धरती स्थिर है न सूर्य स्थिर है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता हो या ना पता हो, सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर काटता है 26,000 साल में एक बार। इट टेक्स 26,000 ईयर्स। तो जब सब कुछ मूव कर रहा है तो उसने कहा वो टाइम होना चाहिए, टी। तो ही सेड द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एनी पोजीशन इन द यूनिवर्स विल बी एक्स वाई जेड एंड टी, एंड देन हाउ यू विल मेजर द टी, which can be the absolute measuring parameter, most scientific, never changing, and which is equally applicable on Earth or Moon, on Mars or any point in the space in the solar system. It is only relative positions of the planet. That's why हमारे यहाँ हर चीज में मुहूर्त का महत्व है। वो क्या है? आइंस्टीन्स मोस्ट sought after 4th dimension. That is depicted in the most accurate measuring parameter, most equally applicable and most perfect parameter of time में। अब एक और बात आप इससे समझिए, आप एक हाइपोथेटिकल बात कह सोचिए, जो कहा जाता था ना कि बिग बैंग थ्योरी आई तो वहां पर यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। व्हाट इज टाइम अगर आप पूछें तो टाइम क्या आना शुरू हुआ तब टाइम का एग्जिस्टेंस आया। इफ देयर इज नो चेंज, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि 5 मिनट के लिए इस कमरे में सब कुछ रुक जाए, तो 5 मिनट के लिए समय रुक गया ना। अब आप इनिशियल स्टेज में सोचिए, व्हेन देयर वाज नथिंग इन द यूनिवर्स देयर वाज नो टाइम। टाइम कैसे शुरू हुआ? जब स्पेस क्रिएट हुई तो टाइम क्रिएट हुआ। तो लोग कहते हैं साहब स्पेस टाइम की थ्योरी उन्होंने दी। नहीं, अभी आपने देखा जो बता रहे थे, हमारे यहाँ क्या कहा गया है, महाकाल, जब जो लोग तंत्र की साधना की भी कभी कोई पुस्तक पढ़ी होगी तो 2 शक्तियां हैं जो आपने कहा ना, एक फिक्स रहती है और एक मूव करती है। वो क्या है? काल और अंतराल। काल और अंतराल ही तो टाइम एंड स्पेस है। और जब अंतराल शुरू होगा तभी काल का एग्जिस्टेंस आएगा। और इसीलिए एक और बात समझिए, आज चाहे लोग कितना भी कहने की बात शुरू करें, अगर सिख धर्म में सत श्री अकाल कहा गया है तो वहां अकाल का अर्थ वहां पे है वो एब्सोल्यूट शुरुआत। वो क्या है? वही सत है और वही श्री है, यानी वही भगवान, जहां काल का एग्जिस्टेंस नहीं है। बिकॉज देयर इज नो चेंज एंड देयर इज नो नीड ऑफ चेंज, देयर द एब्सोल्यूट परफेक्शन, वहां काल का एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां, अब आप कहेंगे ये तो इतनी बड़ी बात हो गई, अंदर हम कहां पे महसूस करें कि काल का एग्जिस्टेंस नहीं है? जो मैंने लय की बात कही, कभी आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए तो आपको लगेगा, कभी आप ध्यान अपना ऐसे ही ध्यान लगाइए, आप एक क्षण के लिए वर्तमान में नहीं होंगे। या तो आप भूतकाल की कोई बात सोच रहे होंगे, पास्ट की या फ्यूचर की। यू विल नेवर बी इन द प्रेजेंट।
अब प्रेजेंट में आने का रास्ता क्या है? अपने शरीर और अपनी चेतना की रिदम को देखिए। चेतना की रिदम सबसे पहले आपको सांसों में दिखती है। अब आप सांस में जब ध्यान लगाते हैं तो सांस नीचे जाती है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकती है, फिर ऊपर आती है। जब वो नीचे जा रही है तो वो भविष्य है, जब वो वापस आ रही है तो वो भूतकाल है, पास्ट है। अंदर जा रही है तो फ्यूचर है, बाहर आ रही है पास्ट है। यही तो खेल में हमारा दिमाग फंसा हुआ है। एक क्षण के लिए हम प्रेजेंट में नहीं होते हैं, या तो फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं। जब उस रिदम के साथ अपने को आप सिंक्रोनाइज कर लेंगे और जिस दिन उस पॉइंट को रियलाइज कर लेंगे जहां पर न वो नीचे जा रही थी सांस, न ऊपर जा रही थी, बस वहीं पर आपको एग्जैक्ट रियलाइजेशन हो जाता है प्रेजेंट का। अब ये कहने में बात बहुत आसान लगती है, परंतु इसको प्राप्त करने में भगवान महावीर को 11 वर्ष लगे थे, भगवान बुद्ध को कई वर्ष लगे थे, और आप लोगों को भी कई वर्ष से लेकर कई जन्म तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज। इसलिए जो वास्तविक संगीत है, हमारे यहाँ क्या कहा गया है? वास्तविक संगीत बाहर नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया वास्तविक संगीत क्या है? वास्तविक संगीत अंदर है, हृदय के अंदर, जिसे कहते हैं अनहद नाद। और जब वो नाद सुनाई पड़ता है तो ब्रह्म सदैव दिख जाते हैं। अभी राम का नाम लिया गया था तो मैं एक हमारा जो शायद वो कबीर का दोहा है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम। जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम। जब आप शून्य को रियलाइज करते हैं तो वो अनहद नाद आपको सुनाई पड़ता है। तो आप यूं समझिए कि जो अंदर था वही यूनिवर्स में है। अब इसको लास्ट में ज़्यादा समय नहीं लेते, सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज साइंस भी तो यही बता रही है। बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड बचा के रखो, उसका डीएनए एनालिसिस से बताएगा कि भविष्य में कौन सी बीमारी होने वाली है, बच्चे को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और ये भी प्रिडिक्ट करेगा कि किस ईयर में हो सकती है। कैसे प्रिडिक्ट करेगा? बाई लुकिंग द सीक्वेंस ऑफ योर एटम्स इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। हमारे क्या कहा गया? जस्ट बाई लुकिंग एट द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द स्पेस भी हम बता सकते हैं कुंडली के आधार पे कि किस प्रकार की बीमारी होगी और कब होगी, क्योंकि आप नहीं समझ पाए हो वो कोरिलेशन। हमारे यहाँ कहा गया यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इसलिए अंत में मैं कहूंगा हम सब के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जो रिपब्लिक ने इसकी शुरुआत की। हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि हमारी कितनी व्यापक स्थिति है हमारी सभ्यता और संस्कृति की। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस अमृत काल में 5 प्रण है हमारे, बस वो याद रखने होंगे। नंबर 1, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, वो एक चीज। कैसे बनाना है? नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। एंड नंबर 3, इसके लिए अपनी विरासत पर गर्व करना है। और नंबर 4, इसके लिए कर्तव्य का पालन करना है। और नंबर 5, वो कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है, इन कोहेरेंस। और यहाँ पे अनुपम खेर जी भी बैठे हुए, इतने वरिष्ठ हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, साहित्य और कला में इतना हमारे पास है कि ये कोई सोचे कि हम दूसरे की तरफ देखेंगे तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आप बस इसको एक छोटे से उदाहरण समझिए। शेक्सपियर ने अपने पूरे साहित्य में 18,000 के आसपास वर्ड्स लिखे हैं, बहुत होगा 20-22 हजार वर्ड लिखे हैं कुल। और अकेले तुलसीदास ने 1,40,000 लिखे हैं। और उसके बाद कालिदास उनसे कितने बड़े हैं, पर कहा जाता कालिदास वॉज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, डरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। धन्यवाद। उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रूंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रूंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। 13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals.
द सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद आपने आर्टिकल 370 की। बहुत से लोगों ने पूछा क्या यामी गौतम नरेंद्र मोदी फैन है? वी फील वेरी सिक्योर्ड एंड वेरी सेफ टू बी लेड बाय हिम। मैंने भी जब पहली बार जब उरी की अगर बात की जाए, आदित्य से जब बात की कि क्या सच में ऐसा हुआ था, इसे एब्सोल्युटली ऐसे ही हुआ था। सो यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू कैरी आउट समथिंग लाइक दैट फॉर योर कंट्री। मैं तो रिपब्लिक टीवी बहुत प्यार कर दिया। पहाड़ी में भी बोल देते हैं कि हाँ। तुहां जो बहुत 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 ज़्यादा तुहां जो प्यार, तुहां जो सम्मान, तुम्हारी रिस्पेक्ट। $13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रूंगटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं। रूंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
break coming in this hour. We've accessed the key dossier that proves the charges that have been leveled. If we can zoom in further to this document that we've accessed. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. A very good afternoon, viewers. It's 2 p.m. and you're watching Republic TV. I'm Deepak Suresh Kumar. Our top focus is on the Mohali building collapse because the rescue personnel are racing against time to bring out all the survivors from under the debris. So far, 2 people have lost their lives and around 15 are trapped under the debris. We'll get you all the latest from the rescue operations site. But first, a quick check on the headlines. PM Modi receives ceremonial welcome, Guard of Honor in Kuwait. PM Modi meets Emir of Kuwait during his power-packed day 2 of his Kuwait visit. Amid face-off over Babasaheb Ambedkar, Karnataka Congress minister targets HM Amit Shah, says Shah bitten by rabid dog. CPIM's big charge against Rahul and Priyanka, communal Muslim alliance behind Wayanad's victory, is what the CPIM leader says. Multi-story building collapses in Mohali, 2 killed, several trapped, rescue operations underway. First up, viewers, we have some big breaking news coming in. Communist Party of India Politburo member A. Vijay Raghavan has alleged that a communal Muslim alliance was behind the victory of Congress leaders Rahul Gandhi and his sister Priyanka Gandhi from Wayanad Lok Sabha seat. A big claim and a big charge made by CPIM on the Congress, and this clearly hinting at Congress's blatant Muslim appeasement in the state of Kerala, and CPIM has credited the communal Muslim alliance for Congress's victory in Wayanad, be it Rahul's victory or Priyanka Gandhi's victory in Wayanad. The CPIM claims that it is all because of the hidden hands behind their poll success, and that is Communal Muslim League. Let's first listen in to that reaction coming in. Rahul Gandhi ജയിച്ചില്ലേ? ആരുടെ പിന്തുണയില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹിയിലെത്തിയത്? ആരുടെ പിന്തുണയില്ല? മുസ്ലിം വർഗീയ ചേരിയുടെ ദൃഢമായ പിന്തുണയില്ലെങ്കിൽ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടുന്ന് ഡൽഹിക്ക് എത്തുവോ? അദ്ദേഹമല്ലേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? ആരൊക്കെയായിരുന്നു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഈ ഓരോ ഘോഷയാത്രയുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും? ആരാ? ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ, തീവ്രവാദ ഘടകങ്ങൾ വരെ അതിലുണ്ടായില്ലേ? തീവ്ര വർഗീയ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ? അവരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൽ? അവരെല്ലാം അല്ലേ? അവരും കോൺഗ്രസിന്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വമല്ലേ ഇവിടെ? പണ്ടൊക്കെ EMS മത്സരിക്കുമ്പോൾ EMSനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പോയിട്ടുണ്ട്. My colleague Ashwin is joining me live from Thiruvananthapuram. Ashwin, this is a big charge coming in from CPIM. Two things. One is that Congress is backed by radical elements, and second is how the CPIM also, goes on to speak about the blatant Muslim appeasement by the Congress party. How do you look at the statement coming in? It's a very strong statement, Deepak. In fact, this has been said none other than the Central Politburo member, A. Vijay Raghavan. Now, he's a very senior member of the Congress of the Communist Party, and he has made this allegation during the
CPIM's district seminar that was being conducted in Wayanad, and it was during that time he had made the speech. His speech was over 1.5 hours. This particular part of the speech, where he stated that radical elements of minorities, the Islam community, was in fact supporting Rahul Gandhi for him to win it the first time in Wayanad, and it was also the same radical elements which went on to support Priyanka Gandhi. He went on to even say that look at the rallies which Priyanka Gandhi undertook. Who were there in the front and behind the rallies? It was completely filled with radical elements of Islam. This is what the CPIM's Politburo, Central Politburo member A. Vijay Raghavan has spoken during a public rally which took place in Wayanad 2 days ago. Now, this comes with certain, definitely it's not the first time the CPM has alleged, because the bypoll that went over, that got concluded recently, where Priyanka Gandhi won with over 4 lakh of margin, and where even Rahul Mankutil in Palakkad, there were several similar such statements which has been given by the CPM, stating that the Congress has openly taken the support of radical elements, including the SDPI as well. So when we look at it, it is CPM coming out all out against the Congress party, stating that they are appeasing, they are looking at the particular vote bank of these radical elements, and in order to keep their seats intact in some of these constituencies. So certainly it has big repercussions. We're expecting the Congress to respond to it in a short while from now. Deepak. Right, Ashwin, many thanks for joining me with those details. The vote bank of the Congress certainly raises a lot of eyebrows, viewers, because just a couple of days back, Devendra Fadnavis also said that Congress's Bharat Jodo Yatra was completely funded by the Naxals when they held a secret meeting at Kathmandu. And now we have another strong statement coming in from CPIM saying that radical Islamists are backing the Congress, and that is what helped them win the Wayanad elections, be it the Lok Sabha elections or even the bypolls for Priyanka Gandhi. So we'll wait and watch how the Congress will react, but let's now shift our focus to what's happening in Mohali, viewers, because the rescue personnel are now working round the clock, racing against time, looking for survivors under the debris of the multi-story building that collapsed on Saturday evening while there were works going on in the basement of the adjacent building. So far, what the rescue personnel have found is that 2 people have lost their lives, and reports suggest that there are around 15 people who continue to remain trapped under the debris of this multi-story building. So now, as you can see on your screens, NDRF, Army, as well as state-of-the-art machinery are being brought in to dig through the rubble, and looking for survivors has become a Herculean task for the rescue personnel. Let's now listen in to what Lalit has to tell us about the current situation. Lalit, you're at the rescue site. Tell us about what's happening and what's the latest update as far as the death toll and as far as the number of people who are trapped under the debris are. Well, if you talk about the rescue operation, it is going from the past 18 hours. And if you talk about the number of deaths, till now 2 deaths have been reported, and still the process of evacuation is being done here. Let me show you here the visuals from at where this building has collapsed. Almost 80% of the debris have been cleared, and you can still see that the machinery, whether it's the administrative machinery or the army machinery, they are still on the ground. And from the past 18 hours round the clock, this government machinery is trying to evacuate and somehow clean the debris. As per the information which we have gathered from the local administration and from the local people here, they are saying that around 3 to 4 people might have trapped, but the exact figure still has not been given. Till now, 2 dead bodies have been recovered. One is a girl from Himachal Pradesh, Theog area. Her name is Drishti Verma, and the other is a youth from Haryana, Abhishek. So till now, 2 dead bodies have been recovered. One was recovered in the evening yesterday only, while 1 dead body was recovered today in the morning. So
still now the rescue operation is going on, whether we call the sniffer dogs or the administration people from the state government or the army people or the NDRF. Everyone is working here. Almost 80 to 90% of the debris have been cleared. Yesterday, around 5, the building just collapsed like these pair of cards within no time, when there was the basement near that building was being digged through a JCB. So that time this whole building collapsed within no time. And as per the input what we were getting from the local people, that gym was being stationed there, and in the evening there used to be a lot of strength of the youth. But yesterday, by luck, that time the number of people in the gym was very less. And other than that, if we talk about, it's a residential area, and in this area there are congested colonies. So the incident, this tragic incident, could have been much bigger. But if we talk about till now, just 2 dead bodies have been recovered, and it seems that almost now the evacuation. Right, Lalit, the families of those who are trapped are now hoping against hope that, probably the rescuers could pull out their family members from under the rubble. But we'll keep these visuals on our screens just to give a sense of the rescue operations that are happening right now, viewers. So far, 2 people have been confirmed dead, and reports suggest that there are at least 15 people who are trapped under the debris, and now rescue and relief operations are currently underway. We'll get you all the latest as and when the survivors list increases. But now let's move on to another hot debate of the day, because Priyank Kharge, the son of Mallikarjun Kharge, who is the boss of Congress party at the national level, has said that Amit Shah has been bitten by a rabid dog. Congress time and again stooping to a new low. This time around as well, the debate over Dr. B.R. Ambedkar has taken another abusive turn, with Priyank Kharge making these distasteful remarks against the Union Home Minister Amit Shah, saying that Amit Shah has been bitten by a rabid dog. Listen in. ತತ್ವ ಬಸವತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ RSS ತತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಕಡ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ RSS ತತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಕಡ್ದಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ತತ್ವ ಬಸವತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ RSS ತತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಕಡ್ದಿದೆ. Well, Union Minister Prahlad Joshi has hit back at Priyank Kharge over his disparaging statements against the Union Home Minister. Listen in. What happened to their leaders when they insulted Ambedkar, when they defeated Ambedkar, when they denied Bharat Ratna to Ambedkar, and they opposed his cremation in Delhi, and also a memorial in his name where his last rites had taken place, all such things. At that time, what had happened, Mr. Kharge should reply. And I only tell Mr. Priyanka Kharge, whatever our political differences, so far as I have seen, they are always talking against the mandate of the people. प्रियांक खड़गे ने एक बयान दिया है अमित शाह पे. उन्होंने ये कहा है कि उनको किसी कुत्ते ने काट लिया है. ऑल दिस बिकॉज जो अम्बेडकर राव चल रहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और उनको लगता है कि कितना चमचाई कर ले. उनके पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा है. वो सब जानते हैं कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वहाँ तो माता जी, भाई जी, बहन जी 3 नेता हैं.
तब ना चौथे नंबर पर खड़गे जी हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि हम ही देश को चलाने वाले लोग हैं, दूसरा कोई नहीं चलाएगा। देश के आज़ादी के 75 वर्षों में 55 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश को लूटने का काम किया, ये लूटने की तैयारी कर रहे हैं। Moving on, viewers, AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has hit out at the DMK over the NEET exam row, questioning why they are silent. Their MPs are silent in the parliament. Here's a quick report on that. AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswamy criticized the ruling DMK in Tamil Nadu over the NEET exam issue. He asked what steps the DMK government had taken to ban the NEET exam in the state. He also accused the DMK MPs of remaining silent on the issue in Parliament. In June this year, the State Assembly unanimously passed a resolution against the central government. The DMK government, led by MK Stalin, urged the centre to scrap the NEET medical examination. The DMK also asked the centre to allow the state government to undertake medical admissions based on the class 12 marks. Tamil Nadu has opened the NEET examination since it was made compulsory in 2017. The exam is seen as a threat to the state's autonomy, healthcare system and educational quality. With that, viewers, it's time for a quick break. On the other side, we'll tell you more about the Prime Minister's Power Pack Day 2 of his Kuwait visit. Stay tuned. Happy woman is a myth. ये सिर्फ एक डायलॉग था, मोनोलॉग था। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बुलशिट चीज़ वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट दिस एक्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूँ। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की खुशियाँ। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। Let's now take a look at the other top stories that we are tracking. The IAF, along with the Indian Army, have rescued 10 SSB personnel who were stranded in Gangtok of Sikkim. The Indian Air Force and the Indian Army helicopters evacuated a total of 10 passengers of Sashastra Seema Bal from Zuluk near Gangtok to military hospitals, having received the information at 11:15 that a bus carrying a personnel of SSB had met with an accident. The IAF launched 2 Cheetah helicopters in less than an hour. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma today said that the phase 3 of crackdown against child marriage had started last night, and 416 people have been arrested so far, and about 335 cases have been registered. The Delhi police discovered that at least 3 schools hit by bomb threat emails have turned out to be by students of those schools. One of the several schools that received bomb threats was Venkateshwara Global School, which received an email a day after a mysterious blast occurred at the Rohini Prashant PVR multiplex on November 28th. A police officer said that the email was sent by 2 siblings who were students in that particular school, and they sent those emails to postpone the exams as they were not prepared. The students were counseled and sent back with their parents. A fire broke out at a private company in Sector 65 of Noida today. 15 fire tenders reached the spot and they doused the flames.
So far, no casualties or injuries have been reported. आज सुबह सूचना आई कि सेक्टर 65 में ए ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी के बेसमेंट में जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखे गए थे वहाँ पर आग लगने की सूचना आई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और अभी फायर डिपार्टमेंट की करीब 15 गाड़ियाँ मौके पर हैं और Moving on, viewers, the Allahabad High Court is all set to hear the case of SP MP Zia-ur-Rahman Barq in the Sambal violence that happened on 24th of November. Here's what is expected. Samajwadi Party MP from Sambhal, Zia-ur-Rahman Barq, has filed a petition in the Allahabad High Court seeking a stay on his arrest. This comes as Barq is accused of instigating the violent clashes that erupted in Sambhal on the 24th of November over the survey of a Mughal-era mosque. The SPMP has also sought quashing of the case against him. Meanwhile, the Allahabad High Court has pushed the date for hearing Barq's petition to the 2nd of January next year. A bench comprising Justice MC Tripathi will hear the SPMP's petition. In fact, the SPMP side will be presented by senior advocates Imran Ullah and Vineet Vikram. This comes as Zia-ur-Rahman Barq also faces allegations over an electricity graft case in Sambhal. The UP police has imposed a fine worth 1.91 crore rupees on Zia-ur-Rahman Barq. Well, viewers, today is day 2 of Prime Minister Modi's historic visit to Kuwait, and he already met the Emir of Kuwait after receiving a ceremonious guard of honor. Here's a report which tells you what is expected on day 2 of this historic visit. Prime Minister Modi is in Kuwait for a 2-day visit. His visit comes at the invitation of the Emir of Kuwait. Prime Minister Narendra Modi received a ceremonial guard of honor at the Bayan Palace, which is the Kuwait Emir's official residence. Besides this, Prime Minister Modi will also hold a separate meeting with the Emir and the Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah. This will be followed by signing of an MoU with the Kuwaiti Prime Minister, along with discussions on political relations, trade, investment, defense and culture. The Prime Minister will also hold a press briefing post his diplomatic talks. The Ministry of External Affairs has said that the visit is expected to open a new chapter in India-Kuwait relations. With Kuwait currently chairing the Gulf Cooperation Council, Prime Minister Modi's visit is expected to bolster India's engagement with the influential bloc comprising of Bahrain, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE and Kuwait. India's trade with GCC countries stood at a robust $184.46 billion in 2022 to 2023, emphasizing the region's significance to India's economic and strategic interests. Well, it's time for us to slip into a short break, but on the other side, we'll tell you about the raging debate over B.R. Ambedkar, with Congress stooping to a new low. Stay tuned. $13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة.
هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردى ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين وللعرب، وأيضا الدعم الكامل الذي يتم تقديمه لهم من حكومة نتنياهو وسموتريتش وابن غفير على ليقوموا بهذه الأعمال. The deadlock between the BCCI and the PCB has finally come to an end, and the ICC's efforts have finally paid off. The Champions Trophy, as confirmed by the ICC, will be played in the hybrid model. The time was running out for the ICC considering अब हमारे बीच पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह जी मंच पर आएंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सोनल मानसिंह का।
बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ पन्ने मैं लेकर यहाँ पर आया था। मुझे नहीं लगता कि इसकी अब दरकार है, क्योंकि हमारे सनातन में भगवान भाव के भूखे होते हैं और एक कलाकार भी भाव का भूखा होता है। और फिलहाल सोनल जी की आंखों में जो हमें दिख रहा है वो भाव तालियों से जुड़ा हुआ है, तो एक बार और तालियों से स्वागत कीजिए। और तालियां बजाने का जो एक रिदम है उसमें भी एक भाव होता है, एक योग का भाव भी है उसमें, कि जब आप तालियां बजाते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां जो हैं वो पूरी तरीके से जागृत हो जाती हैं। तो एक बार फिर से तालियां बजाइए आप लोग। और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ कहा है, लेकिन आपकी शख्सियत को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति आपके भाव में बसती है और उनका नृत्य जो है वो देश ही नहीं बल्कि विदेश को भी मंत्रमुग्ध दशकों से करता आया है। और जो भाव भंगिमा होती है आर्टिस्ट की, वो बहुत कुछ कहती हैं। और इस समय मैं आपकी भाव भंगिमा देख रही हूँ, क्या कह रही है? चलिए, मुझे कुछ कहने का अवसर मिला। सबसे पहले तो आपने जो ताली बजवाई, बिल्कुल, ताली से जो नाद उत्पन्न होता है, सबसे पहले कहा गया है कि उससे विघ्नों का नाश होता है। बिल्कुल, इसीलिए हमारे प्रार्थनाओं में, समागम में, कीर्तन में, नृत्य में, संगीत में, हर जगह जो ताली बजती है उससे जो अशुद्धियां हैं वो दूर होती हैं। जैसे कि घंटा बजाने से, जैसे कि शंख फूंकने से। तो ये ताली का बहुत ही महत्व है। लेकिन जब तक ताली लय में बजे, ताल में बजे ताली, बेताली ना बजे। तो आप एक बार तालियां हो जाए जोर से। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो कलाकार होता है, हम लोग सभी लोग कलाकार हैं और भगवान ने हमारे लिए एक अलग अलग जो अभिनय का जो एक माध्यम है चुन रखा है, एक प्लेटफॉर्म दे रखा है। तो तालियां बजती रहेंगी। लेकिन आज जो संगम का जो स्टेज है रिपब्लिक भारत पर, बहुत चीज़ें संगम में समाहित हो रही हैं। आप रंगों को देख लीजिए, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, ये तो लाल रंग की कमाल है, बेमिसाल है। मैं भी लाल, मुझे नहीं पता था स्टूडियो लाल होगा, लेकिन मेरा दिल लाल है तो मैं लाल पहन के आई। और ये देवी का रंग है, ऊर्जा शक्ति का रंग है, तो यहाँ ऊर्जा ही ऊर्जा फैली हुई है। और दूसरा यह है कि ऊर्जा के बारे में जब हम बात करें तो ऊर्जा आती कहाँ से है? मैं जब कुछ लोगों को देखती हूँ कैसे बैठे रहते हैं, अच्छे अच्छे भले लोग, तो मुझे लगता है कि भाई सबसे पहले अपना ब्रह्मदंड जो है, स्पाइन, उसको सीधा करो। सब लोग सीधा कर लीजिए भाई अभी। अरे अरे लेकिन आपने ऊर्जा की बात की है, एनर्जी की बात की है, तो आपकी ये एनर्जी और ये जो फ्रेशनेस हम देख रहे हैं, इसका राज क्या है? ये मुझे लगता है कि मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, और मुझे जो ये भगवती ने एक कला का आशीर्वाद दिया है, उसकी वजह से, उसके कारण नित्य नित्य नवीन, प्रतिदिन एक नया दिन है, नई बात, नई सोच, नई क्रिएटिविटी। तो उसको लेके मैं चलती हूँ। जैसे अभी मैं भाव गंगा का काम पर कर रही हूँ। उसमें हमारी गंगा है, जो सुर सरिता कहते हैं जिनको, वो सुर लोग से, देवता लोग से आई हैं। लेकिन भारतवर्ष क्यों ऐसा देश है, इस मिट्टी में क्या ऐसा जादू है कि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, यहाँ साहित्य संगीत नृत्य का संगम है, यहाँ स्वयं भगवान नटराज नटेश्वरी का संगम है। बात है। तो ऊर्जा वहाँ से आती है कि जब आप अपना अभिमान, अपना गर्व, अपना मद, एरोगेंस, उसको शरणागत कर देते हो चरणों में, वहाँ से ऊर्जा आती है। मुझे तो इस समय आपसे आ रही है ऊर्जा। आपसे ऊर्जा आ रही है मुझे। एक सवाल यहाँ पर है, जिससे कैसे कनेक्ट कर रही हैं आप? संस्कृति को कैसे कनेक्ट करेंगे, नृत्य से कैसे करेंगे? क्यों जब पूरी बॉडी की बात करते हैं, हम बाल से लेकर नख तक की बात करते हैं, तो उस धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, खुद को जागृत करते हैं,
तो एक कनेक्टिविटी होती है, एक लचक होती है, कहीं ना कहीं से कुछ कमांड होता है। कैसे आप इसे जोड़ पा रही हैं? देखिए, हमारा जो मैं नृत्य की बात कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं, तो नृत्य में तो गीत संगीत सब कुछ है, नंबर 1। नंबर 2 में कि पंच तत्व जो कहते हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु और अपना कौन रह गया? नभ। हाँ, नभ जल वायु। हाँ, हो गया भगवान। हाँ। तो हमारा नृत्य जमीन पे होता है, ऊर्जा हमें पृथ्वी से मिलती है। जब आप पश्चिमी की बात करते हैं ना, आजकल वेस्टर्न डांस सब हो गया है। वी डू नॉट नो द वेस्टर्न डांस एट ऑल। वेस्टर्न क्लासिकल बैले वो एक अलग चीज़ है, हमारा नृत्य अलग चीज़ है। वो उनका हवा में होता है, ऑन द टोज, उनका ज़मीन के साथ, पृथ्वी के साथ संपर्क नहीं होता है, इतना ही होता है। हमारा पूरा शरीर ज़मीन से उठता है, तो पृथ्वी की जो ऊर्जा है उसको हम लेके चलते हैं, लेकिन हमारा पूरा शरीर आकाश में है, हमारा सर आकाश में है, हमारे पैर धरती पर हैं। तो उसकी वजह से जो नख से शिख आप बात करते हो कि एक एक उंगली की जो हस्त मुद्रा कहते हैं, एक एक भ्रू भौं की जो परिस्थिति है, नेत्रों की गति है, चलन है, ग्रीवा का चलन है, पूरे शरीर का जो चलन है, उसका एक व्याकरण है, शास्त्र है। लेकिन उस शास्त्र से कविता, काव्य, संगीत उत्पन्न होता है। तो शरीर आपका एक वाजिंत्र है, इंस्ट्रूमेंट। यू प्ले ऑन दैट एंड यू क्रिएट ब्यूटी। बिल्कुल, हमने संवाद सुना। मैं यहाँ पर इस चीज़ों को और जोड़ना चाहता हूँ कि वक्ता और प्रवक्ता दोनों चीज़ें जो हैं, एक आप अच्छी वक्ता हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि साक्षात सरस्वती की साधक और कला की प्रवक्ता हमारे सामने बैठी हुई हैं। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब आप मुझे देख रही हैं तो एक दिमाग में एक चीज़ आती है, छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिला के, ठीक है? तो अभी जो हमारी गति है वो ये है कि हमारे लिए छाप ये है, तिलक ये है, छीन ये है, लेकिन आपके नज़रिए से यही क्या होगा? लुक एट हिम, इज डांसिंग। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप अगर यही चंद जो शब्द नहीं है बल्कि सबके दिल में समाहित हैं, आप इसे कैसे परफॉर्म करेंगे? परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, जब परफॉर्मेंस की बात आती है, कलाकारों की बात आती है, तो मंच की शुद्धिकरण होती है, और आपका यहाँ आगमन इस मंच को शुद्ध कर रहा है, और लगातार दिन भर शुद्धिकरण होता ही रहेगा। छाप हमारी कला से पड़ती है। तिलक जो मेरे ललाट पर है, उस ललाट के मस्तक तिलक की ऊर्जा जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, हाँ, ऐसे जा रही है, इतने तरीके से जा रही है। हाँ। और यूं जा रही है, यूं। हाँ। हाँ। उसके बाद छाप तिलक सब छीनी। हाँ। तो ये छीनना शब्द जो है, हाँ। वो एक जबरदस्त शब्द है कि हमने आप को अपने आप में ले लिया और हमने अपने आप को आप में ढाल दिया। क्या बात है, जोरदार तालियां। जबरदस्त भाव है और इसको समझना चाहिए। आज तक हम लोग इसको सुनते आए हैं, लेकिन ये भाव कहीं ना कहीं हमारे और आपके दिलों में भी प्रश्न खड़े कर रहा होगा, और इस प्रश्न का उत्तर आज इस तरीके से मिला कि ये भाव हमारे दिलों में रच बस गया है। और मुझे जहाँ तक पता है, आप ये भी कहती हैं कि मेरी आंखों में राधा है और द्रौपदी हैं दोनों। तो इनको आप कैसे एक बार अपने भाव के जरिए हमारे जो लोग हैं यहाँ पर व्यूअर्स हैं उनको दिखाएंगे? राधा, देखिए, दोनों का चरित्र व्यक्तित्व अलग है। राधा श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं। राधा के नाम के बिना कृष्ण अपने भक्त की अरज नहीं सुनते हैं। श्री कृष्ण कहो तो श्री इज राधा। बिल्कुल। राधा जी हम जो मानते हैं ना कि बिल्कुल यानी गोपी तो थी, लेकिन वो गोलोकेश्वरी हैं, बिल्कुल, वो वृंदावनेश्वरी हैं, वो श्री कृष्ण के अधीश्वरी हैं। यहाँ एक भक्ति, एक श्रृंगार, उसका भाव आता है, मीठा मधुर। लेकिन राधा जी जब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, गुस्से होती हैं, तो श्री कृष्ण भी उनके चरण में पड़ जाते हैं।
ये है देहि पद पल्लव मुदारम। क्या बात। गीत गोविंद में है कि आपके चरण मेरे मस्तक पे रखिए, राधा जी मुझे क्षमा करिए। द्रौपदी है वो महारानी है, राजकुल में जन्मी है, लेकिन कैसे जन्मी है? उसका जन्म हम आप जैसे नहीं था, अग्नि से जन्मी है, अग्नि पुत्री है, इसीलिए याज्ञ सेनी है। और उनका चरित्र अग्नि की तरह है, उनके जो घुंघराले लंबे बाल वो अग्नि की शिखाओं की तरह हैं। उनकी आँखों में एक मद भी है, एक साहस है, तर्कशास्त्र प्रवीणा है, और किसी का आधिपत्य वो स्वीकार नहीं करती, लेकिन पत्नी के रूप में, एक अर्धांगिनी के रूप में पांचों पांडवों की जो उन्होंने सेवा की, कुंती माता की सेवा की, लेकिन अपने कुल के गौरव के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, ये बात सीखने की है। नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड हर सेल्फ रिस्पेक्ट। बिल्कुल। इस कनेक्शन को बहुत दूर तक ले जाने की जो मुहिम है, जो एक सार्थकता है और जो एक उम्मीद है, वो आपसे बनती है। और 90 से ज़्यादा देशों तक आपने इसका प्रसार किया, प्रचार किया, और उसमें बताने की ज़रूरत नहीं थी। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि एक भाव बहुत कुछ कह देता है। इसमें कहाँ तक सफलता मिली, भारत को देखने का नज़रिया कितना बदला, और हमारी संस्कृति से जो कहते हैं कि पाश्चात्य शैली के जो लोग हैं वो जुड़ते नहीं है, बल्कि एक बॉन्डिंग ज़बरदस्त तरीके की हो जाती है, और हम कहीं और जा रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं, हम भाग रहे हैं। आपने दो चीज़ें कही, मैं पहली चीज़ पे पहले आ जाती हूँ। एक आपको मिसाल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ कि अर्जेंटीना नाम का बहुत बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका में। लोग अमेरिका तो करते हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका के कितने सारे देश इतने सुंदर और पुरानी संस्कृति के पूजक, लेकिन अर्जेंटीना पूरी तरीके से कैथोलिक क्रिश्चियन है। वहाँ के जो अपने अमेरिकन से उनको उन्होंने हटा दिया जी। वहाँ मेरा जब कार्यक्रम था 1997 में, 1997 में, तो मेरा आखिरी जो वो था, सबसे बड़ा उनका जो थिएटर है, और वहाँ हमारे केरल के वल्लथोर नारायण मेनन, जो गुरुदेव ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के समकालीन थे, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला क्योंकि उनकी कविताओं का अनुवाद अंग्रेज़ी में किसी ने नहीं किया। खैर, उनकी कविता मैग्दलेना मरियम, मैरी मैग्दलेन बाइबल की जो हैं, तो वो मैंने अपनी तरीके से किया था और यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया हर जगह। ब्यूनस एयर्स के कार्यक्रम के बाद जब मैं अपने ग्रीन रूम में गई तो हमारे राजदूत सहित कुछ लोग वहाँ गणमान्य लोग थे मौजूद। आर्क बिशप जो थे या कार्डिनल थे, वो आके घुटने पड़ के मेरा हाथ पकड़ के चूम रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, स्पेनिश में पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर, स्पेनिश में कह रहे हैं आई सॉ क्राइस्ट, मैंने क्राइस्ट को देखा। अच्छा जी। फिर कहते हैं आर यू क्रिश्चियन, स्पेनिश में बोल रहे हैं। मैंने कहा नो आई एम हिंदू। तो कहते थे हाउ, कहने का तात्पर्य ये कि आपने मुझे जीसस क्राइस्ट दिखा दिया आपकी कला के द्वारा, तो आप क्रिश्चियन नहीं है, कैसे आपने किया? मैंने कहा फॉर मी मैरी एंड क्राइस्ट आर लाइक मीरा एंड कृष्णा। वाह, क्या बात। बहुत सुंदर। और तो ऐसे 90 देशों की आप जो बात करें, सूडान से लेकर अफ्रीका के देशों से लेकर, भारत की हमारी कला ऐसी है कि हरेक के हृदय में वो स्थापित हो जाती है, कुछ न कुछ अंकुर छोड़ जाती है, बीज छोड़ जाती है जो अंकुरित होते हैं। तो ये कला अनोखी है, बेजोड़ है, अनूठी है। ये दुनिया में हमारा यूएसपी, मैंने राज्यसभा में कई बार कहा कि भारत की जो कला है परफॉर्मिंग आर्ट्स, वो यूएसपी है हमारा। यहीं से एक लिंक कर रहा हूँ, राज्यसभा की बात आपने की, वहाँ का सुर कैसा है? इस पर कुछ नहीं कहना है। भावों के जरिए, नहीं, भावों के जरिए नहीं, देखिए आप सुर कह रहे हैं ना, कोई एक सुर तो नहीं होता, सप्त स्वर है। हाँ, सप्त स्वर है ना, बिल्कुल, सा से लेके नी तक सब सुर सुनाई देते हैं। बहुत खूब। मैम, आपके अगर बात हो रही है, आपके अनुभव की बात भी हम करना चाहेंगे, उसको साझा करना चाहेंगे। एक बुक है आपके ऊपर, सोनल मानसिंह, अ लाइफ नो अदर,
तो ये क्या है? हाँ जी, हाँ जी। ये मैं चाहती हूँ कि आप बताएं क्या है इस बुक में और कैसे आपकी लाइफ में आपने दोबारा से सर्वाइव किया। बहुत मुश्किल है अपने बारे में कुछ बोलना, लेकिन अब मैं जब पलट के देखती हूँ मेरी जीवन यात्रा, तो लगता है कि कुछ ना कुछ सार्थकता मेरे जीवन में रही इस कला के माध्यम से। और ये मेमोआर है, यानी कुछ कुछ उसमें प्रसंग हैं, कुछ मैंने नहीं कहे हैं, जो मैं अपने आप लिखूंगी। और एक्सीडेंट हुआ मेरा भयंकर, आप जानते हैं, जर्मनी में रीढ़ की हड्डी टूट गई, फेफड़े टूट गए, और लगा कि ये डॉक्टर ने कहा कभी नृत्य नहीं करेगी, जर्मन डॉक्टर्स ने कहा। लेकिन 2 साल के बाद शायद चल सके। अब ये सुनकर क्या हुआ होगा मुझे आप कल्पना कीजिए। लेकिन नृत्य मेरा सहारा, नृत्य मेरी साधना, नृत्य मेरा कारण इस जीवन में आने का। तो मेरे लिए कुछ काम बाकी था। उस काम के लिए एक फ्रेंच कैनेडियन कायरोप्रैक्टर ने मुझे ना पहचानते हुए मात्र सुनकर मेरी ट्रीटमेंट की। $1 नहीं लिया 1 वर्ष की ट्रीटमेंट के लिए, और बल्कि उसने कहा कि यू हैव मेड हिस्ट्री। आपके 11वीं और 13वीं कड़ी के बीच में कुछ नहीं, भुरभुर हो गया था, गया। एक नई हड्डी, एक सेतु की तरह नेचर ने तुमको दी है। मैंने कहा वाओ, यू डिमांड फ्रॉम नेचर, नेचर ग्रांट्स यू। एक कड़ी मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा। आपने 12वीं 13वीं कड़ी की बात की, और ये कोई सवाल नहीं है, और हम कुछ अभी आगे अगले पड़ाव पर होंगे। लेकिन 5वीं कड़ी मेरी ज़िंदगी की ये कहती है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मैं 5th क्लास में था, उसमें एक चैप्टर हुआ करता था सोनल मानसिंह, और उस चैप्टर को जब आप पढ़ते थे तो एक उत्साह, एक एनर्जी और एक संस्कार भी भरती थी। तो आप लोगों के अंदर भी आज ऊर्जा का संचार हुआ होगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए सोनल मानसिंह के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, वही भाव, जो एक आर्टिस्ट होते हैं उनकी भाव भंगिमाएं जो होती है वही अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी तक मैं क्या कर रही थी? आपने कहा छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिला के। अच्छा, एक भाव में जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, जितना मुझे पता है, उसके लिए भाव दे दीजिए। चॉकलेट को मैं मानती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो मीठा मधुर स्वादु नवनीत होता था, लड्डू की तरह नवनीत मक्खन का गोला, मैं चॉकलेट की जगह उसको याद करती हूँ। और उसको देखकर जो एक ललक कृष्ण के चेहरे पे आती थी, बाल कृष्ण के चेहरे पे, अब वो ललक ये कब मुझे मिलेगी? क्या बात है, क्या बात है, जोरदार ताली। अब एक आखिरी मैं मेरे पुराने मित्र अर्णव गोस्वामी का स्वागत करके बहुत 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 अत्यंत प्रसन्न मन से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब से रिपब्लिक चैनल शुरू हुआ तब से मैं जुड़ी हुई हूँ, और उन्होंने एक जो रिपब्लिक बनाया है इस विशेष जगह पे नहीं, मैं कह रही हूँ कि लोगों के मन में रिपब्लिक बनाया है कि मीडिया ऐसा भी होता है। उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई आपकी सारी टीम को। अत्यंत आनंद से मैं यहाँ आई हूँ और उस आनंद को दुगुना करके जाऊँगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردة ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين وللعرب، وأيضا الدعم الكامل الذي يتم تقديمه لهم من حكومة نتنياهو وسموتريتش وابن غفير على ليقوموا بهذه الأعمال. आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद आपने आर्टिकल 370 की। बहुत से लोगों ने पूछा क्या यामी गौतम नरेंद्र मोदी फैन है? वी फील वेरी सिक्योर्ड एंड वेरी सेफ टू बी लेड बाय हिम। मैंने भी जब पहली बार जब उरी की अगर बात की जाए, आदित्य से जब बात की कि क्या सच में ऐसा हुआ था, इसे एब्सोल्युटली ऐसे ही हुआ था। सो यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू डू टू कैरी आउट समथिंग लाइक दैट फॉर योर कंट्री। मैं तो रिपब्लिक टीवी बहुत प्यार कर दिया पहाड़ी में भी बोल देते हैं कि हाँ। तुहां जो बहुत 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 ज़्यादा तुहां जो प्यार, तुहां जो सम्मान, तुम्हारी रिस्पेक्ट। दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। 13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals.
largest news headquarters. Setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Very good afternoon to all of you all watching Republic TV live and breaking with me, Kriti Mehta, at 3 p.m. Viewers, top focus of course remains on the multi-story building collapse in Punjab's Mohali, in which 2 people have been killed. Several still continue to remain tracked. We are giving you minute by minute update of that operation of rescue and relief. First now, let's take a quick check of the headlines. Prime Minister Modi receives a ceremonial welcome guard of honor in Kuwait. Prime Minister Modi meets the Emir of Kuwait during his power-packed visit on day 2. Amid face-off over Baba Sahib Ambedkar, Karnataka Congress Minister targets Home Minister, says Shah bit by a mad dog. CPIM's big charge on Rahul and Priyanka, communal Muslim alliance behind Wayanad's victory. Multi-story building collapse in Mohali, 2 killed, several trapped, rescue operations underway. Viewers, we're now bringing you news from Jammu and Kashmir, where a mega crackdown on terror continues. Now, Jammu and Kashmir police terminated close relative of the longest serving Hizbul commander in Jammu and Kashmir, Jahangir Saruri. Hizbul commander Jahangir Saruri is the longest surviving terrorist in Jammu and Kashmir and is active for more than 2 decades. Let's go across to Gursimran now, who's joining us live to give us more details. Gursimran, what more are you picking up? See, the Jammu and Kashmir police has continued its crackdown on terror, and those relatives of the terrorists that are part of Jammu and Kashmir and are proving detrimental to the national security are being terminated from their duties. Now what we are picking up that the Kishtwar police has acted against the brother-in-law of Jahangir Saruri, the longest surviving terrorist, the terror commander of Hizbul Mujahideen in Jammu and Kashmir. His brother-in-law Mohammad Shafi has been terminated from his service. He was working as the special police officer in the Jammu and Kashmir police for a long time, but now an order has been given by the Jammu and Kashmir police that says that Mohammad Shafi is disengaged from his position as the SPO in Jammu and Kashmir police. It's important to mention that Jahangir Saruri is active for more than 2.5 decades in Jammu and Kashmir, and that revival of the Hizbul Mujahideen has been one of his key agendas, though he has been operating in the upper reaches of the Kishtwar and sometime in the Kashmir Valley, but he has been putting its entire focus on the revival of Hizbul Mujahideen in the Chenab Valley, because along with him the other 2 terrorists, Mudassir and Riyaz, are also active. In Kashmir Valley, the Hizbul Mujahideen active terrorists have completely been wiped out with the end of Farooq Nali last week in the Kulgam encounter. But in the Jammu region, there are 3 terrorists of Hizbul Mujahideen, including its top commander Jahangir Saruri, who is still active, known as Muhammad Amin Bhatt, along with Riyaz Ahmad and Mudassir. He is still active in the upper reaches, and now the Jammu and Kashmir police has acted, and his brother-in-law Mohammad Shafi has been disengaged from his services from the Jammu and Kashmir police as the SPO, and we are told that in days to come there will be similar crackdown that will follow in the other relatives of the terrorists that are proving to be detrimental to the national security. All right. Thank you, Gursimran, for joining us for now and bringing us those details. With that, viewers, we're now going to move on.
Now, cutting across to a breaking news coming in from Sambhal, where following the reopening of a Shiv Hanuman temple in that district after a gap of 46 years, an excavation team of the Archaeological Survey of India has now unearthed a step well in the Chandosi area. Now, the ASI team that has been conducting its survey in Sambhal has unearthed a step well in Chandosi area of the district. This is coming after the reopening of a Shiv Hanuman temple after a gap of 46 years. ASI now unearthing the step well in Chandosi. My colleague Gursimran has, beg your pardon, my colleague Jatin has filed a ground report. Let's take a look. बाहर से अब उन कमरों की संख्या 6 हो गई है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि पूरा स्पेस जो ओपन था, जिस पर अभी तक अतिक्रमण नहीं किया गया था, उस पर खुदाई का काम किया जा रहा है। 400 वर्ग मीटर का ये पूरा स्पेस है, लेकिन जितना भी ओपन इलाका है वो तकरीबन 210-220 वर्ग मीटर है। और आप तस्वीरों में देखेंगे सुबह तक जो खुदाई थी वो सफ़ेद ईंटें आपको नजर आ रही हैं, सिर्फ इतना था। लेकिन अब 2 जेसीबी बुलडोजर के जरिए जो आसपास का एरिया है उसको खोदा जा रहा है। और सबसे बड़ी चैलेंज अभी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये है कि अंदर जो बावड़ी है उसको किसी तरीके का नुकसान जो है वो ना हो, और उसी के चलते बहुत बारीकी से खुदाई हो रही है और उसके बाद मलबा जो है वो यहाँ से साफ तौर पर हट रहा है। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से संभल का जो पुराना इतिहास रहा है उसको अब एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइव करना है। और यही तस्वीरें हैं कि कई मंदिर जो हैं वो सालों से बंद पड़े थे, दशकों से बंद पड़े थे, उनको खुलवाया जा रहा है। तो वहीं ज़मीन के नीचे जो बावली थी उसको अब निकाला जा रहा है। And with that, viewers, now let's shift our focus. As a political face-off heats up over Ambedkar, Congress seems to have stooped to even newer low. Now, Karnataka Government Minister and Mallikarjun Kharge's son, Priyank Kharge, has made a very distasteful remark. How much ever Basa philosophy and Ambedkar philosophy gains traction, the RSS philosophy collapses, is what he said. I condemn Amit Shah's statement and he's bitten by a mad dog. These are the exact words that have been uttered by Priyank Kharge. Let's listen in to that statement first. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ತತ್ವ, ಬಸವ ತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ RSS ತತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಕಡ್ದಿದೆ. What happened to their leader when they insulted Ambedkar, when they defeated Ambedkar, when they denied Bharat Ratna to Ambedkar, and they opposed his cremation in Delhi, and also a memorial in his name where his last rites had taken place, all such things. At that time, what had happened, Mr. Kharge should reply. And I only tell Mr. Priyanka Kharge, whatever our political differences, so far as I have seen, they are always talking against the mandate of the people. प्रियांक खड़गे ने एक बयान दिया है अमित शाह पे। उन्होंने ये कहा है कि उनको किसी कुत्ते ने काट लिया है। ऑल दिस बिकॉज जो अम्बेडकर राव चल रहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और उनको लगता है कि कितना चमचई कर ले। उनके पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा है, वो सब जानते हैं कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वहाँ तो माता जी, भाई जी, बहन जी 3 नेता हैं, तब ना चौथे नंबर पर खड़गे जी हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि हम ही देश को चलाने वाले लोग हैं, दूसरा कोई नहीं चलाएगा। देश के आज़ादी के 75 वर्षों में 55 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश को लूटने का काम किया। ये लूटने की तैयारी कर रहे हैं। And up next was Prime Minister Modi is in Kuwait for a 2-day visit. The historic visit marks a first by the Prime Minister in 43 long years. Now, as the day 2 kicked off, there's a lot lined up for the two countries. Take a look at this report.
Prime Minister Modi is in Kuwait for a 2-day visit. His visit comes at the invitation of the Emir of Kuwait. Prime Minister Narendra Modi received a ceremonial guard of honor at the Bayan Palace, which is the Kuwait Emir's official residence. Besides this, Prime Minister Modi will also hold a separate meeting with the Emir and the Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah. This will be followed by signing of an MoU with the Kuwaiti Prime Minister, along with discussions on political relations, trade, investment, defense and culture. The Prime Minister will also hold a press briefing post his diplomatic talks. The Ministry of External Affairs has said that the visit is expected to open a new chapter in India-Kuwait relations. With Kuwait currently chairing the Gulf Cooperation Council, Prime Minister Modi's visit is expected to bolster India's engagement with the influential bloc comprising of Bahrain, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE and Kuwait. India's trade with GCC countries stood at a robust $184.46 billion in 2022 to 2023, emphasizing the region's significance to India's economic and strategic interests. And now let's take a quick check of some stories from across the nation making headlines in 5 minutes. 5 persons were killed and several others injured when a mini goods vehicle they were traveling in overturned in Chhattisgarh's Bastar district on Saturday. According to the additional superintendent of police, a truck ferrying around 45 people met with the mishap near village Chandameta under Darbha police station limits in Jagdalpur. After learning about the mishap, CRPF rushed to the spot and carried out rescue exercises. 27 से 30 मरीज भर्ती कर चुके हैं। संबंधित प्राथमिक उपचार करके संबंधित विभागों में शिफ्ट किया गया है। और सूचना ये भी मिला है कि 4 लोगों का मौत दुर्घटना स्थल पर हो चुका है और एक यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया है, ठीक है, जिसको मृत घोषित कर दिए हैं हम लोग। और अभी आने का सिलसिला अभी जारी है। सूचना ये भी मिला है कि 81 लोग घायल हुए। 7 Indians have been injured in the car ramming attack on a Christmas market in the eastern Germany city of Magdeburg. 3 Indians among the injured have been discharged from the hospital. The Ministry of External Affairs in a statement on Saturday condemned the attack as horrific and senseless and said that the Indian mission in Germany remains in contact with the injured Indians. Sources also said that the Indian embassy in Berlin continues to provide all possible assistance to the injured Indian nationals. 2 people died and several others were feared trapped after a 3-story building collapsed in Punjab's Mohali Saturday. Case has been registered against the building owners. The building collapsed when excavation work was going on in the basement of the adjacent building. Officials said that a gym was operating on all 3 floors of the building that has collapsed and several people are feared trapped under the debris. The toll in the LPG tanker accident on the Jaipur-Ajmer highway rose to 14 after 3 more people succumbed on Saturday, while Rajasthan High Court issued notices to the central and the state governments after taking suo motu cognizance. Issuing the notices, Justice Anup Kumar Dhand listed the matter for further hearing on January 10. A truck collided with an LPG tanker on the Jaipur-Ajmer highway early Friday, turning the stretch into an inferno that engulfed nearly 40 vehicles. The High Court made some critical observations and said an unfortunate incident had snatched the lives of several people and caused severe life-threatening injuries to the others. RJD leader Tejasvi Yadav voiced strong support for students protesting the 70th BPSC exam. He even visited the protest site where he said that the demands of students are valid. The leader also emphasized the need for fairness.
It's time now for a very quick break on this bulletin, but stay tuned, viewers. 2 people have been killed and several continue to remain trapped in the multi-story building collapse in Punjab's Mohali. Bringing you ground reports. Stay tuned. उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। The deadlock between the BCCI and the PCB has finally come to an end, and the ICC's efforts have finally paid off. The Champions Trophy, as confirmed by the ICC, will be played in the hybrid model. The time was running out for the ICC considering the financial implications of the marquee event. The stakeholders of the Champions Trophy were also not very happy with the ICC considering the fact that they were not being able to tap into the financial gains of such a big event. The Board of Control for Cricket in India has already made it very clear that the Indian team will not be travelling to Pakistan under any circumstances for the Champions Trophy. The Pakistan Cricket Board tried its very best to fight back in the name of national interest, but it had no answers to the issues related to the security concerns in the country. To make matters worse, the Sri Lanka A team also pulled out of its tour midway, citing serious political unrest in the country. The ICC, in their latest announcement, has made it very clear that the Champions Trophy will be played in the hybrid model. The ICC also said that India and Pakistan matches hosted by either country at ICC events during the 2024 to 2027 rights cycle will be played at a neutral venue. India will play all their matches at a neutral venue. Though Sri Lanka and the UAE both are in contention to co-host the marquee ICC event, but it is being believed that the scales are shifting towards the UAE. The Emirates Cricket Board is right now waiting for a final clearance from the PCB and the ICC, and they have grounds in Abu Dhabi and Sharjah to co-host the event. The ICC has awarded the hosting rights of the ICC Women's T20 World Cup 2028 to the Pakistan Cricket Board. This also means that the arrangements surrounding the neutral venue will also apply on women's cricket.
Yami, we've aptly called this session Yami की सर्जिकल स्ट्राइक क्योंकि यामी गौतम ने जब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की है उसके बाद से वो सर्जिकल स्ट्राइक ही है, क्योंकि बहुत कम समय में एक बड़ा मुकाम हासिल करना। इसीलिए तालियों के साथ एक बार फिर यामी गौतम का स्वागत कीजिए। यामी, you've entered a very beautiful phase in your life. आपका अभी बेटा हुआ और you've embraced motherhood. तो सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि उनके आपके बेटे के नाम को लेकर इतनी चर्चाएं थी और अभी तक हैं, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले तो मैं उस नए चैप्टर के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ जो आपकी लाइफ में शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच। पहले तो इतने ख़ास स्वागत के लिए बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का इस तरह प्यार मिले और इतनी इज्जत के साथ जहाँ भी जाते इतना सम्मान मिले, बहुत रिस्पेक्ट मिले। थैंक यू सो मच। और प्लेटफॉर्म आपका हो तो बात ही क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। दूसरी बात, जहाँ तक कि वेदाविद की बात है, अभी भी लगता है कि हाँ, मतलब sometimes it really feels, I don't believe I'm a mother. It feels so surreal. You're looking at you, nobody believes it. No, I'm so happy. कई बार होता है ना, खुशी इतनी होती है कि तब भी बिलीव नहीं होता है। वो वाली खुशी है। और अब गुड बाय थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं, समझ नहीं आता है बाय बोलूँ नहीं बोलूँ। ऑफ कोर्स अभी बहुत छोटा है ये सब समझने के लिए, बट घर से निकलना इतना मुश्किल हो सकता है मैंने नहीं सोचा था। अदरवाइज यूजुअली हम लोग की हमारा काम है ट्रैवल करना, यहाँ वहाँ जाना, जैसे आज यहाँ आए हैं, कल कहीं और। बट oh my God, it's so difficult to say goodbye to those two little eyes. और नाम, जहाँ तक कि वेदाविद की बात है, वेदाविद का मतलब है जिन्हें सारे वेदास आते हो। विष्णु जी वेदों का ज्ञाता, और विष्णु जी का नाम भी वेदाविद है। और कहीं लिखा था कि शिव जी का नाम भी वेदाविद है। और ये नाम आदित्य जो उनके पिता है और मेरे हस्बैंड है, ये उनकी देन है। उन्होंने किसी से कंसल्ट करके और काफ़ी खोजबीन करके ये नाम रेकमेंड किया था। बहुत ही खूबसूरत नाम है, क्योंकि मैंने इसीलिए इससे शुरुआत की, क्योंकि वेदाविद, आज हम भारतीय एक तरह से संस्कृति का एक जश्न मना रहे हैं जब हम संगम कर रहे हैं, और उसमें इस नाम से शुरुआत वेदाविद से, इसीलिए मैंने इस पर बात की। यामी, यहाँ आज जो भी आ रहा है, क्योंकि ये मंच है कला का और आप खुद एक बड़ी कलाकार हैं, लेकिन हर शख्सियत में बहुत सी परतें होती हैं। तो एक्टिंग के अलावा कोई ऐसी कला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा, या फिर आपने उसे उस टैलेंट को कभी होन करने की कोशिश की, उसे आगे बढ़ाया? आप गाती हैं? क्वायर में मैं ज़रूर गाती थी। और क्वायर में वो होता है ना कि पहले तो स्पॉटलाइट भी नहीं था, बस हम कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सिंगिंग करती थी। शौक़ था, काफ़ी शौक़ था। और पर कहीं मुझे नहीं लगता उसको मैंने बहुत बढ़ाया। फॉर सम रीज़न मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। मैं पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा जुट गई, पर हाँ, सिंगिंग में एक पॉइंट तक इंटरेस्ट था। मैंने ये भी सुना आप मिमिक्री भी करती हैं और बहुत अच्छी करती हैं। आई थिंक मिमिक्री से ज़्यादा मुझे सिर्फ एक्टर्स की नहीं, अगर मैं किसी के साथ कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, या हम लोग स्पेशली खासकर ट्रैवल बहुत करते हैं ऑफ कोर्स, और जो लोग कम बातें करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। जो ऑफ कोर्स जो मुझे बहुत करीबी से जानते हैं उनके साथ ऑफ कोर्स दैट्स डिफरेंट। तो आप ऑब्जर्व फिर ज़्यादा करते हैं, और जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें फिर सामने आती हैं, और वो फिर जो इम्पर्सनेशन होता है वो उसमें कुछ अलग ही मज़ा है। तो फिल्मों एक्टर्स की तो इम्पर्सनेशन बहुत काफ़ी लोग करते हैं, बट आई थिंक जो आम जिंदगी में आप कहीं से और कब कौन क्या चीज़ अपने किरदार में ढालने का मौका मिल जाए, यू नेवर नो। तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये कला का मंच है। आपसे पहले मैं सिर्फ आपको एक सिनॉप्सिस दे दूं, आपसे पहले जो मंच पर आ रहे थे कलाकार, कोई गा रहा था, कोई कथा वाचन कर रहा था, कोई कविता पाठ कर रहा था। तो मैं आपसे कहूँगी, आपने अपने टैलेंट्स के बारे में बताया, इनमें से कौन सा डिस्प्ले करेंगे आज हमारे ऑडियंसेस के? मुझे लग रहा है दोबारा मैं स्कूल पहुँच गई हूँ, आज तो पोयम गा के सुना। नहीं, आप लोग चाहते हैं कि यामी अपना कोई टैलेंट, क्योंकि एक्ट्रेस तो वो उसमें महारत हासिल कर चुकी हैं, लेकिन एक ऐसा टैलेंट जो हमने नहीं देखा है यामी का, वो आज संगम पे दिखे। बताइए, देखना चाहते हैं? Yeah, singing talent. Is there any Bengali here? Is there anyone who's Bengali? I know there's a reason I asked. She's saying that's the reason she asked. No, there's a reason, because there's a song. It's a very sweet song and a very popular Bengali song.
जो मैंने 2 लाइनें विकी डोनो में गुनगुनाई थी, और शायद हो सकता है, प्लीज़ आप मुझे फिर माफ़ी चाहूँगी, एक कुछ लिरिक की भूल चूक ना हो जाए। नहीं, तो अगर कोई साथ दे देता या कोई करेक्ट कर देता तो शायद मैं ज़रूर गाती। कोई बात नहीं, आप जब गाएंगी तो सब आपका साथ देंगे। सब देंगे? सब देंगे। वो तो नहीं होगा कि चलो शुरू करो 3, 2, 1 और खाली मैं You want me to give you a count? Okay, I'll try and remember. আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশনি তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশনি আমি চিনি গো চিনি। ब्यूटिफुल। एंड जिस आपने एंथुजियाज्म के साथ ये गाना गाया है, मैं बस ये कहूँगी क्योंकि बहुत से लोग शायद अवॉइड करते कि गाना नहीं गाते, लेकिन आपने यू वर सच अ स्पॉट। मैं आपसे ये पूछूंगी, दैट मीन्स बहुत खराब गाया है। वो यूजुअली तभी बोलते हैं आपने स्पिरिट के फुल मार्क्स, बाकी इस पे मैंने आपको 11 आउट ऑफ 10 दिए हैं बिकॉज यू वर सच अ स्पॉट। और मुझे ये बताइए, आप क्योंकि आप यहाँ आई हैं, संगम के लिए आई हैं, बहुत से लोग आपके बारे में आपको फिल्मों के ज़रिए जानते हैं, एंड ख़ासकर आर्टिकल 370 जो आपकी फिल्म आई, उसको लेकर देश में भी एक बहुत चर्चा थी। और चर्चा इसलिए भी थी क्योंकि उसको लेकर एक डिस्कोर्स, एक डिबेट बहुत से लोग जारी भी रखना चाहते हैं। बतौर एक एक्ट्रेस, आप उसमें एक्टिंग कर रही थी या फिर वो जो सब्जेक्ट है आर्टिकल 370 का, उसे लेकर आपकी एक सोच भी है? पहली बार जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है बतौर एक्टर, मेरा काम है उसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर, विदाउट एनी बायस, चाहे मेरी थिंकिंग लेफ्ट हो राइट हो जो भी हो, उसे परे हटकर बतौर एक स्क्रिप्ट देखना, एक फिल्म देखना कि क्या ये वर्क करती है एज अ फिल्म, क्या ये मुझे इंगेज करती है एज एन ऑडियंस, एंड एज एन एक्टर क्या मेरे लिए कुछ अलग है, कुछ चैलेंजिंग है। और इन तीनों ही जो पैरामीटर्स हैं उनमें मुझे लगा ये एक जिसे बोलते हैं करियर डिफाइनिंग, या एक बिल्कुल ही मेरे लिए एक ऑथर बैक रोल था और बहुत रेलेवेंट है। और जब इस तरह की कोई फिल्म आती है जिसे हम बोलते हैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और रफली इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और समथिंग लाइक दैट, तो ऑफ कोर्स तो दूसरा फिर सवाल यही होता है कि क्या ये सच में ऐसा हुआ है, क्या ये सच है। एंड बेसिस जो भी हमारे पास फैक्ट्स थे, जो भी इंफॉर्मेशन थी, इट वाज एब्सोल्युटली वेरीफाइड। और तब लगता है कि हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने जा रही हूँ जो शायद आज ही नहीं बट आने वाले काफ़ी समय तक याद रहेगी, ना ही सिर्फ एक बतौर एक फिल्म के ज़रिए, बट ऑल्सो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, एंड समथिंग डिफरेंट, कुछ नई बात होनी चाहिए ना। हम सिनेमा हमेशा बोलते हैं कि अच्छा आप एक ही तरह की फिल्में आप क्यों देखेंगे, या हम एक ही तरह की फिल्में क्यों करेंगे। आज अगर एक नया दौर है, एक नया सिनेमा है, एक नया हिंदुस्तान है जिसे हम कह रहे हैं, तो फिर बात भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसी फिल्म का अच्छा प्रदर्शन होना, इसका मतलब ऑडियंस कितनी तैयार है एक ऐसी सिनेमा के लिए भी जहाँ पर एक बिल्कुल एक फैक्ट बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, एक आर्टिकल बेस्ड फिल्म है जिसमें कोई गाना बजाना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है टू मेक इट, पैकेज इट इन अ वे कि अच्छा ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। दे केम बिकॉज दे वांटेड टू वॉच द फिल्म एंड दे वर रियली एंगेज्ड विद द फिल्म। और छोटी सी बात, क्योंकि हमने ये फिल्म कश्मीर में शूट की थी और ऐसे एरियाज़ में शूट की थी जो आज तक हमने सिर्फ न्यूज़ चैनल्स में देखी थी। बीइंग अ 90s kid, there was some visuals which were always just there। एक होता है ना, एक बिल्कुल एक मेमोरी बन चुकी है आपके दिमाग में कि जहाँ पर आप जिस तरह का माहौल हमने हमेशा से कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली हमेशा से देखा है, और पर वहाँ पे जाकर शूट करना उन एरियाज़ में, पूरा दिन स्पेंड करना, That is not possible without progress. That is not possible without। नहीं, ये बहुत से लोग कहते हैं कि पोस्ट 370 पुलिस जी जो एक बदलाव है वो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। फिल्म्स भी उनमें से एक माध्यम है, क्योंकि जिन लोगों ने वहाँ जाकर शूट करना स्टार्ट किया, फिल्में बनाना, आपने कहा पूरी फिल्म आपने कश्मीर में शूट करी ऑलमोस्ट, लगभग ऑलमोस्ट, तो वो जो एक चेंज था वो एविडेंट था, वो दिख रहा था। बिल्कुल। मुझे कहा गया, मुझे लगा कि इतना 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे यहाँ से वहाँ जाने में, जहाँ भी जाना था। जैसे नहीं ऐसा नहीं है, ट्रैफिक होता है। मैंने कहा ट्रैफिक होता है, हाँ। आपको वो बसेस दिख रही हैं? मैंने कहा हाँ, वो सारी गुजरात से आई हैं, वो कुछ साउथ से हैं, कुछ कई अलग अलग क्षेत्र से हैं। तो इतने टूरिस्ट थे, इतना टूरिज्म वाज बूमिंग। सो जो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक कि एजुकेशन की बात है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है जो लोकल, जहाँ भी जाऊँ लोकल लोगों से बात करना, जाना,
कोई स्पिरिचुअल स्थान हो वहाँ जाना, हम लोग गए, जीठियर गए, हम लोग खीर भवानी माता वहाँ उनके मंदिर गए, तो दैट्स बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल एक अलग कश्मीर दिखा। एंड जो भी कहे, पहली बार जब वहाँ कदम रखा और अपने इंडियन फ्लैग लहराता हुआ देखा, अपने हिंदुस्तान का झंडा, बहुत बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। वो गर्व मुझे लगता है हम सबको महसूस होता है जिन्होंने वो ट्रांजिशन देखा है कश्मीर में। आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद आपने आर्टिकल 370 की। बहुत से लोगों ने पूछा क्या यामी गौतम नरेंद्र मोदी फैन है? ऑफ कोर्स सभी हैं, ऑफ कोर्स सभी हैं। जिस तरह का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो सभी जानते हैं, पूरी दुनिया भर में उनकी चर्चा है, और ही इज़ अ ट्रू लीडर इन अ ग्रेट सेंस। और हम हमेशा उनकी जो मन की बात है वो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि अच्छा आज क्या बात हुई है, और वी वेरी हैप्पी एंड वी फील वेरी सिक्योर्ड एंड वेरी सेफ टू बी लेड बाय हिम। जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट है, चाहे आप फिल्मों के ज़रिए देख लीजिए, 2 ही फिल्में की हैं पर उसके जो भी दोनों ही बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हैं। तो मैंने भी जब पहली बार जब उरी की अगर बात की जाए, आदित्य से जब बात की कि क्या सच में ऐसा हुआ था, इसे एब्सोल्युटली ऐसे ही हुआ था। सो यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू कैरी आउट समथिंग लाइक दैट फॉर योर कंट्री, एंड बिल्कुल क्यों नहीं। अच्छा, यामी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्में सब की हैं, इतनी सारी फिल्में की हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आई लव रिपब्लिक टीवी, तो इसको आप कन्नड़, तमिल, तेलुगु में हमारे लिए बोल के दिखा सकती हैं अगर आप कर पाए। नहीं, मैंने एक फिल्म ही की थी और शुरू में की थी, और मैं बिल्कुल उन स्टूडेंट्स में से थी जो बिल्कुल रट्टा मार लेती थी पूरी एक रात पूरी लगा के, इंक्लूडिंग मलयालम। देयर वाज अ मोनोलॉग इन मलयालम एंड माय को-एक्टर वाज जस्ट शॉक्ड। ही सेड ये आपने लर्न कर लिया? मैंने कहा मैंने सब कुछ लर्न कर लिया सर, यू डोंट यू वरी, जस्ट से एक्शन। सो आई लर्न, आई विश आई कुड लर्न द लैंग्वेजेस, दे आर ब्यूटीफुल। आई लव लिसनिंग टू तमिल म्यूजिक अ लॉट। अच्छा, तो आपने फिल्म की लेकिन आप डायलॉग्स बोल रही थी, आपको समझ आते थे? हाँ बिल्कुल, वो तो समझ के करना है, पर वो मैं हिंदी में लिखती थी ताकि फोनेटिकली बिल्कुल करेक्ट डिक्शन हो। और ऑफ कोर्स सपना था कभी डब भी ज़रूर अपनी लैंग्वेज में कर पाऊँ, मे बी नॉट एट दैट टाइम बट नाउ, बट पंजाबी में बोल लेते हैं। मैं तो रिपब्लिक टीवी बहुत प्यार कर दिया। और ये हिमाचल, पंजाबी में भी, हिमाचली में पहाड़ी में भी बोल देते हैं कि तुहां जो बहुत ज़्यादा तुहां जो प्यार, तुहां जो सम्मान, तुम्हारी रिस्पेक्ट। बस ये प्रोमो लाइन है, इसको कट कर लीजिए। नहीं, बट आप जिस तरह से बता रही हैं, क्योंकि आपके बारे में मैंने पढ़ा भी, और आपने जैसा प्रियंका ने भी थोड़ी देर पहले बोला, टेलीविज़न से आपने शुरुआत की। टेलीविज़न पर जब आपका डेब्यू हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये इनको तो फिल्मों में होना चाहिए, फिर आप फिल्म्स में आई। अब बहुत से, जो एक प्रसिद्ध गाना है कि रेडियो किल द टीवी किल द रेडियो स्टार, अब उसके बाद अब ये कहा जाता है कि OTT इज किलिंग बिग स्क्रीन। आपको लगता है ऐसा? It's killing the budget for sure, I think. Something it is. I see, again, as an actor, I don't like to overcomplicate things. You have to adapt with time. समय बदलता है, हर जनरेशन अपने साथ एक चेंज लेकर आती है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप एग्री करते हो, आपको पसंद हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको नहीं पसंद हो, बट यू अडेप्ट, वी अडेप्ट। पहला जो प्यार है वो हमेशा सिनेमा रहेगा। द आइडिया ऑफ फिल्म वॉचिंग एंड व्यूइंग वॉज टू वॉच इट इन अ डार्क थिएटर, जहाँ पे डायरेक्टर ने जो क्रिएट किया है वो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कट ऑफ होकर आप बिल्कुल एक नई वर्ल्ड में आप आते हैं और बिल्कुल जुड़ जाते हैं। उसका चार्म कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कॉस्ट कटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए। हैविंग सेड दैट, एज एन एक्टर आई विल ट्राई टू बैलेंस बोथ। मेरी फिल्में दोनों ही मीडियम्स में अच्छा कर रही हैं तो क्यों नहीं। और क्योंकि मेरी एक्टिंग में कोई चेंज नहीं आएगा कि अच्छा ये OTT के लिए तो एक्टिंग बदल जाएगी या बिग थिएटर या थिएटर के लिए एक्टिंग बदल जाएगी। फिल्म ये सोचकर बनानी चाहिए कि मेजॉरिटी और लोग देखेंगे और सब लोग देखेंगे। क्योंकि आपने ये बोला, मैं इसी से अगला सवाल पूछूंगी, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि OTT जो प्लेटफॉर्म है उस पर एक अश्लीलता या फिर एक न्यूडिटी परोसी जा रही है, और आपने कहा कि हम फिल्म सबके लिए बनाते हैं, तो फिल्म अभी भी वो मीडियम है जो सबके लिए बन रहा है, पर OTT क्या एक सेलेक्टिव मीडियम हो?
आई थिंक अब मुझे लगता है डेफिनेटली वो व्यूअरशिप जहाँ तक की बात है, क्योंकि अब यूनिवर्सल होता जा रहा है, बहुत इजीली एक्सेसिबल अब हो रहा है, सबको पता है कि अच्छा OTT प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर सेंसरशिप हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. और टू बी वेरी ऑनेस्ट एज एन आर्टिस्ट, येस यू डू फील समटाइम्स कुछ चीज़ें अननेसेसरी हैं, ज़रूरी नहीं है. मुझे लगता है एक फिल्म को चलाने के लिए या कोई सीरीज़ चलाने के लिए आपको इस तरह के कुछ सीन्स की ज़रूरत है. अनलेस द स्टोरी रियली डिमांड्स इट, देन इट्स अ क्रिएटिव कॉल. मैं पर्सनली मैं बहुत मुझे पसंद नहीं है. एंड एज आई सेड, इफ इट्स समथिंग नीडेड, इफ इट्स समथिंग रिक्वायर्ड, देन देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट सर्टिफिकेशन. जैसे हमें भी फिल्मों में हमें मिलता है सर्टिफिकेशन, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. अच्छा, यामी गौतम की जब शादी हुई तो आपकी जो तस्वीरें आई शादी की, उन्होंने भी बहुत सारी चर्चा बटोरी. बिकॉज जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कोई इटली में शादी कर रहा है, कोई जोधपुर में ग्रैंड वेडिंग कर रहा है. यामी की तस्वीरें आई उनके हिमाचल के घर से शादी की, और उनके घर में जो सारे परिवार के लोग थे वो जो रस्में कर रहे थे, वो तस्वीरें आई. एंड दैट वाज वेरी एंडियरिंग. बहुत लोगों ने उस पर लिखा भी कि ये देखकर लगा कि जैसे हमारे घर की कोई शादी है. तो आपको लगता है वो एक जो कनेक्ट है किसी भी एक्टर का, वो बड़ा अच्छा, वो बहुत खूबसूरत होता है ऑडियंसेस के साथ, इवन इफ इट्स योर ओन वेडिंग? ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट दैट हैपन. लॉट ऑफ पीपल केम टू अस अगेन, बिकॉज हम लोग ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं मतलब हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, तो लोगों से मिलना हो जाता है. समवन कम्स अप टू यू, और मुझे अच्छा लगता है जब कोई रिस्पेक्टफुली बात करे और कुछ पर्सनल शेयर करे कि हाउ कैसे हमारा काम छोटा जो भी है, या कुछ भी कोई पर्सनल डिसीजन किसी को अच्छे तरीके से अगर इन्फ्लुएंस करे. तो बहुत लोगों ने कहा कि हम ऐसे ही शादी करना चाहते थे. हमारे पेरेंट्स कह रहे थे नहीं, बड़ी शादी करते हैं, धूमधाम, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, बट वी रियली वांटेड अ वेरी सिंपल वेडिंग. तो जब आपकी शादी की तस्वीरें आई तो लगा कि ऐसी शादी भी हो सकती है. मुझे हमेशा से और आदित्य को ऐसी ही शादी करनी थी. इवन बिफोर मीटिंग अस, दिस इज हमारे ख्यालात इस तरीके के थे. हम लोग ऑफकोर्स जा चुके हैं, देख चुके हैं बड़ी शादियाँ. अपने अपने नज़रिए की बात है, कुछ गलत सही नहीं है. मुझे पर्सनली सही नहीं लगता. या हम जब भी डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी वेस्टेज, काफ़ी कुछ, और तब भी दाल में नमक कम रह ही जाता है. तो हमेशा से इच्छा थी कि ऐसी इतना ख़ास पल है आपकी ज़िंदगी का, जीना. ऐसे बोलते हैं, जब हम सर्टिफिकेट लेने गए तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट, दीज थ्री आर रियली इम्पॉर्टेंट इन वंस लाइफ. तो दूसरे पड़ाव तक तो पहुंच गए हैं, तो वो भी ऐसी करनी चाहिए जो आई थिंक जो दिल से आवाज़ निकले. किसी को शो ऑफ की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है. हमारे खुद के ही जो सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशंस है, अपने आप में इतने खूबसूरत हैं कि ज़रूरत नहीं है और किसी भी कुछ भी से और ज़्यादा ग्रैंड दिखाने की. अपने आप में बहुत ही ख़ास जगह और बहुत ही खूबसूरत है. तो वैसे ही शादी. अच्छा, यामी कहते हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस. तो मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस अबाउट चॉइसेस आपको दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंसेस भी जाने कि यामी को पसंद क्या है. सो इट्स उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और आर्टिकल 370. That's not possible. I'll just choose Aditya Dhar. I think the comment between both of them. That is the best choice. Which I did. That is the best choice. 70mm और OTT. देखिए, पिछली 2-3 फिल्में 70mm रही हैं, शायद एक आने वाली OTT होने वाली है, तो ये बहुत बता दीजिए हमारे दर्शकों को, बता दीजिए. दे आर वेटिंग ईगरली. आपके आने से पहले भी, सेशन से पहले सब लोग इंतजार कर रहे थे कि यामी आएंगी तो बताएंगी उनकी अगली फिल्मों के बारे में. आई थिंक दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों. पहले 70mm हो जाए, फिर OTT भी, क्यों नहीं, व्हाई नॉट. हिमाचल या मुंबई? देखिए, एक जन्मभूमि है, एक कर्म भूमि है, तो किसको चुनूं? ये थोड़ा डिप्लोमेटिक है, बताना पड़ेगा. देखिए मुंबई नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती, और अगर हिमाचल नहीं होता तो शायद जो दिल है शायद वो वैसे नहीं धड़कता जैसे धड़कता है. तो आई थिंक दैट्स माय हार्ट. अच्छा, हमारे पास विक्रांत मैसी और कार्तिक आर्यन, क्योंकि ये दोनों ही स्टार्स हमारे संगम में आने वाले हैं, और जो आप जवाब देकर जाएंगे हम उन्हें जरूर बताएंगे. मैं क्या करूं? दोनों में से कौन, विक्रांत मैसी या कार्तिक आर्यन? Who's a better star? Who's a better star? actor? Yeah. Better actor?
नहीं नहीं मैम, ये तो आप गलत आपने हम बताएंगे भी उन्हें। नहीं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। विक्रांत के साथ ऑफ कोर्स मैं काम कर चुकी हूँ, और उनकी हाल ही में फिल्म आई थी 12th फेल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें, और कार्तिक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग वही है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, अच्छा सब काम करें। आई एम वेरी बोरिंग एट, आई नो, गिविंग दीज आंसर्स, बट इट्स ओके टू बी बोरिंग। नहीं नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन। कंगना और आलिया, और ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि कंगना के बारे में मैंने एक तो आपकी होम स्टेट से आती हैं, वो भी हिमाचली हैं, और दोनों एक्टर्स हैं जिनके बारे में काफ़ी उनको क्रिटिकली अक्लेम भी मिला है, आपको भी मिला है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपकी पसंद कौन है दोनों में से? ऑफ कोर्स आलिया ने भी बहुत अच्छी फिल्में की हैं, और मुझे लगता है कंगना ने जो एक होते हैं वर्सेटैलिटी, वो जहाँ तक कि अब तक जो देखा है, अगर मैं सभी की फिल्में देखूं तो बहुत बखूबी निभाई है। मुझे लगता है फीमेल एक्टर्स के लिए ना, खासकर मैं बताती हूँ और क्यों, जो कॉमेडी है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत कम रोल दिखे जाते हैं। जब मैंने बाला की थी, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, और लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसे रोल अच्छे छोड़िए लिखे ही नहीं जाते हैं। और मुझे लगता है वो कॉमेडी आसान नहीं है करना, वो बहुत अच्छी करती हैं। उन्होंने क्वीन में बहुत ही खूबसूरत काम किया था, और भी बहुत उनकी फिल्में ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत उम्दा काम किया था। सो आई थिंक शी अगेन समवन who's made it on her own terms। और आलिया ने भी ऑफ कोर्स शी इज़ अ गुड एक्टर, और आई होप आप हम लोग सबका भी नाम पूछेंगे आप इन सबको जब इनसे बातें करेंगे। नहीं, आप तो वहाँ है ना, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन, बताइए भाई। नहीं, सब यहीं पर है। यू नो, आई विल टेल यू समथिंग लिटिल अवे फ्रॉम योर टॉपिक। अभी हाल ही में मैं अमृतसर में थी, और वहाँ आदित्य की अगली फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और वहाँ पे उसमें ऑफ कोर्स बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत दिग्गज कलाकार हैं, बहुत नोन कलाकार हैं। एंड आई हैपन टू मीट संजय दत्त। तो हम लोग हरमंदर साहब जा रहे थे, और वेरी स्वीट ऑफ हिम टू टेक सच गुड केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। और पहली विजिट थी आदित्य और मेरी अपने हमारे बेबी के साथ, और मैं देख रही थी, सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी कि दैट इज़ ट्रू स्टारडम जिसे आप कहते हैं। यू हैड टू सी कैसे मीडिया तो बहुत बाद में उनको पता चला, पर कैसे शायद एक बलून बेचने वाला है, कैसे एक साइकिल रिक्शा वाला, कैसे एक जो कहीं छोले भटूरे बना रहा है, सब अपना काम छोड़कर भाग रहे हैं उनके पीछे। दैट इज़ ट्रू स्टारडम। हम लोग बहुत पीछे हैं, और हमें बैठ के सिर्फ इंजॉय करना चाहिए जो हमें मिला है, क्योंकि वो जो दैट इज़ द लास्ट ऑफ ऑल। और वो इतने काम है इसके बारे में, कोई एज नहीं, कुछ नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ होते हैं तो आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब सोशल मीडिया खासकर इतना अहम हमने बना लिया अपनी ज़िंदगी में। आप हर एक चीज़ हम अपलोड करते हैं, हर एक चीज़ हम बता रहे हैं, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहाँ हूँ, आज मैं ये खा रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं गिर गई साइकिल से। सो वी बिकम देयर इज़ नो मिस्ट्री एनी मोर। तो वो देखकर तो स्टारडम, क्योंकि आपने बात की, आई थिंक दैट इज समथिंग। नहीं, बट यामी यू आर अ स्टार, और आपके ऊपर भी वो प्रेशर रहता होगा कि सोशल मीडिया पे आप अपडेट्स करें, मैं आज ये खा रही हूँ, आज मैं यहाँ गई हूँ, आज मैंने ये ड्रेस पहनी, आई एम वेयरिंग दिस डिजाइनर। वो रहता है कि नहीं रहता है? देखिए, मैं जिनसे आज बात कर रही हूँ वो आप हैं, और हम बस आप और मैं बात कर रहे हैं, उसके बारे में डायरेक्टली आपके चैनल के थ्रू पता चलेगा, नॉट थ्रू माई हैंडल। और ये प्रेशर ज़रूर था एक टाइम तक, बट आई हैव स्टॉप टेकिंग दैट प्रेशर, क्योंकि मुझे समझ आ गई मेरी पहचान मेरी फिल्मों के ज़रिए है, मेरे काम के ज़रिए है। वो मेरी बेस्ट ज़ुबान है। जैसे आप टैलेंट की बात कर रही थी, किसी ने कॉमेडी की, किसी ने गाना गाया, ये मेरा हुनर है। जो जितना सभी है, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, मुझे इसको निखारना है, मुझे इस पर और काम करना है, और उसके लिए मुझे ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे अपना बस काम करना है। बाकी जनता है सरताज, बाकी आप सब हैं, आप सब हमें बनाते हैं जो हम बनते हैं। हमारा काम है वो बस काम करना, और फिर घर पर आकर फिर आना, अच्छा खाने में क्या बना है, अच्छा मैं ये कुछ बनाऊँ। अब तो है कि अच्छा हाउ यू डूइंग माई स्वीट लिटिल वेदा। तो अब तो बिल्कुल लाइफ डिफरेंट है। तो मुझे लगता है being a person, you should be able to enjoy every role in your life. Otherwise बहुत हावी हो जाएगा। Otherwise आप 24 घंटे पर आप काम ही कर रहे हैं, तो आप फिर जिए क्या? आपको लगता है द इंडस्ट्रीज बिकम मोर एक्सेप्टिंग ऑफ वर्किंग मदर्स? मतलब क्योंकि हम एक के बाद एक एक्ट्रेसेस देख रहे हैं जो दे बिकम मदर्स, और उसके बाद वो काम भी कर रही हैं। आपको लग रहा है वो एक्सेप्टेंस अब आ चुका है पूरी तरह, या देयर स्टिल सम टाइम फॉर इट? एब्सोल्युटली, देयर आर प्रोड्यूसर्स, जो मेरी अगली फिल्में हैं आने वाली हैं,
उन्होंने मेरे लिए इंतज़ार किया है ऑलमोस्ट 1 साल, ताकि मैं कंफर्टेबली अपनी अगली फिल्म की शूट उनके साथ शुरू कर सकूं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, बहुत प्रोग्रेस है। और इसका श्रेय ऑफ कोर्स मुझे नहीं जाता है, सिर्फ हम 1-2 एक्ट्रेसेस को नहीं जाता, बहुत सारी एक्ट्रेसेस का हार्ड वर्क रहा है, बहुत सारा काम गया है इसके पीछे टू रीच दिस स्टेज वे we can command and we can command respect and do the kind of work that we want to do. तो मेरा जो मैं रोल की बात करी थी, मैं घर पे ऑफ कोर्स मैं पर्सनल लाइफ हमेशा ही ऊपर रहेगी, बीइंग अ मदर। और जहाँ तक कि काम की बात है, मेरी भी अब वो चॉइसेस वैसी नहीं है कि विच इज़ बेसिस एनी वैनिटी, विच इज़ बेसिस कि अच्छा सिर्फ एक कोई फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे मुझे कुछ फिल्में बन रही हैं। अब ज़माना बदल गया है, अब हमें अच्छे रोल्स चाहिए, हमें बेहतर रोल्स चाहिए, हमें ऐसे रोल्स चाहिए जिसमें हमारा वजूद है, हम इम्पॉर्टेंट है फिल्म में। तो उसके लिए आप शादीशुदा है, आपने शादी नहीं की है, आप माँ बनी है, आप नहीं हैं, दैट डजंट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज आप कितने अच्छे एक्टर हैं, लॉन्जेविटी उस पर डिपेंड करेगी। सो इफ़ यू वांट टू स्टे लॉन्गर एंड मेक योर करियर एंड जो होता है लोगों के दिलों में घर कर जाना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी काम और आपकी चॉइसेस क्या हैं स्क्रिप्ट को लेकर, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा यामी, आप जब आ रही थी यहाँ पर तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफेबल एक्टर्स टू मीट। मतलब वो आएंगी, आपके साथ बात करेंगी, आपको लगेगा ही नहीं, मतलब वो आपके बीच में आपके जैसी हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अ स्टार, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि स्टार्स बहुत से होते हैं, एक्टर्स कम होते हैं। आप स्टार भी हैं और एक्टर भी हैं, और आपको लगता है कि आपको पता लगती हैं अपने बारे में ये बातें जो पीछे से लोग करते हैं आपके बारे में, मीडिया हो या फिर आपकी अपने ही सेट पे लोग हों। जो इमोशंस होते हैं ना, ह्यूमन इमोशंस, वो बहुत जो प्योर इमोशन होता है उसमें कोई बनावट नहीं है, वो आपको आंखों में दिख जाता है। यू कैन नॉट फेक इमोशंस। आप जैसे हैं आप वैसे ही, वो आपकी आंखों में वो नज़र आता है। और जिस इसका श्रेय मैं दूंगी अपने अपब्रिंगिंग को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को। मैं अपनी फैमिली से बहुत जुड़ी हूँ। आदित्य भी वैसे ही है, एग्जैक्टली इज़ अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। मुझे नहीं लगता, हम अपने काम को बहुत सीरियसली जब ले लेते हैं तो शायद कुछ और कहानियाँ बनने लगती हैं दिमाग में। आई टेक माई वर्क विद लॉट ऑफ पैशन, बट आई डोंट टेक इट सीरियसली इन द सेंस कि मैं कुछ हूँ। मैं जो हूँ मेरे काम की वजह से है, मेरी ऑडियंस की वजह से है। और अगर इसी में, और इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, इसमें कोई कोई there's no need to feel oh I'm different in a way, just the way you are different from somebody else, that's it. बाकी इतनी सी लाइफ है, अगर अच्छे से बात नहीं की, किसी का दिन नहीं बनाया, then what's the point? किसी से अच्छे, जब मैं सेट पे जाती हूँ मुझे सबका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे लाइट दादा हैं, जो मेरे फोकस पुलर हैं, there's really important people, I really value them on set. हम लोग तो यहाँ बैठते हैं कैमरा के सामने, but these are the people, your technical team and everyone जो contribute करता है and making a film. आप लोग हैं, आप लोग जो अब आप जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं, you made me feel comfortable. That is why we're having a conversation and not it's a question answer thing. I don't know, मुझे नहीं पता आप क्या पूछने वाली थी या क्या पूछने वाली हैं। तो we're humans ना, we have to be nice. मैं आपको बताऊं, मैंने यामी से पूछा भी इस सेशन से पहले कि आप कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहेंगे। उन्होंने कहा जिसके बारे में आपको बात करनी है बात करिए। तो मुझे ये बताइए, जो खूबियाँ आपने बताई, जो मुझे लगी आप में, ये खूबी बॉलीवुड के किस बड़े स्टार में है? ये जो एक अपनापन है या फिर जो एक कनेक्ट है, ये आपको क्या लगता है बॉलीवुड के कौन सा एक बड़ा स्टार है जिसमें ये खूबी है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग जब काम ख़त्म हो जाता है हम घर पर ही रहते हैं, किसी पार्टी में होते नहीं है। पर जैसे मैंने कहा, हर दिन एक नई सीख है, आप किसी से मिलते हैं। जैसे मैंने संजय सर की बात की, संजय दत्त सर की, सो हम्बल, उनकी लेगेसी देख लीजिए, वो कहाँ से, किस फैमिली से हैं, पर वो उनके साथ दुनिया चलती है क्योंकि वो उनसे प्यार करती है और वो सबसे बात करते हैं। आप बोलेंगे चाय पियेंगे, वो चाय पी लेंगे, हाँ जी पी लेंगे। दैट इज़ सो स्वीट। तो आई थिंक यही अपने आप में बहुत एक सीखने की बात है कि आपको कुछ बनने के लिए कुछ प्रिटेंस की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करिए अच्छे से, सबसे अच्छे से रिस्पेक्ट लीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और बहुत सिंपल लाइफ है, ऐसे ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती।
अच्छा यामी, आप क्योंकि हिमाचल से आई और उसके बाद आप मुंबई में आई, तो मैं ये पूछूंगी क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एक्टर्स हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, वो मुंबई आते हैं, बहुत कम होते हैं उनमें से जो स्टार्स बन पाते हैं या एक्टर्स बन पाते हैं, बट हाउ डज मुंबई ट्रीट पीपल? मुंबई बहुत लोग कहते हैं क्रूअल है, आपको लगता है ऐसा है? क्लिनिकल है, क्रूअल भी हो सकता है, वेलकमिंग भी हो सकता है। अब जब मैं भी आई थी, किसी को नहीं जानती थी, कुछ नहीं पता था क्या कहाँ से ए से भी पहले कुछ शायद एक छोटा ए आता है, वो क्या है कुछ नहीं जानती थी, बट एक चांस ज़रूर देती है यही मुंबई नगरी और यही इंडस्ट्री किसी को, कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में वो समझ है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री से आप क्या लेना चाहते हैं, तो एक बार वो मौका लाइफ में आपको ज़रूर मिलेगा, और आज के टाइम में तो ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल हार्ड है लाइफ, और अच्छी बात है जब आप इस मुकाम पे फिर पहुंचते हैं जहाँ पर आपको आई डोंट ओ एनीवन एनीथिंग। मुझे ऑफ कोर्स लॉट ऑफ थैंक यूज़, बहुत ग्रैटिट्यूड है, बहुत डायरेक्टर्स का, बहुत प्रोड्यूसर्स का, ऑडियंस का, सबका, बट जो भी है अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जो भी रहे हैं, खुद के ही बलबूते पर रहे हैं और खुद से ही जवाबदारी रही है। कई बार होता है आप कमाते अच्छा है, शायद नींद अच्छी ना आए, शायद नींद अच्छी आए बट थोड़ा कम कमाई हो, आई एम ओके विद अर्निंग लिटिल लेस, बट अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो वो कैरेक्टर उसे मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है। बाकी तो अच्छी बात है, स्ट्रगल है। जब आपको स्ट्रगल में मज़ा आना शुरू हो जाए ना, कि आप मज़ा आ रहा है, दैट इज़ वेयर योर जर्नी एक्चुअली बिगिंस। यामी, हमें लग रहा था कि फिल्मों पे बहुत बातें होंगी, फिल्मों में तो हुई बात, बट यामी एक ऐसी कलाकार है जिनसे बात करके लगा कि बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी उनसे मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे जो दर्शक हैं उन्होंने भी ऐसा महसूस किया होगा, एंड द वे दे वर वेटिंग फॉर यू, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, उसी तरह से आपकी अगली फिल्म का भी इंतज़ार कर रहे हैं, एंड आई होप आप बहुत जल्द अपने अगले अवतार में हमारे सामने होंगी, उसको लेकर कुछ कहेंगी? विच विल बी द नेक्स्ट अवतार? नेक्स्ट अवतार इज अ फिल्म कॉल्ड धूमधाम, एंड फिल्म कॉमेडी है, केपो कॉमेडी है। ये आदित्य ने प्रोड्यूस किया अलॉन्ग विद हिज ब्रदर लोकेश। तो अब हमारे स्टाइल की कॉमेडी है तो अलग कुछ अलग ही होगा। मेरे साथ प्रतीक गांधी हैं, अगेन अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, और अभी तो इतना ही बता सकती हूँ, बट आई प्रॉमिस जस्ट लाइक माई अदर फिल्म्स एंड माई अदर स्क्रिप्ट्स, आई वोंट लेट यू डाउन। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। अगर कॉमेडी है, फैमिली फिल्म है, तो फैमिली फिल्म ही होगी, और कम्युनिटी वॉच है, मतलब लिटरली इतने लोग होने चाहिए एक बार में देखने के लिए, और मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। और इस सेशन में भी बहुत मज़ा आया। यामी हैज़ नेवर लेट अस डाउन विद हर परफॉर्मेंसेज। जैसा मैंने कहा कि स्टार्स बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें एक्टर्स बहुत कम होते हैं। यामी इज़ अ स्टार एंड ऑल्सो एन एक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस ब्यूटिफुल सेशन यामी, एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक भारत संगम। थैंक यू सो मच। أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة. هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردى ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه
كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين وللعرب، وأيضا الدعم الكامل الذي يتم تقديمه لهم من حكومة نتنياهو وسموتريتش وابن غفير على ليقوموا بهذه الأعمال. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Very good afternoon to all of viewers watching Republic TV live and breaking with me, Kriti Mehta, at 4 p.m. Now, viewers, Prime Minister Modi is in Kuwait for a 2-day visit, and the country has accorded its highest honor to the Prime Minister there. This is a breaking news development that we are coming up with. Kuwait has bestowed its highest honor, the Order of Mubarak Al-Kabir, to the Prime Minister. This is the 20th international honor given to Prime Minister Modi by a country. The Order of Mubarak Al-Kabir is a knighthood order of Kuwait. This has, of course, been accorded to the Prime Minister during his 2-day visit to the nation. The order is awarded to heads of state and foreign sovereigns and to members of foreign royal families in a sign of friendship. It has, in fact, previously been awarded to foreign leaders like Bill Clinton,
Prince Charles and George Bush. And now today the award, the honor, the Order of Mubarak al-Kabir has been accorded to Prime Minister Modi. Let's go across to Abhishek Kapoor, Senior Executive Editor, joining us on the phone line to give us more details. Abhishek, a very good afternoon to you. This is a big honor that the Prime Minister is receiving and the 20th such international award. What really is the significance of this honor? Well, the significance obviously is the kind of connect that Prime Minister establishes with the leaderships, with the people of the countries he travels to. And you rightly mentioned this is the 20th or 21st such award, the highest civilian award being given to Prime Minister. And in the case of Kuwait, now if you look at it, this is the first time in the last 43 years that an Indian Prime Minister is visiting that nation. And remember, it's just across the Arabian Sea. I mean, it's like a pond, so to say, in the modern parlance. Till 1961, Kuwait was using Indian currency. Rupee was the currency of transaction for trade. And in its pre-oil days, Kuwait was effectively dependent on India for its basic needs. And now also about 1/5 of the population there is Indian, and yet you have a Prime Minister visiting after 43 years. So in a way, awards like these really mean a lot in terms of these respective nations recognizing Prime Minister Narendra Modi's personal touch in elevating and contributing to the relationship wherever he travels. So, and particularly in this geography, in the Middle East or West Asia, if you look at it, and predominantly Muslim nations, so Saudi Arabia, Afghanistan, Palestine, Maldives, United Arab Emirates, Bahrain, all these nations, Egypt, in fact, all these nations have given their highest civilian honors to the Prime Minister, and Kuwait now joining that long list of those nations that have bestowed this honor on Narendra Modi. Obviously, as I mentioned, the personal energy and the commitment that he brings to each relationship, the manner in which he engages, and provides India as a nation that can be banked upon, that can be trusted in hours of need and crisis, from Maldives to Papua New Guinea to Fiji, and during the COVID period, the rest of the world. I think this is a recognition as much for the Prime Minister as for the country, the manner in which India has really upped its game and made itself relevant in the larger committee of nations, Kriti. Right, Abhishek, let's also talk about how trade plays a key role in the relations between the two nations. That's also what the Prime Minister said. Just want to understand from you, for our viewers, how is bilateral trade going to get a boost with this visit of Prime Minister? Well, so as I mentioned, Kriti, that this is the first time a Prime Minister is visiting in after a gap of 43 years, and that really gives you an idea of the kind of the scale of neglect, effectively. So obviously, when that kind of top-level engagement happens, when the leaders at the top meet, whole delegation level talks, and with the kind of chemistry that builds over these kind of engagements, meetings, and ceremonies like this one where Prime Minister is getting the award, obviously a lot of things get sorted. So, for example, in the case of Qatar, we saw that there were some former Indian Navy officers who were accused of a certain crime, and then they got released when Prime Minister engaged with the Emir of Qatar at the highest levels on the sidelines of the G7 summit, and then of course the Prime Minister visited them. Kuwait is the sixth largest supplier of India's energy needs with fuel, essentially oil and gas. And so obviously when you look at this kind of engagement, if there are any issues, that those get sorted, and in a while we would know what all the MoUs get signed. $10 billion plus worth of annual two-way trade between the two nations, third largest trade partner insofar as the West Asia geography is concerned. So obviously this award, this visit, and the personal touch and the chemistry that Prime Minister brings, the energy that he brings to the relationship, obviously gives the fillip to the overall partnership. Well, absolutely. Thank you, Abhishek, for joining us for now and sharing those details with us. Viewers, Arth is also joining us from the newsroom. Now, Arth, one of the major outcomes of the relation and the visit of Prime Minister
to Kuwait was that the friendship that the two nations share has now been elevated to that of a strategic partnership. India and Kuwait are now technically and officially strategic partners. How does that change? What effect does it bring to the two nations? Well, Kriti, it's a big development. Like yesterday, we saw Prime Minister Modi, while engaging with the Indian diaspora in Kuwait, he said how a strategic pillar, or how a pillar of the relationship, of the bilateral relationship, is built on innovation, and how India will help Kuwait in every possible way, be it building smart cities, be it building, be it in the field of technological innovation. PM Modi was very clear with his statements that India will be a helping hand to Kuwait, and now he has been also conferred with the highest civilian honor of Kuwait, like he was conferred with the highest civilian honor in Dominica and Guyana. This shows India's, time and again, the engagement repeated by India, the voice of the Global South, and how India will emerge as the voice of the Global South and connect with Global South countries. This alignment, this policy vision is also being highlighted by Prime Minister Modi's Kuwait visit, and this comes as a big development, as like Abhishek mentioned, 1/5 of the Kuwaiti population is Indian. We have a huge diaspora, and Prime Minister Modi in the Hala Modi event stated how he feels proud of the Indian diaspora in Kuwait and how they play a big role in contributing to the economic remittances that India is getting as well. So this relationship, indeed, Kriti, there is a lot to witness ahead in the field of innovation, technology, and definitely both the countries aspire to grow, and that is what keeps the relationship alive, and that is what will take the relationship ahead from now. Back to the studio, Kriti. All right, well, thanks, Arth, for joining us. Let's also tell our viewers that upon his visit to Kuwait, Prime Minister said that he's too delighted with the visit. He also thanked His Highness the Emir of Kuwait, Sheikh Meshal Ahmed Al Jaber Al Sabah, for the gracious invite. That's the post that has been put out by the Prime Minister. In fact, he also went on to add how the visit holds special significance and marks the first visit by an Indian Prime Minister in over 4 decades. In fact, the Indian Prime Minister also went on to say that India and Kuwait continue to share a deep and historic bond, and the relationship between both the countries has always been one of warmth and friendship, and that the cross currents of history and exchanges through ideas and commerce have brought people close and together. Well, we can see, Kriti, India and Kuwait, India's Gulf engagement, particularly over the last few years, especially under the Prime Ministership of Narendra Modi, has realigned itself. Indian Gulf engagement, India's trade with Gulf are at, it's at one of the best levels that we have ever witnessed. And surely the Kuwait visit, like you said, Kriti, it's a visit after 43 long years, and the last visit was made by Indira Gandhi. And like Abhishek also said, Kuwait is not that far from India. But despite that, it took 43 years for a Prime Minister to visit Kuwait, despite the fact that 1/5 of Kuwaiti population is actually having Indian roots of Indian origin or connected to India in some way or the other. So Prime Minister's visit to Kuwait is indeed very significant, and in his meeting with the Crown Prince, we can expect the details of the MoUs to come anytime soon. But we are being told that they discussed, again, like Prime Minister Modi yesterday also, during his engagement with the diaspora, he stressed on the importance of innovation, and we also believe that in that particular meeting with the Crown Prince of Kuwait, Prime Minister Modi, flanked by Dr. S. Jaishankar, discussed the details of how both the countries can take innovation to a next level in the coming years, as both the nations aspire to be developed very, very soon. And this is in tandem with India's Viksit Bharat vision, as mentioned by Prime Minister Modi time and again during his visit, and especially yesterday during his Hala Modi event when he was engaging with the diaspora. We clearly can see the optics. We can clearly see how the India-Kuwait relationship is all set, which is all set to witness, is all set to go into new levels. Back to the studio, Kriti.
Right, thank you, Arth, for joining us. Viewers, with that, let's shift our focus to news coming in from Punjab's Mohali. And cutting across to more inputs that we are bringing now, almost 24 hours since the building collapsed, rescue operations are continuing. Army and NDRF teams are on the ground. 2 people have lost their lives, unfortunately, so far. Let's go across to Lalit, who's joining us live from Mohali. Lalit, very good afternoon to you. Talk to us about how the rescue operations have proceeded so far and how many more people are still believed to be trapped. Well, Kirti, if we talk about this whole operation, now this operation has almost winded up, and majority of the debris have been somehow evacuated from the place where this whole building collapsed like the span of cards and spade of cards. Other than that, Kirti, if we talk about 2 persons have lost their lives. One is a 20-year-old native from Himachal Pradesh, Theog, Kirti Verma, and another is a male from Haryana. His name is said to be Abhishek. So in total, 2 deaths have been reported till now. If we talk about the Army has already left the spot while the NDRF is just clearing up the debris of the building which have been found in the basement. Other than that, if you talk about this whole operation lasted for more than 22 hours, around the clock, the Indian Army, the BSF and the NDRF were there. And if we talk about when this whole building just collapsed, when the foundation of that building was somehow disturbed by adjacent digging of the JCB, the whole building just collapsed within no time. And in that building, 2 people got trapped while 3 persons were being saved when they just got to know that the building is about to fall down. So the debris and the rubble have been cleared up by the JCB. Almost, if we talk about the JCB machine of the Administration 4 and the Indian Army's JCB have been working continuously round the clock for 22 hours. So roughly around 3 p.m. the operation has been stopped, and around half an hour before, the Indian Army has now left the spot while the NDRF is just clearing the debris of the building. So till now, the actual death toll is 2, a girl native from Himachal Pradesh and the other guy from Haryana, whose name is said to be Abhishek. So Republic TV has been tracking this report since yesterday from ground zero. Keep watching Republic TV. We'll flip into a very short break.
أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردى ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين وللعرب، وأيضا الدعم الكامل الذي يتم And welcome back, viewers. Now, the Allahabad High Court will hear the petition of Sambhal SP MP Ziaur Rahman in January. This comes in connection with the 24 November violence in Sambhal. Take a look at this report. Samajwadi Party MP from Sambhal, Ziaur Rahman Bark, has filed a petition in the Allahabad High Court seeking a stay on his arrest. This comes as Bark is accused of instigating the violent clashes that erupted in Sambhal on the 24th of November over the survey of a Mughal-era mosque. The SPMP has also sought quashing of the case against him. Meanwhile, the Allahabad High Court has pushed the date for hearing Bark's petition to the 2nd of January next year. A bench comprising Justice MC Tripathi will hear the SPMP's petition. In fact, the SPMP side will be presented by senior advocates Imran Ullah and Vineet Vikram. This comes as Ziaur Rahman Bark also faces allegations over an electricity graft case in Sambhal. The UP police has imposed a fine worth 1.91 crore rupees on Ziaur Rahman Bark. And it's time now for a very quick break on this bulletin. Stay tuned, viewers. We're also bringing you news on the face-off over Baba Sahib Ambedkar. Now, Karnataka Congress Minister Kharge has targeted Home Minister Amit Shah, saying he's bitten by a mad dog. Bringing you more details. Stay tuned to Republic. उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
The deadlock between the BCCI and the PCB has finally come to an end, and the ICC's efforts have finally paid off. The Champions Trophy, as confirmed by the ICC, will be played in the hybrid model. The time was running out for the ICC considering the financial implications of the marquee event. The Institute of Directors India hosted yet another edition of the London Global Convention 2024. Held across iconic venues of London, including Hotel, the Montcalm Marble Arch, UK Parliament's House of Lords and House of Commons, and the Institute for Healthy Urban Living at the University of Westminster. The theme of this year's convention was Board Strategy for a Secure Future and Turning Disruptions into Opportunities. Like every other auspicious occasion, we begin the IOD's Global Convention with customary lamp lighting ceremony. The convention welcomed over 350 delegates across 4 days from industry, government, academia, civil society, prominent Indian diaspora, and other diverse stakeholder groups, upholding its rich legacy of drawing a large number of participants from across the globe. The inaugural session commenced with an opening address by Mr. Ashok Kapoor, IAS retired, and a gracious welcome by the Baroness Verma. It is predicted that by 2025, over 50% of the global economy is expected to be influenced by digital platforms and ecosystems powered by transformative technologies. The current speed at which these changes are occurring underscore the urgent need for businesses to adapt and move with times. The world is becoming much more connected and much more smaller, so there's no place to hide. If we want ethical, sustainable, a kinder way of doing business, then it starts from the top with our leadership. The program was further enriched by a series of thought-provoking keynote addresses delivered by eminent leaders and distinguished thinkers that set the ball rolling for the convention. The future generations will depend on actions we take today. Therefore, we must strategize and measure performance not solely on financial gains, but also the social and environmental impact of our business. I have to say to all of you, if I can ask you to do one thing following this conference today, it is to go out and promote the cause of free trade and to press your representatives and to press the government and press the government here to come to a conclusion and do a free trade deal again here in the UK. So I'll tell you one thing, it will only make us richer, happier, more secure, closer, more prosperous, and frankly, ultimately give us much, much better and long. All the boards play an important role, not only to ensure that shared borders values are protected, advanced, but also ensure that there are sustainable practices and the risks are averted, averted. For that, I think we all take a lot of oversight mechanisms and responsibilities. And also create to look at the long-term vision for the company and its own group. About 1.7 million people of Indian heritage live here, and they make a huge contribution to the country economically, socially, and of course culturally as well. And it's thanks to these unbreakable bonds that we enjoy a thriving trade and investment partnership, which through a future free trade agreement and bilateral investment treaty could create one of the strongest and most prosperous relationships and partnerships in the world, which we're very proud of. The opening session also marked the release of the convention souvenir by the esteemed dignitaries. Building upon IOD India's illustrious legacy, the convention served as a platform for profound deliberations and insightful exchanges. The discussions spanned across 2 days,
focused on critical issues surrounding corporate governance and sustainability, emphasizing the implementation of board strategies to secure the future, while transforming disruptions into opportunities. When it comes to crises, in my own business, I've nearly lost my business 3 times. 3 things have seen me through my crisis. 1, having strong brand. 2, having good, loyal team who's there to support you and satisfy you in the toughest of time. And finally, the third reason we survived our crisis is it is better to fail doing the right thing than to succeed doing the wrong thing. You have to behave with integrity. Now, the theme of this session, boards in an uncertain world, embracing good corporate governance and inclusive growth, provoked us many responses. It simulates so many ideas, it raises so many questions, and there is enough within that, just that simple phrase, to exercise the greatest brains in business from now until the 8th century, I think. The challenges really that we face today, from an economic and stability point of view, social unrest, economic degradation and technology disruption, require more than traditional governance. They demand a bold, forward-thinking approach to corporate leadership. Now, when we talk about climate change, Paris Agreement is something which is very well known. The target or the goal of Paris Agreement is to limit greenhouse gas emissions and to limit global warming. Global warming to preferably around 1.5 degrees Celsius by end of the century, which is about 65 years from today. 1.5 degree warm. But where we are today is we have already breached that limit. Most organizations, they tend to get into bad practices because boards have failed in their responsibility of managing executive behavior. Sometimes CXOs tend to overgrow and their behavioral aspects affects the organization. So it's a board responsibility to tap that person down and say, look, this is how it has to be conducted. You might have done 150% of your targets, you might have done this, you might have done that. Enough, but you stay where you are. We believe that you're delegating decision outcomes to machines in a way that has risk for boards and governance, and if that's going to be our focus. And it's really to do with complex systems which have features where humans really need to sort of keep the handle on the gears. Try to prepare for all eventualities. We did a huge amount of scenario planning, which forced us to think about the worst outcomes. Company going bankrupt. We talked openly about that. And it takes fear away when you talk about the most unpleasant possible outcomes. I just want to mention that whether it is better access to resources, whether it is improving cost, whether it is training diverse workforce and creative product, whether it is need and desire for organizations to have more profits, all of this can be achieved through machine learning and AI. That is ESG compliant. That we in the gold industry care deeply about supporting the lives of people and supporting the social impact of the world we live in. Improving people's lives is core to the gold industry and the environment and the governance around all of that. What we discovered when we went into Borders for Change into institutions is the discovery that if you are able to catch people at a young age, you will be able to change their mindset and bring up a population which is far more responsible than possibly we are. And that led to the creation of this year-long work with Center for Environmental Education to create a booklet for environment education in college. From innovation perspective, deep polygon is something is the most, I would say, ambitious. A convention method to understanding the green chemistry principle and getting into sustainable sourcing with other 2 pillars. We have made progress. Last year at Diaspora, we spoke about our plan. From the land, now we have reached the pilot scale for the Granny CZO initiative. This is basically focused on using a renewable carbon-free energy. You ask yourself, Eve asks yourself, are we doing track the path, organize it, and design it? This, I think, is what.
If you do not know to which port you will sail, no wind is taken. And we shouldn't be caught the yatra. It is very hard to describe how much quicker things happen now than they did 20, 25 years ago. I think it's partly a function of technology, partly a function of growth, partly a function of globalization. The things happen a lot quicker. 25 years ago, something might have taken 2 or 3 days. Transactions were done through mail, slow mail, as we call it now, snail mail. Now things happen on email, or video conferences, and things happen just a lot quicker. That creates a governance and managerial challenge. After detailed deliberations on board dynamics, the delegates were treated to invigorating discussions on building a futuristic board which is diverse, tech-savvy, and understands inclusion. We've seen transformative aspects of how digital can really revolutionize the way we do work. And again, from the previous set of comments as well, around the boardroom, while we have several levels of defenses, we are sure about one, but I think digital transformation can definitely be your second level of defense. We board members need to enhance our educational skills. We need to enhance our AIs inside of us. And just to touch on these skills, we need to enhance our ESG skills. Very big area where we project put that effort concentrate on. Sometimes the changes that take place in national policies, national or state level policies, in terms of handling the public goods that get built by private parties. So whether it's private equity capital or financing done by debt, which is through savers' money, very often due to perhaps the larger good, you do see policy shifts take place in terms of especially pricing. We are talking about the rise in the exponential rise in IoT and smart healthcare systems, and of course IoT usage. And this is a typical test. When you see anybody test, it looks like a war zone to see how many devices we are surrounded by. So what we are surrounded by is what I would call as electrosmog. So you can see dirty air, you can see air smog, you can see all this thing, but you can't see the electrosmog because it's invisible. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة. أفقنا هذا اليوم على جريمة جديدة نكراء ونستنكرها كمجلس وكأهالي مردة ومؤسساتها من إقدام مجموعة مستوطنين من المتطرفين الزعران اللي قاموا بمهاجمة مسجد بر الوالدين وحرقه كما رأيتم وتشاهدون من خلال سكب مادة حارقة وكتابة شعارات عنصرية على المسجد. هذه الشعارات تدلل على تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين وللعرب، وأيضا الدعم الكامل الذي يتم تقديمه لهم من حكومة نتنياهو وسموتريتش وابن غفير على ليقوموا بهذه الأعمال.
thoughtful discussions were followed by the highly anticipated Golden Peacock Awards ceremony, where the leading voices of the industry came together to recognize the achievements of their peers in the field of corporate governance, ESG, sustainability, and risk management. I want to congratulate all the winners, and I know how difficult of a process we at IOD put you through. The level of trade there is between UK and India is hugely important, and it's growing all the time. And I must say, I agree entirely with what Greg said. I'm sure the people in this room are significantly responsible for the changes which have taken place, the increases which have taken place, and I hope they will continue to be so. The role of corporate directors become more complex than ever, requiring a diverse skill set, adaptability, and a global mindset. As the business landscape continues to evolve, directors' ability to balance stakeholder interests with strategic foresight will define the effectiveness of corporate governance worldwide. Today we're here to celebrate the achievements of some of the most well-performing organisations. Let's begin the Golden Peacock Global Award. The session also witnessed the felicitation of senior industry leaders. Mr. B.V.R. Mohan Reddy was awarded the Golden Peacock Award for Lifetime Achievement and Leadership in Technological Innovations. Thank you very much to Board of Directors for conferring this special award. I've heard several variations of this award. But what which attracted me was the Lifetime Achievements Award as the first note came to me. And certainly it's very special, very dear to me. This was followed by the felicitation of IOD Global Driver Excellence Award for Leadership, which was bestowed upon Mr. Virendra Sharma for leadership in the public sector and Mr. Sadaf Saeed for leadership in the microfinance sector. I think this is a very prestigious forum place in participating here regularly. IOD Institute of Directors taking the cause of governance and not only setting standards of governance in India but globally. It feels really proud to be given an award recognition at this forum. Day 2 of the convention continued with case study presentations by award-winning companies showcasing their success stories on sustainability, risk management, corporate governance, and ESG. Fostering transparency and accountability. Boards must ensure that the company's climate strategy and progress toward net zero are both visible, transparent, no stakeholders. Clear communication, reference reporting, and accountability are definitely essential. Corporates need to be careful about the problems of human society, problems of disparity, poverty, illiteracy in hand. Then the corporates need to look at not through only the CSR.
CSR is just a sufficient, a kind of bump on that. The day's proceedings also witnessed a healthy exchange of meaningful dialogue at the House of Commons, followed by the signing of MoU between the Institute of Directors India and the UK Asian Business Council. After 2 days, the setting of the convention shifted to the all-important House of Lords in the UK Parliament on day 3 for the Global Luncheon Business Meet. This exclusive gathering provided a distinguished platform for senior stakeholders from the India-UK business corridor to engage in meaningful discussions on key bilateral economic issues. Today, the transformation that India has been seeing, the growth is mainly on account of the boost that the government has, given to infrastructure developing that country. There were stalls of Indian companies such as Parle, Haldirams, and in food and in FMCG industries where there were long queues, and almost every single one of them was so thrilled to see the response they got, how they've been accepted now. We are an entrepreneurial family, but we need a board. The entrepreneur is a blindly mad person. So we need a board, and we require a board where, like a startup, you take a bet. But a board has to tone you down, look at the option, de-risk yourself, and that is the key issue. The House of Lords gathering also witnessed the felicitation of IOD Distinguished Fellowship 2024 to Mr. Mohit Burman, Chairman, Dabur India, and felicitation of IOD Global Driving Excellence Award for Leadership, which was bestowed upon Mr. Ramesh Arora for leadership in the hospitality sector. Thank you to the Institute of Directors for honoring me with the Distinguished Fellow of IOD 2024. Truly humbled and honored to receive this fellowship. It is by testament to the hard work and dedication of my entire team and the extended Dabur family, of which I'm the 5th generation. And I share this moment with all of them. Our aim is to bring to India first the holistic hospitality to replace the transactional hospitality. That is our aim. And the next aim is to bring Namaste Bharat to England and as well as to India. And that will be 2025. The venue of the last day of the convention was the Institute of Healthy Urban Living at the University of Westminster, where the delegates and participants congregated on a special session on board strategy on sustainable practices for healthy living and inclusive growth. Professor Brendan Noble accorded a warm welcome to the IOD India delegation. With the final session at the University of Westminster coming to an end, the Institute of Directors India completed yet another successful edition of the London Global Convention, which received widespread appreciation for its value addition, quality of deliberation, and the opportunities it provided to the stakeholders of corporate governance and sustainability. Here the message is, you change or they will get changed. उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
is the Prime Minister's speech. Let me summarize it for you because it might take time. We will then convert it into graphics and headlines. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Good evening and thank you for tuning in. You're watching Live and Breaking at 5. I'm Suesha Samth. We continue to get you the latest on Prime Minister's Kuwait visit. Not only has he been awarded the highest honor of Kuwait, but also